भी इंडिविजुअल का चाहिए था ये पता नहीं है, एटलीस्ट मेरे को, आपकी बात नहीं कर, मैं कैसे डिसाइड कर पाऊँ उसको? पेश कर देता हूँ। पर मत पेश कीजिए ना सर। मैं पेश कर देता हूँ, फिर या फिर स्टेट करो मेरे भाई, मत करो, वो तो मैं कह रहा हूँ 7 साल के बाद भी हमको अगर केस ही बढ़ाना है तो फिर क्या मतलब है? आपका कहना है यू आर द लैंडलेस पर्सन इज फाइंडिंग दिस इनकरेक्ट, तो इट वाज देयर रिक्वायरमेंट वाज दैट द सर्कुलर शुड हैव बीन प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड। चलो हम ही ढूंढ लेते हैं, जी। अब हम ही ढूंढते हैं, मिल जाएगा तो ठीक है। जी जी समझिए सर। My lord, as regards this affidavit is concerned, my lord, this affidavit annexer P7, जी सर। one thing is how it is forged, my lord. There is no identification of this thumb impression. Number one. Number two, my lord, the sub-divisional officer passed the order on 3/3/2005 और इनका जो एफिडेविट है ये है 18/11/2003 का। जी सर। ये एफिडेविट मिला नॉट फाइल्ड बिफोर दिस इवन द सब डिविजनल ऑफिसर। जी सर। Besides that, my lord, there is no some impression पर किसी के आइडेंटिफो नहीं है, आइडेंटिफाइड बाय मी कि ये एफिडेविट इनका है। और ये दो साल तक ये एफिडेविट पेश नहीं किया गया, जबकि पहले इनके पास अगर था तो एसडीओ के यहाँ पेश नहीं किया, नायब तहसीलदार के यहाँ पेश नहीं किया, जिसने with whom he joined the hands and who illegally granted the patta. Well, all the three courts, sub-divisional officer, additional commissioner, board of revenue, held that he is not a landless person. And my lord, delay was rightly condoned by the sub-divisional officer, additional commissioner, board of revenue. Against that order, they have come before this honorable court. One thing, my lord. Besides, my lord, he purposely not implemented the Naib Tehsildar as a party, sub-divisional officer as a party, they are not necessary. Additional commissioner as no, a party. No, they are not necessary party. They are not required to be implemented. They are the tribunals. They are the tribunals. They are the tribunals, sir. They are not required to be implemented unless and until any allegation of bias is made. Sub-divisional officer. Sir, he is exercising his quasi-judicial powers. He has not. Additional commissioner against. समझिए सर, I am not. At least आपको तो नहीं बताना जरूरत है कि वो quasi-judicial और administrative powers में difference क्या होता है. Anyway, my lord, in case not necessary to implement, that's right. Maybe, my lord, I don't dispute that. So, my lord, this affidavit is apparently false. Now, my lord, after getting the stay, they produced the stay order before the Tehsildar. My lord, in my annexer R1, along with my application for taking for vacating the stay, the Tehsildar stated, Sriman Millard R1, माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के पिटीशन नंबर 100 के प्रकरण 100 में आगामी पेशी स्थगन जारी किया गया है। अतः माननीय न्यायालय के पालन में भूमि खसरा नंबर 100 भूमि से भूमि का मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के निर्देश दिनांक 2/3/2 के परिपालन में ग्राम के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों आवेदक भगवान दास नाथुराम अहरवाल निवासी ग्राम छपरी नायब तहसीलदार लिधौरा के आदेश 30/12/2000 से पट्टाधारी घोषित किया गया। आवेदक भगवान दास को शासन से प्राप्त भूमि पर अनावेदक फसलवार अवैध कब्जा किए है, जो आज दिनांक तक भूमि का कब्जा प्रदान नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में मौके पर आगामी पेशी तक यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश है। अतः भूमि खसरा नंबर 100 पर अनावेदक कब्जा किए हुए हैं। उच्च न्यायालय जबलपुर में पिटीशन नंबर 100 यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया जाता है। He is not in possession of this land. Now, my lord, the respondent was in possession. Naib Tehsildar granted the patta
Patta was granted naib tehsildar without issuing any notice to the petition respondent who was in possession. Number one. Now, against that order, my lord, the respondent filed an appeal before the sub-divisional officer. The main question was raised that it is a barred by limitation. Sub-divisional officer considered her aspect and held that the delay is a bona fide one and it is hereby condoned. Against that order, my lord, they filed an appeal before the additional commissioner. Additional commissioner also held that, my lord, the petition is not a. My lord, all the courts held that the petitioner is not a landless person. He has the land so and so and so and so. And all the three courts, my lord, sustained the order so far as the satisfied the order, sustained the order of SDO, sustained the order of additional commissioner, sustained the order of Board of Revenue, and my lord revert back the case to the Naib Tehsildar to inquire and properly, and then to proceed further. Yes, sir. It was, of course, the patta was cancelled, and the Naib Tehsildar was directed to proceed further, to look at the, by giving the opportunity to all concerned. Sir. Let me tell you, my lord, I am in position. The finding of all the courts is not a landless person, or is not entitled for the patta. Besides, my lord, there is an opportunity to him again. जी जी पाराशर जी I accept the mention. ठीक Correct. Proceeding as per the law. ठीक है चल ठीक है. In reply, my submission is that they are challenging the authenticity of affidavit. That is a certified copy which I have filed. Second, my lord, they are saying that, my lord, he is a landless person. No document indicating entry of my name in revenue record is filed. They have condoned the delay, my lord. No sufficient cause which was beyond their control to file the appeal within period of limitation is disclosed in the order. And as far as their possession is concerned, my lord, after the order of SDO, they forcibly took the possession. That is. कहाँ है ये प्लीडिंग आपकी जो बात कर रहे हैं आप? कहीं forcibly take on the position. From the very beginning, I was in position. This is the finding of all the three courts. Affidavit में आप deny कर रहे हैं. और फिर ये एफिडेविट जो आपने कहीं भी पेश नहीं किया, हाई कोर्ट में पेश कर दिया विदाउट आइडेंटिफाइड. कहीं किसी भी कोर्ट में पेश नहीं है एफिडेविट. सर दिस इज ए बोगस एफिडेविट, फॉल्स, विदाउट बीइंग आइडेंटिफाइड बाय एनीबॉडी. ऐसा आपका कुछ पैटर्न नहीं. श्रीवास्तव जी टर्म में लिखा है, अपने जवाब में लिखा है हमने. कोई बात नहीं. श्रीवास्तव जी जी ये जो एफिडेविट्स हैं इसमें अंगूठे लगे हुए हैं. जी अंगूठा लगा है, बस लगवा दिया. बड़ा सरल अंगूठा लगाना. तो वो इनकी प्रोसीडिंग में एडमिट हुआ है. why not filed before the SDO, before the additional commissioner, before the Board of Revenue, first time before the High Court? That does not mean that it is not genuine. यार मुझे तो कोई बोलने दे ही नहीं रहा है ना, आपस में लड़े चले जा रहे हो हैं. ये कहाँ स्टेटमेंट है या कहाँ एंडोर्समेंट है बाय द ओथ कमिश्नर और द नोटरी दैट द कंटेंट्स वर रेड आउट टू द डेपोनेंट्स. इसके बैक साइड पे है, देखिए. हाँ बस मतलब पढ़ के बताओ ना. जी इनके सबके जो है पीछे शिनाख्ती. भाई साहब वो शिनाख्ती छोड़िए, आप ये बताइए कि हमने पढ़ के बताया और इन्होंने सही होना स्वीकार किया, ये कहाँ है सर? इसके पीछे पेज पे है. अरे पढ़ के बताओ ना. सुखराम भाई इतना 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 ये वास्ते से पढ़ता है. जी इसके बाद से सब केस पे भी अंगूठा निशानी है. जी जी आइडेंटिफाइड बाय मी रविंद्र खरे एडवोकेट. पढ़ के बताया सही है. ये तो वेरिफिकेशन में इन्होंने लिखा है, मैं सुखराम तनय स्वयं. हाँ हाँ उसको तो पढ़ना ही नहीं आता तो वेरिफिकेशन क्या पढ़ लेगा वो. यही इस पेज पे वेरिफिकेशन इन्हीं का, पीछे आइडेंटिफिकेशन एडवोकेट. चलो ठीक है सर. जी
नोटरी के सामने ही पहचाना। जी सर। सर नोटरी के पावर्स क्या होते हैं सर? कैन वेरीफाई द एफिडेविट्स। वो कौन से पावर एक्सरसाइज करता है सर? श्रीवास्तव जी, जिस नोटरी किसके पावर्स एक्सरसाइज का? ये जो स्टेटमेंट होता है एफिडेविट का, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस स्टेटमेंट सर? अब इन्होंने उस प्रोसीडिंग में जब व्हेन इट वाज इज इनिशिएटेड, इट अ स्टेटमेंट ऑन ओथ और इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट? कुछ भी फाइल कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑन ओथ है। ओथ। देन नोटरी कौन से पावर एक्सरसाइज कर रहा होता है? मैजिस्ट्रियल पावर्स और सिंपल एंड एडवोकेट? मिनिस्ट्रियल पावर, मिनिस्ट्रियल पावर्स? बिकॉज ही इज नॉट एक्टिंग लाइक एन एडवोकेट। आइडेंटिफिकेशन इज ऑफ जो आइडेंटिफिकेशन of एडवोकेट कर रहा है इस पर, जी। एंड बाय स्टैट्यूट ही इज ऑथराइज्ड टू वेरीफाई द एफिडेविट्स। मैजिस्ट्रियल पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है ना, नॉट मिनिस्ट्रियल पावर्स। तो इज ही नॉट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई? ये तो इसी तरह से बन रहा है जितने ये एफिडेविट। सब जैसे एफिडेविट होते हैं उसको मत बात करेंगे अपन। जब when you talk about the affidavit in the court, then forget about the manner in which the affidavits are being done by the clerks. और ये और मुझे यहाँ पता है सर कौन कौन कहाँ पे नोटरी बैठता है और एफिडेविट कहाँ पे साइन होते हैं। एंड इट इज एक्टेड अपॉन। Forget about that. Once we are relying upon an affidavit, just point it out that it was validly executed. इस रिस्पांस में हमारे ये सबमिशन लॉर्डशिप की इस पर इनके थंब मार्क हैं, एडवोकेट ने पहचाना। प्लीज बस इतना ही हमारा सब। सर प्लीज। जी। अच्छा इतना ही समझो, फिर ठीक है सर। फिर और उसके आगे क्या बोल सकते हैं इस बाकी ये लिखा ही नहीं, पढ़ के सुनाया नहीं। दैट इज द रिक्वायरमेंट। चल मैं देख लेता हूँ। फाइल दो ना यार, मैं शक्ल क्यों देख रहे हो? जी सर। My lord, the present petitioner was initially appointed on 23/9/2003, my lord, on the post of the pure before the respondent college, my lord. And in year 2012, my lord, he was discontinued by the college, my lord. Thereafter, a mediation has been done by the labor officer Katti, my lord, 12/3/2013, my lord. Thereafter, the present petitioner, my lord, removed on the said post by the respondent college in year 2014, my lord. He referred the application, my lord, and as per the reference, the impugned order is passed by the labor court, Jabalpur, by the impugned order, my lord. That is the exact P code. So your claim has been rejected. Rejected. So there is a specific finding that you have failed to prove that you had worked for 240 days in a calendar year. My lord, that is. So what is wrong in that finding, sir? That is the only question. My lord, kindly appreciate the record of the Learned Tribunal, my lord, जी। as an exact P1, my lord. जी सर। Petitioner was engaged in an election duty in year 2000. जस्ट मिनट, आपके डॉक्यूमेंट्स फाइल हुए होंगे ना वहाँ पे, कुछ से क्या था क्या? नहीं, वो रिकॉर्ड में रिकॉर्ड मेरे पास है ना मेरे भाई। टू 40 डेज की फाइंडिंग्स चाहिए ना? जी।
मेरी प्लेडिंग ये है मैडम, इसमें इनको व्यक्ति के तौर पर दिखा जो मुन्ना लाल वासुदेव फर्स्ट में एक्यूट P1 है, जिला निर्वाचन अधिकारी कटनी। ये P1 एक्यूट P1 जो है वो प्रवेश पत्र है। P2 में पिटिशनर का नाम जो है ना जी सर। और जो सेटलमेंट हुआ था 2013 में, उसके बाद से कंटिन्यूअसली 14 तक वर्क किया। एक सेकंड। जी। इसमें जो एग्जिबिट P16 है, हम्म पेज नंबर 32, हम्म इसमें उद्योग विभाग क्रमांक 17/2012 पर विवाद आपसी समझौते के आधार पर कार्य करने में रखने वाला ये प्राचार्य का लेटर है। मैंने कार्यालय उपरोक्त विषयांतर्गत आपको सूचित किया जाता है हुआ पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर पुनः पूर्वानुसार अंशकालिक श्रमिक पर कार्य कर रखा जाता है। कार्य दिवसों का कलेक्टर कंपनी द्वारा निर्धारित वेतन मासिक की दर पर कार्य दिवसों का भुगतान किया जाएगा। कार्य पर उपस्थित होने की सूचना कार्यालय में देकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। 33 में जो है ये शिकायत के परिप्रेक्ष्य में पत्र अवैध, उसके बाद से पेज नंबर 34 में 12/3/2013 का ये श्रम पदाधिकारी जिला कटनी का। जी सर। इनकी ज्वाइनिंग 22/3/2013 से है मैलट। जो टर्मिनेशन डेट है मैलट वो 2014। जी सर। जी सर। इसमें जो स्टेटमेंट हुआ है हमारे प्रिंसिपल के जी। एग्जिबिट D2, ये प्राचार्य का जो मेरिट था मैडम, जी प्लीज। पैरा नंबर 4 में परीक्षण में मैं शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय कटनी में प्राचार्य के पद पर दिसंबर 2005 से अप्रैल 2013 तक पदस्थ रही। इसके पूर्व में अन्य कॉलेज में सेवारत। यह बात सही है कि प्राचार्य को स्कूल में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की जानकारी रहती है। हमारे विद्यालय में दैनिक वेतन भोगियों का प्रोविडेंट फंड नहीं कटता। शासन द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड कटता है। यह कहना गलत है कि चाहे दैनिक वेतन भोगी हो, चाहे जन भागीदारी समिति के माध्यम से किसी कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो, और चाहे शासन द्वारा किसी कर्मचारी की अस्थायी नियुक्ति की गई हो, उन सभी का प्रोविडेंट फंड कटता है। हमारे स्कूल में कर्मचारियों का ESI भी नहीं कटता था। मैं आज नहीं बता सकती कि महाविद्यालय में कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी पदस्थ है। स्वतः कहा कि आवश्यकता अनुसार कर्मचारी पदस्थ होते हैं
महाविद्यालय में मेरे कार्यकाल के दौरान 40-45 शिक्षक थे। हमारे महाविद्यालय में बसें नहीं चलती। मुझे यह जानकारी नहीं कि आवेदक की प्रथम नियुक्ति चपरासी के पद पर दिनांक 23/9/2003 को हुई थी। साक्षी ने स्वतः कहा कि उपरोक्त नियुक्ति जन भागीदारी समिति के माध्यम से हुई थी। आवेदक को भी 89 दिन के लिए नौकरी पर रखा जाकर 3 दिन का ब्रेक देकर आगे पदस्थ किया जाता था। पैरा नंबर 7 में माय लॉर्ड, मुझे जानकारी है कि आवेदक की सेवाएं समाप्त की गई थी। मुझे जानकारी है कि आवेदक ने श्रम कार्यालय कट्टी में सेवा समाप्ति के संबंध में प्रकरण लगाया था। यह बात सही है कि श्रम कार्यालय में 17/4/13 को समझौता हुआ था। यह बात भी सही है कि समझौते के आधार पर आवेदक को पुनः 17/4/13 से ड्यूटी पर वापस लिया गया। साक्षी ने स्वतः का श्रम अधिकारी द्वारा कहा गया था आपको आवेदक की आवश्यकता है। मानवीय आधार पर आवेदक को सेवा में रख लिया था। मुझे जानकारी नहीं कि आवेदक दिनांक 17/4/2013 से 1/6/2014 तक महाविद्यालय में लगातार काम किया या नहीं। तो ये इसकी ड्यूटी जो है माय लॉर्ड वो 17/4/2013 से 1/6/2014। जी 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 सर। दैट्स ऑल। जी 13 and 14 of the for rejecting the application of the petitioner was that in his cross-examination, he had admitted that he was not in regular service. If I may para 14, जी सर। प्रकरण में आवेदक पक्ष के पीठासीन अधिकारी शरणालय के निर्णय प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके संबंध में किसी पक्ष नहीं की। उपरोक्त प्रकरण में एक कार्य स्थिति है कि न्यायालय समक्ष नहीं है। प्रकरण में आवेदक के स्वयं के औद्योगिक विधिक प्रावधानों के उल्लंघन के स्वयं को अनावेदक संस्थान द्वारा सेवा में प्रस्तुत किया गया। आवेदक द्वारा संपूर्ण आवेदन उसके साक्ष्य पठन विधिक प्रावधान के संबंध में ले किया, लेकिन आवेदक स्वयं अपने साक्ष्य में यह स्वीकार कर चुका है कि अनावेदक संस्थान द्वारा जितने दिन तक सेवा में रखा जाता था उतने दिन कार का भुगतान उससे किया जाता था। अनिदा ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे शैक्षणिक सत्र के लिए कार पर रखा जाता है। इसकी स्थिति में 25F के अंतर्गत कैलेंडर वर्ष में 240 दिन ये अधिक कार्य किया हो, यह आवेदक प्रमाण करने में असफल है। But he himself has said that he was never in regular, जितने दिन रहता था उतने दिन काम करता था, and he has admitted that. On that basis, that finding has come that he is not, there is no 240 days in a calendar. मेरा सिर्फ इतना निवेदन है माय लॉर्ड कि जो निर्वाचन एग्जिबिट P1 से लेकर के P5 तक का जो डॉक्यूमेंट वो जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के हैं माय लॉर्ड। दैट लिस्ट इज फॉरवर्डेड बाय द कॉलेज टू द रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन माय लॉर्ड। वहाँ मेरा नाम जो है वो भृत्य के तौर पर लिखा हुआ, रेगुलर ड्यूटी लगी है। यार रेगुलर इरेगुलर की बात क्यों उठ रही है, मुझे नहीं समझ रहा। 240 दिन तो ये इनका आप तो 240 दिन की बात बताओ ना। नहीं, उसमें माय लॉर्ड आया ना 2013 में जो समझौता हुआ ट्रिब्यूनल में, उसके बाद से कंटिन्यूअसली जो है वो जून 14 तक काम करते थे। तेरह से जो कॉम्प्रोमाइज हुआ जी वो एडमिटेड है जिस पर वो कॉम्प्रोमाइज वो कहाँ पे है उसका डॉक्यूमेंट नेक्स्ट ये रिकॉर्ड चलो देखते हैं। कोई पढ़ा के अपना तो इसके बारे में लिखा है कि दैट कैन इजीली रिव्यू की दिन की पेमेंट होगी। ये एग्जीबिट P60 है माय लॉर्ड, पेज नंबर 32 में जो इसमें स्कैन
सर अगर किसी को किसी सीनियर ऑफिसर के प्रेशर में रखा जाता है तो कॉम्प्रोमाइज तो लेबर ऑफिसर ने दम दे के दिया है, ऐसा लग रहा है। वर्किंग वर्डिंग्स तो ये है निर्देशानुसार। जी वो है मैं। और कार्यालय श्रम अधिकारी कटनी का 12/3/2013 का आदेश। शब्द देखता हूँ उसमें एक चीज जैसे हम्म, पीरियड की बात जो कर रहे थे इनने जो पढ़ा था वो एक्स प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट पढ़ा था उसमें हमने आखिरी की 4 लाइन नहीं पढ़ी, उसमें हमने इसके इस पीरियड के बारे में भी कहा। ये अगर वो वाउचर पेश करते उसी समझ में आ जाता कि इनको कितने दिन की उसमें से पेमेंट होगी, बिकॉज ये हैज एडमिटेड कि उनको जितने दिन चाह रहे थे उस दिन की वाउचर से पेमेंट हो जाता। तो वाली उन्होंने वो डेमोन्स्ट्रेट ही नहीं किया कि उसको 13 से 14 के बीच में भी उन्होंने कितने दिन की काम करते थे, इसलिए कोर्ट हैज गॉन बाय हिज स्टेटमेंट दैट ही हिमसेल्फ इज अच्छा Period number 35. Shri Sanjay Kumar. I prefer Passover last one. और इसमें रिप्लाई अवेटेड है, नोटिस हुआ तो बहुत पहले विवेक डिमार्केशन का केस है, प्राइवेट लोगों के बीच का झगड़ा है, इसमें स्टेट क्या रिप्लाई करेगी? इसमें एक्चुअल में डिमार्केशन तो हो चुका था, अप टू हेल्ड हो गया था बोर्ड ऑफ फाइन फाइन हो तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का रिप्लाई क्या करेगा? वो इन्होंने पूरा इग्नोर करके माइलॉर्ड जो मिसलीड भाई साहब तो क्या ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज हैं, ये कहाँ इनको कहाँ जवाब देने की जरूरत है? माइलॉर्ड जैसे उसके पर उसमें देयर इज द माइलॉर्ड की देयर द फाइंडिंग है रिपोर्टेड चलो पहले सुनते हैं, उसके बाद देखते हैं, जरूरत होगी तो सुन लेंगे दे लेंगे। पास ओवर की जगह माइलॉर्ड अगर संभव हो तो कल के लिए डे आफ्टर टुमारो कर दे माइलॉर्ड। ठीक है 29906/2018 श्री संजीव कुमार सिंह काउंसिल फॉर पिटिशनर श्री सो फॉर। सर आप किसके लिए हैं? Respondent number 10 to 12. 10 to 12. The counsel for the respondents 10 to 12 had prayed for Passover, but it is submitted by Shri Singh that because that it will be difficult for him to appear at the Passover round, and prays that either the case may be heard just now or it may be taken up day after tomorrow. Looking to the practical difficulties of counsel for the parties, the case is adjourned. List on day after tomorrow. I'm with you. Number 36. I'm sorry, I am Interim delay shall continue till next date of listing. Such Sanjana sign. Passover. प्रभाकर जी पासओवर करते हैं। क्लास की तरफ से है। हाँ। So इसको next week. None for the petitioner, Shri Prabhakar Singh for the respondent, as none appears for the petitioner. The case is adjourned, listed in the next week. Number 37. Shri Manoj Kumar Rajat. When the reply was filed? 6/9/2019, the counsel for petitioner press warrant is granted 2 weeks time to file rejoinder to the return filed by respondent number 5. List after 2 weeks. Number 38. Shri Vinay Kumar Kapoor. Lordship, this is the second round litigation before this on the court. The respondent number 2 and 3 is not given the So scholarship का वो कौन सी स्कीम क्या है सर? inspired award scholarship scholarships. Inspired award scholarship scholarships. वो कहाँ पे है सर? सर जो रिफंड करता है स्टेट लॉर्डशिप तो देता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमने इन एग्जाम्पल आई हैव सबमिटेड द फॉर्म लॉर्डशिप्स। At that time, I have submitted the form lordships. I have obtained the number lordship 451, 90.2% lordship. After that, meanwhile, I have
retotaling losses, enhance the number losses, in place 90.2 less 90.6 losses. And losses, given the representation after that losses, I have filed the writ petition. Writ petition has given the directions losses, and after the directions losses, they communicated the central losses to the petitioner. And after the compliance losses, I have sent all these required documents losses and except P7 losses at page 25. जी After that, Annex P8 26 losses communicated to the authority losses, and so many complaints after that losses not given the scholarships losses. सर वो स्कॉलरशिप का वो जो स्कीम गाइडलाइंस वो क्या है पता तो चले किसी के पास है क्या रिस्पोंडेंट्स के पास है क्या है एंटाइटल एलिजिबिलिटी क्या है Dossier has been placed on recording counter affidavit. It's a page. And R1 loss mechanism. Page 3 पे दिया लॉट्स विलेज सिलेक्शन पार्ट क्राइटेरिया लॉट्स रिटन बाय हूं यूनियन ऑफ इंडिया Yes, loss. दिखाओ भाई So it is top 1% for each state or central government. Yes, sir. So number of marks is irrelevant. Top 1% of the students will get the Exactly. right. 5 has been elaborated also. What is the procedures to be adopted by the court? Based on the recommendation given by the state. So it also participated in this case, the petitioner hearing secured only 90.2 marks. Whereas the that marks has been repositioned by the MP Education Board, that is 90.4. She could not get the requisite qualifying marks also because it was 90.4. And what petitioner had also that was less than the requisite. No, what he says is that after retotaling that 490 or 451 marks were enhanced to 453. Actual aspect he is not disputing. His contention is that after retotaling his marks were enhanced and then she came within that criteria area. So वो revised mark sheet कौन सी है सर आपकी? revised mark sheet losses. BS losses. Page P Please, not 20. पेज 20 पे पेज 16 के ऊपर वो पहली मार्कशीट है 20 पे रिवाइज्ड है विक्रम जी And humble to report this question after the return, the cutoff mark of MP lordship 86.4 lordships, and it is reply lordships also. और विक्रम जी Yes, आप अपने रिप्लाई के पेज नंबर 12 पे आए page number also. 12 the cutoff marks for 2013 Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is 76.4.
जी विक्रम जी. Yes, sir. Yes, it is there, 86.3. May I please take up this matter next week, no, so I will see. क्यों सर, आप ही का तो बनाया हुआ जवाब है. Like it is there, no, sir, but at the same time, what I do replied in the counter that the reposition mark was 90.4%. And what Richa Gandhi mentioned in the reply, it said that since this present petitioner secured less marks than the prescribed marks of 90.4. So after seek instruction, what Philosopher has been saying is right. Yes, in the table 1, for Madhya Pradesh, 86.4 marks has been prescribed. चलो वो भी छोड़िए अभी. That is not a very big issue. Yes. इनका कहना था कि earlier she got 90.2% marks and after her revaluation her marks went to 90.6. And the last student who has got the scholarship had scored 90.4. Yes. बस. That subsequent mark sheet has been produced before the authority, so that is not in compliance of because the direction basis in this annex P7 lots. also can I appreciate 25 lots, is number 25 lots. After the communication, I have sent that and annex P8, the letter which has been, I have sent that. ये हमने जो कंप्लेंट्स एक्शन में है तो आपने बोला था कि उनको फिर से भेजा, हमने भेज दिया उसको. substitute for the answers. वो तो हमने बेच रख लिया 4%. नहीं सेम इशू हैज नॉट बीन असेन. आफ्टर दैट वो पार्टी मेंशन नहीं की थी. I have annexed. So who is for the other respondents? Worship, I'm appearing on behalf of the arguing council respondent number 2, my lord, the Board of Secondary Education. Okay, what is your stand, sir? Worship, our submission is that my lord, we are a formal party and we will abide by the entire action is to be taken. Achha. Now who has to take the decision, sir? It has to take this decision. Union. तो हम यूनियन को सर डायरेक्शन दे देते हैं to reconsider her case in the light of the revised mark sheet, as well as and then find out whether any student who had scored less marks than the petitioner, if he or she was granted scholarship, and then they extend the benefit. Should be considered in the light of Yeah. for consideration also. Of course. 8223/2019. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. It is submitted by counsel for petitioner that earlier the petitioner had scored 451 marks in higher secondary school certificate examination, which were 90.2%. Thereafter, an application for retotaling was filed and the marks were enhanced from 451 to 453 and her percentage came to 90.6%. The student who had scored less marks, that is 90.4% marks, was paid scholarship by the Union of India as per the provisions of Inspire-Sheet scholarship for higher education bracket में she bracket close a component of innovation in science pursued for inspired research bracket में inspire. Even after the revised mark sheet was issued to the petitioner and she had scored more marks than
the student who got this scholarship from us, still nothing has been done. Per contra, the petition is vehemently opposed by the Council for the Union of India. It is submitted that, according to the petitioner, the minimum marks that 1% of the total student are granted scholarship. The last student, even according to the petitioner, the last student who had got scholarship had scored 90.4%, but according to the petitioner, she had scored 90.2%, therefore she was not eligible. However, the Council for the Union of India could not point out the relevance of the cutoff marks of class 12th for 2013, according to which in Madhya Pradesh the cutoff marks was 86.4%. Heard the learned counsel for the parties. The controversy involved in the present case is as to whether the petitioner, after her revaluation, became entitled for grant of scholarship or not. It appears that the Union of India had taken the initial marks of the petitioner into consideration to hold that she was not amongst 1% of the top. She was not amongst the students, 1% of students who had top 1% of the students. However, this fact has not been disputed that the last student who had got scholarship had scored 90.4%. It is the case of the petitioner that after her retotaling, her marks were enhanced to 90.6%, that is 453 uplift 600. The revised mark sheet has also been placed on record. Thus, it is clear that the respondent should have reconsidered the case of the petitioner in the light of the revised mark sheet. Under these circumstances, this court is of considered opinion that the petition deserves to be allowed, and accordingly it is allowed with the following directions. The respondent number one has already received the copy of the writ petition, which contains the original as well as revised mark sheet of the petition. The original mark sheet of the petitioner is at page 16 of the writ petition, whereas the revised mark sheet of the petitioner is at page 20 of the writ petition. Accordingly, the respondent number one is directed to decide to reconsider the case of the petitioner in the light of the revised mark sheet. And if it is found that in the light of revised mark sheet, the petitioner would fall within the category of 1% of the students who had secured the top position from then the scholarship as per scholarship for higher education bracket में she dash a component of innovation in science pursuit or inspired research bracket में inspire shall be released, or otherwise, or if the respondent number one comes to a conclusion that the petitioner is not entitled for the scholarship even after her revised mark sheet is taken into consideration, then they shall communicate the reasons. Solicitor. Let the entire exercise be completed within a period of 1 month from today. The petitioner is not required to make any further representation in this regard. Needless to mention that this court has not considered the merits or demerits of the claim of the petitioner, and the entitlement of the petitioner shall be decided strictly in accordance with law without getting influence or prejudice by this order. Serial number 39. Sri VK Tiwari. Ji, sir. Lordship,
by way of filing this petition, petitioner has challenged the authority of respondent number 2 who published a publication notice for allotment of lease of Patpara Dam, which has already been granted by the Janpad Panchayat on lease to the petitioner society. May kindly please. सबसे पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है वो बताइए। जनपद पंचायत। अच्छा, और आपको किसने दिया था? जनपद पंचायत ने। पटपड़ा डैम आपको जनपद पंचायत ने दिया था, और आप किसने इशू कर दिया? ये अभी इशू नहीं हुआ है, ये इन्होंने फ्रेश प्रोसेस शुरू कर दिया जिला मत्स्य पालन विभाग ने। अच्छी बात है। लॉर्डशिप ये देखेंगे अनेक्सर P5 एट पेज नंबर 23 जी। जनपद पंचायत ने निविदा पेपर में पब्लिश की। इसके परसुएंट में हमने एप्लीकेशन लगाया पीछे के कंप्लायंस में 27 में 19 को जनपद पंचायत पास ए रेजोल्यूशन नंबर 8 देयर बाई द पिटिशनर सोसाइटी हैज बीन अलाउड टू ग्रांट द लीज ऑफ पटपरा डैम। This resolution has been forwarded by the Janpad Panchayat to the Matsya Palan Vibhag for approval. Right, sir. Kindly please to see annexure P8. जी इस अंतर्गत के संबंध में लेके इस कार्यालय देख लिया मैंने। इसके बाद लॉर्डशिप P9 से जिला मत्स्य पालन विभाग ने प्रेस अलॉटमेंट कर दिया पब्लिकेशन। जी। इन्होंने भी एप्लीकेशन इनवाइट कर ली। जी। इस प्रोसेस को मैंने चैलेंज किया। अच्छा, अब आप ये बताइए जी, जब आपके जनपद पंचायत का प्रस्ताव तो सिर्फ प्रस्ताव ही था, उसका अप्रूवल नहीं था। नहीं, अप्रूवल के लिए भेजा हमने सर। जब अप्रूवल नहीं हुआ जी, तो नया एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं इशू हो सकता? नहीं, इस प्रस्ताव के संबंध में तो कुछ कह नहीं रहे कि प्रस्ताव अप्रूवल किया उन्होंने कि नहीं किया। उन्होंने उनको तो अप्रूवल करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये हम तो नहीं बोल सकते इसमें। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा ना कि इनको प्रस्ताव जो है अस्वीकार किया जाता है और प्रस्ताव कैंसिल होना चाहिए। अच्छी बात है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये जनपद पंचायत को प्रस्ताव बुलाने का अधिकार है, बस इतना बता दीजिए। सर ये पॉलिसी देखेंगे, तीसरी पॉलिसी बताइए। सर ये पेज नंबर 31 पे है। पेज नंबर 31 एनेक्शर P12। इसमें ये 10 हेक्टेयर औसत जल क्षेत्र के तालाबों को पट्टे शासन नीति निर्देश प्राथमिक एवं निर्धारित अवधि के लिए हितग्राहियों को पट्टे पर दिलाए जाने। सभी स्तर के पंचायतें ग्रामीण तालाब 10 वर्ष की अवधि के लिए तथा सिंचाई जलाशय 10 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देंगी, जिसका अनुमोदन नियमानुसार। तो ये किसका स्वामित्व होगा सर? ये पंचायतों के स्वामित्व के अधीन तालाबों का रखरखाव संबंधी पंचायतों द्वारा किया जाएगा। ये इसके ऊपर देखेंगे लॉर्डशिप 1.2 में देखेंगे किस को दिया जाएगा। 10 हेक्टेयर तक औसत तालाब क्षेत्रफल ग्राम पंचायत देगी। 10 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर तक के जनपद पंचायत को पावर दिया हुआ, और 100 हेक्टेयर से 1000 हेक्टेयर तक के जल क्षेत्र जिला पंचायत को है। अच्छी बात है। तो ये 16 कुछ हेक्टेयर का है, इसलिए जनपद पंचायत के अधीन। जी, आपका क्या कहना है सर स्टेट का? व्हाट अबाउट देयर प्रपोजल? सर ये 1 पॉलिसी 1.2 में लिखा है, तालाब जलाशय प्रबंधन के अधिकार पंचायत एवं मत्स्य महासंघ के अधिकार का प्रबंधन निम्नानुसार होगा। ये जो तालाब जो इनको लॉट से प्रबंधन का अधिकार है, पट्टा अलॉटमेंट का अधिकार नहीं है। पट्टा अलॉटमेंट का अधिकार रेस्पोंडेंट नंबर 5 को ही है और हमारी रिप्लाई। और ये इसके नीचे लास्ट में त्रिस्तरीय पंचायतों के तालाब जलाशय प्रबंधन के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए केवल मत्स्य पालन के पट्टा आवंटन की प्रक्रिया तकनीकी प्रक्रिया के अधिकार मत्स्य पालन विभाग के पास ही रहे। पट्टा अलॉटमेंट करने का अधिकार मत्स्य पालन विभाग को ही है। ये पंचायत से रेजोल्यूशन जाएगा, रेजोल्यूशन अगर वो सही पाया जाता है तो रेजोल्यूशन पे वो ऑर्डर पास करेंगे, अदरवाइज उनको खुद बात है। आपने क्या किया इनके रेजोल्यूशन का? लॉर्ड साहब हमने रिजेक्ट कर दिया और रेस्पोंडेंट नंबर 6 को अलॉट किया है। वो कहाँ पे आपके रिप्लाई में?
आपका रिजेक्शन ऑर्डर कौन सा है? हम्म, छः नौ 2016 का order। अरे रिप्लाई की R3 जो डायरेक्शन आपके रिप्लाई के R3 में क्या लिखा है? that further the resolution dated 27/9/2019 passed by respondent number 3 Janpat Panchayat is also without jurisdiction, as the same has to be passed by a standing committee constituted under section 47 of the act and not the general body. सर ये तो R3 में है सर। ये हमारे पैराग्राफ 7 रिप्लाई में आया है कि 6/9/2016 को हमने रिजेक्ट किया है क्लेम ऑफ द पिटिशनर। फिर इसके बाद उस रिजेक्शन ऑर्डर के खिलाफ इन्होंने एक WP फाइल की थी, WP नंबर 198889/2016 which is still pending before the 19889/2016 which is still pending before this honorable court also. By the resolution dated 5/8/2010, again the Janpat Panchayat Kundam has passed the resolution granting lease to the petitioner for the dam for period of 10 years, which is to expire on 3/06/2016. अच्छा, उसका 19889 किस साल का था? 16 198889/2016. यार इसकी फाइल बुलवाओ 19889/16 की। Actually, Lordship, that petition has become infractious because that was for the period of 2010. The period is expiring 19. That's Salka. That the petition has become infractious. Now the further process has been आपका started. तो रिजेक्ट हो गया ना, ये भी तो आपका रिजेक्ट है, आपने इसको तो चैलेंज किया ही नहीं R3 को। Lordship, R3 देखा आपने ना? Lordship, that has been challenged by filing an application under section 617. कब फाइल किया है? Lordship, this is a file on 25/4/23. With permission of this honorable court. ये भी अलाउ हुई कि नहीं हुई है? No, CEO Jila Panchayat has made party and the order annexer
इसके बाद तो इन्होंने दूसरों को अलॉट भी कर दिया। नहीं, अभी अलॉट नहीं हुआ, अभी अलॉट नहीं हुआ। इसमें लॉर्डशिप क्योंकि स्टे है, एक और नेक्स्ट रेजोल्यूशन पास हुआ, प्रोसीडिंग्स आर स्टे है। फिर उसके बाद that resolution was expired after completion of 10 years, that is 30/6/2019. That lease was also expired also. 19 पे सब एक्सपायर होने के बाद फ्रेश प्रोसेस स्टार्ट हुआ है फर्दर 10 साल के लिए। Thereafter, Lordship, 617 का एप्लीकेशन with permission of this honorable court invited and a new NIT was आप कह रहे हैं वो, अब आप आ जाइए ना सर इसके ऊपर। इनका जो रिटर्न है, जो नीति है, आप 1.2 पे बता रहे थे ना हमको सर। वन 1.3 स्तरीय पंचायतों के तालाब जलाशय प्रबंधन के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए केवल मत्स्य पालन के पट्टा आवंटन की प्रक्रिया, तकनीकी प्रक्रिया के अधिकार मत्स्य पालन विभाग के पास रहेंगे। इससे कैसे बचोगे आप? पेज नंबर 10 ऑफ दियर रिटर्न। और आपने भी यही पढ़ा मेरे को, आपकी जो नीति है मेंटेनेंस का है आप लोगों के पास, फिशरीज। अरे नो, अलॉटमेंट के पावर्स पंचायतों के पास। सब प्लीज, मैं अब कुछ पढ़ के बता रहा हूँ आपको। ये सीधा इतनी तेजी से नो लिखोगे तो मेरा ऑर्डर तो यस में आने वाला है। You will be at the receiving end. I am not agreed by your no. If I am giving you an opportunity, please avail that opportunity. You had referred to 1.2 ना? 1.2। हाँ, बताइए क्या 1.2 में? 1.2 का नंबर 2 देखेंगे। भाई साहब 2 तो ठीक है, 5 के बाद का नहीं पढ़ेंगे? हाँ, 5 के बाद का पढ़ के बता दीजिए। त्रिस्तरीय पंचायतों के तालाब जलाशय प्रबंधन के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए केवल मत्स्य पालन के पट्टा आवंटन की प्रक्रिया, तकनीकी प्रक्रिया के अधिकार मत्स्य पालन विभाग के पास होंगे। आप कैसे कह रहे हो कि फिशरीज डिपार्टमेंट को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है? अलॉटमेंट का नहीं है लॉर्डशिप, इनको अप्रूवल के लिए पावर दिया हुआ है। मिस्टर आप ये बताइए, आवंटन की प्रक्रिया, तकनीकी प्रक्रिया के अधिकार फिशरीज डिपार्टमेंट को नहीं है, आपका कहना है? मेरा सबमिशन ये है लॉर्डशिप। तो सर फिर हम रिकवरी को भी ऑर्डर निकाल देंगे आपके खिलाफ। हमारे पास तो कुछ है नहीं। आपने स्टे लिया हुआ है? नहीं, हमारे पास नहीं है अभी, सिर्फ प्रोसीडिंग स्टे। आपने स्टे लेके तो फिशरीज कौन कर रहा है? नहीं, अभी तो कोई नहीं कर रहा लॉर्डशिप, प्रोसीडिंग स्टे है। ठीक है, तो कॉस्ट भी तो लगी सकती है। वो मछलियों की चोरी हुई होगी, पक्की बात है। आप ये बताइए, त्रिस्तरीय पंचायतों के अब आप प्रबंधन में जबरदस्ती अलॉटमेंट फॉर फिशरीज राइट की बात लेके आ रहे हो, और जो अलॉटमेंट ऑफ फिशरीज राइट है आप कहते हो वो तो नो है। सर ये आगे इसमें पेज नंबर 11 पे देखेंगे। हाँ बताएं ना। ग्रामीण तालाब सिंचाई जलाशय में मत्स्य पालन के साथ साथ सिंगाड़ा, कमलगट्टा कृषि जल कृषि के लिए पट्टा प्रदान करने हेतु मछली पालन विभाग प्रक्रिया पूरी करेगा। इस प्रक्रिया में पट्टे पर आवंटित किए जाने वाले ग्रामीण तालाब सिंचाई जलाशय 1000 तक के लिए विज्ञप्ति जारी करवाएंगे। तो 1000 हेक्टेयर तक के तालाब उनके लिए कृषि पंचायत निर्णय के पूर्व मत्स्योद्योग विभाग से प्राथमिकता क्रम के अनुसार अनुशंसा प्रकार करना अनिवार्य होगा। अनुशंसा लेनी होगी इनसे। तो लेनी होगी ना, आप उनको कैसे कह रहे हो कि मत्स्य विभाग से कुछ लेना देना नहीं है हमको? वो नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ हमने अनुशंसा के लिए इनको भेजा। बहुत अच्छा किया, जनपद पंचायत ने अनुशंसा के लिए भेजा। इन्होंने उस अनुशंसा के ऊपर कोई कार्रवाई रिजेक्ट कर दिया। नहीं, कहाँ किया अनुशंसा? मुझे नहीं मालूम कहाँ किया, मैं कह रहा हूँ कि रिजेक्ट कर दिया तो कर दिया, और जो मैं हवा में नहीं बोलता हूँ। सिर्फ इन्होंने जो एनेक्सर P11 पेश किया है उसको मैंने फर्दर 617 एप्लीकेशन लगा के फिर तो खुद ही अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगा रहे हो, मेरे से पूछ रहे हो कहाँ रिजेक्ट किया? या हद हो गई। कोर्ट की परमिशन से किया है। कोर्ट की परमिशन से कुछ नहीं हुआ अभी तक। अभी हमने कोई परमिशन नहीं दी आपको 617 की एप्लीकेशन को, अभी अलाउ नहीं हुई है। 617 की एप्लीकेशन नहीं, अभी अलाउ नहीं हुआ। हाँ देन अलाउ नहीं हुआ है मैंने देन कोर्ट से आप मेरे से कहते हैं कि सर वो कहाँ रिजेक्ट किया, आपको खुद मालूम है रिजेक्टेड है। नहीं सर, लेकिन ये जो अथॉरिटी है ये और देखेंगे मैलोट। कार्यालय जिला पंचायत CEO जिला पंचायत is not competent to cancel the resolution of पंचायत. He is the collector is the only authority. Right sir. ठीक है। अभी ये वहाँ फिशरीज कर कौन रहा है उस तालाब में?
My lord, there is a letter from the जी government to the police officer saying that जो नहीं है they have been continuously doing fisheries. Many complaints have been filed by the other parties, but no action has been taken due to this stay order. आप तो वहां पे चोरी कर रहे थे। नहीं लॉर्ड, हमारे पास उसका ना तो पोजीशन है। आप तो चोरी कर रहे हैं, इनका कहना, मेरा नहीं कहना। सर इनका कहना है, लेकिन अगर चोरी कर रहे होते तो हमारे ऊपर किसी तरह की एफआईआर वगैरह लॉन्च होती। वहां तो सर तालाब है, सारे गांव के बगल पड़ोस के लोग जाके चोरी करते हैं वहां पे। तो मतलब आपके कारण से पूरी चोरियां हो रही हैं। नहीं सर, मेरा तो कोई उसमें कारण ही नहीं है। हाँ। तो मेरा पोजीशन है वहां पे जी। मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि हमको पंचायत ने दिया और जनपद पंचायत ने पट्टे पे दिया हुआ है और नहीं दिया आपको पट्टे पे सर। नहीं सर, ये अलॉटमेंट देखेंगे सर प्लीज यूज द करेक्ट वर्ड्स। सर प्लीज यूज द करेक्ट वर्ड्स। वी आर नॉट वर्किंग एज अ लेमैन कि हम कुछ भी बोलेंगे। मेरा ऐसा कहना नहीं है। मेरा सिर्फ ये है कि अपन सीधे सीधे सही सही शब्द, कहाँ आपको पट्टा दे दिया गया सर? पट्टे पे देने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है। सीधा बोलो ना। प्रस्ताव पारित हुआ। हाँ। पट्टा जारी करने का जो पट्टा एग्जीक्यूट होता है वो मत्स्य पालन विभाग करता है, पट्टा जारी करता है सिर्फ। जी वो उन्होंने जारी नहीं किया। अच्छा, वो तो मतलब सिर्फ एक वैसे ही है, सील ठप्पा लगाने वाला है सर, एग्जीक्यूट होता है। नेचुरल है, वो तो सिर्फ सील ठप्पा लगाएंगे। दे डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू कंसीडर। ऐसा मेरा ऐसा नहीं है। चलो जी। क्योंकि इन्होंने रेस्पोंडेंट ने जो एप्लीकेशन किया है उसका नोटिस जो आप ये आपका जो रेजोल्यूशन किसने किया था? जनपद ने किया था? जनपद पंचायत। इस पे आइएगा सर जरा। आप वही जो मत्स्य पालन विभाग के नीचे आइएगा, ग्रामीण तालाबों को मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर देना। ग्रामीण तालाबों जी, इसके नीचे पढ़िए। Page number 31 of your reputation. हेलो 31 जी। 10 हेक्टेयर औसत जल क्षेत्र के तालाबों को पट्टे शासन नीति निर्देशों प्राथमिक एवं निर्धारित अवधि के लिए हितग्राहियों को पट्टे पर दिलाना। सभी स्तर की पंचायतें ग्रामीण तालाब 10 वर्ष की अवधि के लिए तथा सिंचाई जलाशय 10 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देंगे। इसका अनुमोदन नियमानुसार ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत के लिए प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर एवं जिला पंचायत के लिए प्राधिकृत अधिकारी आयुक्त, अपर आयुक्त से प्राप्त करेंगे। और आपका किसने निकाला था? हमारा तो प्रस्ताव जो पास हुआ है वो जनपद पंचायत ने किया है। जनपद पंचायत और अप्रूवल के लिए भेजा गया मत्स्य विभाग। अच्छी बात है सर, रुक जाइए थोड़ा सा, इतनी तेजी से क्या करना पड़ता है। ये कमिश्नर साहब का जो ऑर्डर है जी R3, ये क्या है सर? सर ये जो पुरानी 2010 की जो प्रोसेस थी उसके संबंध में था। ये 2016 का है जी। अब वो खत्म हो गया, पीरियड एक्सपायर हो गया। वो एक्सपायर हो गया जी। उसको हमने चैलेंज किया था, उस जो WP की रेफर कर रहे हैं, लेकिन वो इन्फेक्शियस हो गया क्योंकि फ्रेश प्रोसेस से स्टार्ट होगी। उस नई प्रक्रिया में जी। Further, as per section 65 of MP पंचायत राज एवं स्वराज अधिनियम 1993, movable property vested in or belongs to panchayat should be transferred for a period exceeding 3 years, except with the sanction of the state government or any officer authorities by it in that behalf. In the present case, the lease is to be granted for the 10 years lordship, and which is as per the policy which was issued by the state government in 2008 lordship. As per the law also, they cannot, the panchayat cannot also grant the lease more than 3 years. अच्छा, देखते हैं सर। धारा 65 जो कहती है वो कहती है स्थावर संपत्ति का अंतरण किसी पंचायत में निहित या पंचायत की किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय, दान, बंधक, विनिमय या 3 वर्ष से अधिक कालावधि के लिए पट्टे द्वारा या अन्य कोई अंतरण राज्य सरकार की उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी की मंजूर से किया जाएगा। तो 10 साल के लिए पट्टे पर देने के लिए इसीलिए अप्रूवल की व्यवस्था की गई। जी।
जी चल जी जैन सर नेक्स्ट चलो दे दो नेक्स्ट सर इस पे 617 का एप्लीकेशन भी 617 का एप्लीकेशन भी पेंडिंग है। ठीक है सर मैं उसको देख लेता हूँ। सर वैसे तो हम लोग को ये सिखाया गया था कि अगर सीनियर खड़े हैं और कोर्ट अभी उठ के जा नहीं रही है, the others should have some patience, है ना? हो सकता है हम लोग को गलत सिखाया गया हो, I don't know. My patience may be marked as an interview. जी कनौज साहब को उसको कर दीजिए। हाँ तो ले लेते ना, भी ले लेते ना। सीरियल नंबर 14 फिर अनूप सोनकर फिर विवेकानंद जी अवस्थी जी। This is against the demarcation matter. The demarcation has taken place not on the application of the private respondent, but at the instance of the Prabandhan. What Prabandhan means? Industry department. Industry department. जी। The application is with the return filed by respondent number 1. State matter. That is dated 23/6/19. Says मेसर्स काकड़ा स्कोन करार द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से उल्लेख किया गया है कि नरेला संकरी एक खसरा क्रमांक 100 के भूमि स्वामी द्वारा अतिक्रमण कर जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, कोई के द्वारा सीमांकन राजस्व अधिकारी से कराने का निवेदन किया है। जी सर। एप्लीकेशन की गई, was filed and it was in a representative capacity not by the private individual who had some grievances regarding the demarcation. At the instance of my lord, without there being any authority or power. अच्छा मतलब अगर शासन को पता चले My lord, this is the तो सबसे पहले कोई इंटरव्यूअर को पकड़ के लाए कि भैया तू दरखास्त लगा, ऐसा है क्या? My lord, the application was moved indirectly. It was not moved directly before the revenue authority, my lord, but it was moved before the industry's my lord, the general manager of the industry. And that general manager has moved this application. So that application has come. My lord, the fact is that if annexure P1 to P4 may kindly be seen, so far as the lease of the person who applied for this demarcation, his leases were already cancelled, man. क्या कैंसिल हो गया था? Lease in respect of the private respondent manner, that is respondent number. Fine, but you can encroach upon the land. Private. I have not. That is not the finding that I have encroached the land matter. The fact is that it was not the allegation against me that we were. Then why you have come to this court? ये मुझे नहीं समझ में आया. If you are not aggrieved. The adjacent land is mine matter. Your adjacent land is, yes. It is mine matter. Right. Adjacent land is mine. And so far as respondent number 5 is concerned, matter, the respondent number 5 is encroaching upon, and here are the findings that the respondent number 5 is an encroacher, and despite those findings having attained finality, matter, if the return filed by respondent number 5, matter, paragraph number 7 may kindly be seen, matter, that will clarify the position. But what is your relief, sir? मैं थोड़ा actually relief clause नहीं पढ़ा हूँ, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों petition आई है. थोड़ा सा कट शॉर्ट करेंगे तो account of the demarcation, in fact, my lord, my land has been included in the lands which in fact are such. So in the while demarcating the land of some other person, your contention is that your land has also been included by showing it to be the land of that person. Right? Showing it to be the land belonging to respondent number 5. No problem. अब समझ में आ गया. So that is the. आपको भी कोई लीज वगैरह मिली हुई है? My lord, lease is in my favor. I have been granted all the permissions, my lord. These permissions. Lease कहाँ है सर आपकी? My lord, we have 5, my lord. If my lord will kindly see, annexure 6 to P15 are the all permissions and lease. Permissions तो ठीक ही ठाक हैं. आप तो लीज दीजिए. Lease has not been. जमीन का तो कहाँ तक की जमीन है आपकी, वहीं से तो पता चलेगा. परमिशन से क्या पता चलेगा?
हम तो परमिशन लेके तो कल को सरकारी जमीन के ऊपर अपना मकान बना ले, उसमें क्या फर्क पड़ता है? My lord, if annexure P5 में kindly see, my lord, that is हाँ। the land recorded in the name of the government on which, my lord, the respondent number 5 is encroaching upon. कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले आप अपना राइट तो बताइए। आपका कहना है कि योर लैंड हैज बीन इंक्लूडेड व्हाइल demarcating the land of the respondent number 5, that is your case, इतना ही है ना? तो आपकी जमीन का आपको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल या राइट टू ऑक्यूपाई दैट लैंड, These I will find, my lord. I may be given some time, my lord, that copy of the lease I will. चलिए ठीक है। फिर आप कैसे कह रहे हो कि आपकी जमीन वहां पे ऐड हो गई? My lord, because earlier, my lord, the reply of respondent number 5 may kindly be seen, my lord, paragraph number 7. They were found to be encroachers over my land, my lord, and that has been directed to be removed. And instead of removing that encroachment, my lord, they got an application moved through respondent number 4 and again encroached upon the same land, my lord. Whereas it is an admitted to, my lord. आपने कभी कोई एप्लीकेशन लगाई फॉर रिमूवल ऑफ एंक्रोचमेंट? Yes, my lord, and that has been allowed. Which is that application? My lord, kindly see. Paragraph number 7 of the reply may kindly be seen, my lord, of the respondent number 5. Their reply is there. That says that in fact earlier the petitioner had filed some applications for demarcation of their land in the year 2003, and it was found that some portion तो ये if appears some से थोड़ी हम ऑर्डर कर पाएंगे सर। I mean permitted. आप अगर आपको नहीं, अब आपको लगता है कि that your land has been included wrongly, तो अब आप या तो डिमार्केशन कराइए और या फिर अब आप सिविल सूट फाइल कीजिए। In fact, my lord, that petition has already been granted by the impugn order. ये लिखा हुआ है जिसमें यह है आवेदक गण द्वारा अपनी भूमि का आज दिनांक तक शासकीय सीमांकन नहीं करा गया। आवेदक का मतलब उसके ऑर्डर में ये है, और उसमें आखिरी में जिसमें हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं। आवेदक चाहे तो विधि के अनुरूप अपनी भूमि का प्रत्यक्ष सीमांकन कराने हेतु आवेदन कर सकता है। हमको लैंड में हमको जो जगह मिली थी वो कैंसिल हो गई। एनेक्सर P1 से दैट ऑर्डर हैज बीन सैटिस्फाइड बाय द हाई कोर्ट, वो बाय द सिविल कोर्ट कंफर्म बाय द हाई कोर्ट। देन लॉर्डशिप आई एम इन पोजीशन ऑफ द लैंड, ये डिस्प्यूट कर रहे थे तो डिपार्टमेंट ने जब गए तो डिपार्टमेंट ने मुझको दी थी, गवर्नमेंट की लैंड थी वो हमें अलॉट की गई थी, तो डिपार्टमेंट ने एप्लीकेशन मूव की, उसमें ये बताया कि इन्होंने हमारी जगह पर कब्जा करा था। और उसमें नेक्स्ट जो पेज नंबर 50 है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि आवेदक द्वारा अपनी भूमि का आज दिनांक तक शासकीय सीमांकन नहीं कराया गया है। और पिछड़ा में सलना के आवेदन तो सर इसमें अस्तित्व की आवश्यकता, आवेदक चाहे विधि के अनुसार अपने भूमि का प्रत्यक्ष सीमांकन करा सकते। इनको तो अभी भी मौका है, ये एप्लीकेशन दें, हम कोई पार्टी बना ले, सरकार कोई बना ले, सीमांकन करा लें। जो जगह भी गवर्नमेंट की लैंड है और गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को दी, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने हमें दी। पर्पस में काइंडली भी आपका क्या है, आपकी कौन सी इंडस्ट्री चल रही सर? अवस्थी जी, अरे अवस्थी जी आप कौन सी इंडस्ट्री चला रहे हैं? इंडस्ट्री में I am not running the industry, my lord. My housing scheme is there, my lord. तो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आपका हाउसिंग कॉलोनी डेवलप हो रही है। Colony we are developing and they are carrying out stone crushers, my lord. कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडस्ट्रियल एरिया में हाउसिंग कॉलोनी आप डेवलप कर रहे हैं। जमीन it is आवासी, my lord. It has been recorded. अरे भाई साहब, हम इनका स्टोन क्रशर बंद करा देंगे, बंद कराने की पिटीशन लेके आओ, चलो। My lord, what? सवाल अभी वो नहीं है, सवाल इस बात का है कि किसकी जमीन के ऊपर किसका कब्जा। It was not an industrial, my lord, area. It was. अवस्थी जी, It was reserved for housing purposes. अवस्थी जी, अगर वो लैंड यूज चेंज हो गया है, कुछ हो गया है, आवासी है, इसका लैंड यूज। अरे मैंने कब कहा? चलो अब हमने कर लिया कि आवासी जमीन के ऊपर ये स्टोन क्रशर चला रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। सवाल इस बात का है कि इस मुकदमे में सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी क्या है? हम तो आवासी ही मेरे भाई, अरे हमारा उपयोग आवासी है। आप बहुत अच्छे कर रहे हैं और हमारी जमीन, और इनसे गिट्टी खरीद के ही तो आप मकान बना रहे हो, और हमारी जमीन पे इनने एनक्रोच किया। तो यही झगड़ा है ना। तो आप अपनी वो डिमार्केशन तो करवाओ। आपकी जमीन कहाँ है वो डॉक्यूमेंट अब हमारे पास है नहीं। डिमार्केशन आपके फेवर में कौन सा है, हमारे पास है नहीं। किसी जमाने में कोई डिमार्केशन में कोई जमीन आपके इनके कब्जे से निकली थी। मान क्या लीजिए एक जमीन होती है, उसके वो 4 डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कोई एक स्ट्रिप में होती है, कोई स्क्वायर होती है, कोई आड़ी तिरछी होती है, जैसे भी होती है, पर कोई नेटिव डायरेक्शंस तो रहते हैं।
पहले किसी डिमार्केशन में आपके साउथ की जमीन को इन्होंने कब्जा कर रखा था, और अब जो झगड़ा आ गया है नॉर्थ का आ गया है, तो हम साउथ वाले को नॉर्थ पे कैसे अप्लाई कर दें? I will clarify the position, my lord. One opportunity. अरे नहीं, आप उसमें तो डिमार्केशन Time may be given, my lord. कोई बात नहीं, आप तो डिमार्केशन करा के उसमें ये पता कर लीजिए कि साहब ये हमारी जमीन के ऊपर कितना इन्होंने भेजा कब्जा कर लिया है, और उसके बाद अगर 250 लगता है, मुझे लगता नहीं है कि अब 250 आएगा पिक्चर में। MPLR कोर्ट से तो आप बाहर जा चुके हो, वो कमर्शियल पे चले गए, आप रेसिडेंशियल पे चले गए, तो MPLR कोर्ट से 250 तो बाहर हो गया। अब बचेगा कुल मिला के सिविल सूट। My lord, so far as the civil suit is concerned, my lord, there is a specific finding that they do not have any, my lord, the right to run the business of stone crusher, my lord, and that it was directed, my lord, to kindly see the. सर वी स्टोन क्रशर को बंद करके तो वहां पे मल्टी स्टोरी तान दें तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सवाल इस बात का है कि हमें लैंड यूज इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर। Had it been a case that he is illegally running a stone crusher instead of establishing another industry or establishing any colony, हम देखते हैं उसको। The only question is with regard to demarcation. Land use is not the subject matter of this petition, as I have understood so far. If I am not correct, so please correct me. My lord, the demarcation, so far as the demarcation in question is concerned, my lord, that has been done with the help of the Google. आजकल TSM से ही हो रहा है। TSM से। TSM जो है वो that is indicative of the ways, my lord, which are. Sir, whatever it is, now TSM is the recognized method, right? तो आप डिमार्केशन करा लीजिए। डिमार्केशन के बाद अगर लगता है कि जैन साहब भी बहुत अच्छे, इनके क्लाइंट ने भी आपकी जमीन दबा ली है, यू हैव अ रेमेडी। चलिए सर, ये डिमार्केशन में पा लिया कि इन्होंने आपकी जमीन दबा दी है, आपको रेमेडी के लिए किस प्रोसीडिंग्स में जाना पड़ेगा? MPLR कोर्ट तो अब लगेगा नहीं सर, या आप डंडा लेके जा सकते हो IPC लगवाने के लिए। Law is simple that even if a person is in possession as an encroacher, still he cannot be thrown out without following due process of law. Suppose हमने इस demarcation को quash करके ये कह दिया कि he has encroached upon your lands. चलिए हम यहाँ तक भी चले गए। Can I direct him to hand over the possession? Since the order is cryptic, Cryptic तो ठीक है। अरे सर देखिए, ऑर्डर तो क्रिप्टिक है पर पिटीशन में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसका क्या कहेंगे सर? आपका जो टाइटल का जो डॉक्यूमेंट है वही नहीं है, उसका हम क्या करेंगे? आपका पिटिशनर ने 10 डॉक्यूमेंट्स लेके आ गया विद रिगार्ड टू द परमिशन, पर वो असली डॉक्यूमेंट नहीं लेके आया, तो आपका पिटिशनर कुछ ज्यादा ही होशियार नहीं है क्या? ही नोस कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। ही हैज डेलिबरेटली फाइल्ड ऑल द परमिशंस but did not to file the document to show the title over the land. But to what extent he is owner of the land in dispute? Suppose अगर उसके पास ओनरशिप या लीज जो है 20 एकड़ की है और 20 से ऊपर के पोजेशन में है, तो अलग हो जाएगा। ये परमिशंस ला के दिखा रहे हैं। Why your petitioner has filed all these documents which are not necessary for adjudication? छुपा तो हो भी रहा है कुछ ना कुछ। तो यस, ये तो अथॉरिटीज और कोर्ट ही है जो पिसती रहती है कि क्रिप्टिक ऑर्डर है, आर्बिट्रेरी ऑर्डर है, फलाना ऑर्डर है। व्हाट अबाउट द कंडक्ट ऑफ द पिटिशनर सर? व्हाई द पिटिशनर हैज सप्रेस्ड दिस फैक्ट with regard to the documents to show their ownership? नहीं, वो क्रिप्टिक ऑर्डर को तो हम क्वेश्चन करते हैं, नेचुरल है। नहीं, why should I come to the rescue of the person who had deliberately suppressed? No, अवस्थी जी, let me clarify myself. मैं बार बार बोलता हूं कि whenever I say कि that you have suppressed, that doesn't mean कि that Mr. अवस्थी or the lawyer has suppressed. In fact, उसका क्या होता है, स्टेटमेंट को कट शॉर्ट करने के लिए, नहीं तो सब आपके पक्षकार के द्वारा ये जानबूझ के छुपाया गया है, उसको और कट शॉर्ट करने के लिए। जैसे अगर सपोज सर ऑन अ लाइटर साइड, अगर आपकी और जैन साहब की बात हो रही है और जैन साहब ने कुछ कहा, आप नहीं समझ पाए, तो आप 2-3 तरीके से पूछ सकते हैं।
साहब क्या कहा नहीं सुना, साहब क्या कहा नहीं समझ में आए, आप ये भी पूछ सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि whenever I put a question directly to the lawyer concerned, then I always say this is a personal question to you. सवाल इस बात का है कि yes sir, the officer has passed a cryptic order. Why the petitioner has not come with the clean hands? When we can't give an opportunity to the officer to pass a revised order, why should give opportunity to the litigant who is so intelligent he had filed all the documents concerning his permissions, except the document of title, and the dispute is with regard to the ownership, this boundary dispute. तो सर उसमें आप करवा लीजिए और उसके बाद जो भी रेमेडी अवेलेबल होगी गो फॉर इट, और हम ये कह देंगे कि साहब अब ये जो डिमार्केशन होगा दिस विल बी ओवर एंड अबव ऑल द प्रीवियस डिमार्केशंस, और जो भी होगा दैट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज, and then the agreed party, or not agreed by the demarcation but agreed by the encroachment by the others, shall have a right to take the recourse under the law, है ना? क्योंकि आप डंडा चला नहीं पाएंगे, हम मान के चल रहे हैं कि जैन साहब के पक्षकार ने एनक्रोचमेंट किया हुआ है। Influential also, the state government, despite having come to know that they are running the stone crushers, they did not prefer any appeal against the judgment in which there is a specific observation. This is a fact that they are running the stone crusher. सर देखिए, रहा सवाल की इन्फ्लुएंस का या नहीं का, वो तो ठीक है, मैं यहाँ से बैठ के जब तक उसको फाइंडिंग को सर्टिफाइड कॉपी के रूप में ना दे दूं, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी, एटलीस्ट फ्रॉम मी, टू से एनीथिंग, राइट? क्या होता है कि जब हम लोग एक जनरल टॉक्स में, हो सकता है हमारे मुंह से भी कुछ निकल जाए, बट योर सबमिशन विल बी टेकन एज अ जनरल सबमिशन एंड माय रिस्पॉन्स विल बी टेकन एज अ वर्डिक्ट। तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। उसके बाद भी कई बार हम रिक्वेस्ट करते हैं जनरल टॉक्स पे ना आए। We are also human beings. In spite of all our efforts, sometimes there may be a slip of tongue. तो उसको फिर क्या होगा कि भाई in what manner the other person will take that statement, so we don't know. So whether anybody is influential or not, that is a different aspect. The only aspect is that whether he has encroached upon your land or you have encroached upon his land, है ना? You are agreed by demarcation. वर्चुअली आपकी पिटीशन अलाउ ही हो रही है, जो हम कह रहे हैं कि भाई योर डिमार्केशन विल बी ओवर एंड अबव ऑल द प्रीवियस डिमार्केशन, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। 9962/2020 श्री अवस्थी, श्री पाराशर, श्री राकेश जैन। This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed, seeking the following relief. In nutshell, the dispute is whether the petitioner has encroached upon the land belonging to the respondent number 5 or not. इसमें वो ऑर्डर कौन सा था सर जिसमें उसने परमिशन दी हुई है? Annexure P16 is the demarcation report. And then order challenging that demarcation is. It appears that a demarcation was conducted on 7/7/2019, which was objected by the petitioner, and ultimately the matter traveled up to, and ultimately, however, the said demarcation report was accepted by the NAB Tehsildar, by the Tehsildar Nazul Circle, Govindpura, Bhopal. Being agreed by the said order, the petitioner preferred an application under section 129(5) of MPLR code before SDO. The SDO by impugn order dated 24/1/2020 passed in revenue case number 263/B-121/2019-20 has held that the demarcation was done in accordance with law. However, the petitioners have not got their lands demarcated, and the objections were filed on imaginary and false grounds. Police sister.
since the objections raised by the petitioner were rejected by the SDO Govindpura Circle, Bhopal, in revenue case number 263/B-121/2019-20 only on the ground that the objections raised by the petitioner were not based on any demarcation report. Therefore, this court is of considered opinion that the petitioner, therefore this petition can be disposed of with the following observations. In case if the petitioners move an application for demarcation of their land, second. The petitioners have not filed the documents of their title, although they have filed certain permissions granted by different departments. Permissions are not the document of title. Since the petitioner has not filed the document of title, therefore it is very difficult for this court also to adjudicate the list. However, as the SDO Govindpura Circle, Bhopal has rejected the objections raised by the petitioner only on the ground that he had not got his land demarcated. Therefore, this petition is disposed of with the following observations. Number one, if the petitioner bracket में S files an application for demarcation of their land along with the documents of title before the competent authority, then the competent authority, after giving notices to all the necessary parties, shall direct for demarcation of land belonging to the petitioner. Number two, if any of the necessary party refuses to accept notice, then a public notice shall be published in the local newspaper, and only thereafter the demarcation shall be conducted. Next, in spite of due notice, if any of the necessary party fails to appear on the spot at the time of demarcation, then such absentee shall not have any right to claim that the demarcation was done behind his back, his/their back. System. The Tehsildar shall hear the objections and shall pass the final order under section 129(4) of MPLR code. Next, if any of the party is agreed by this order passed under section 129(4) of MPLR code, then such party shall have a right to file an application under section 129(5) of MPLR code, which shall be duly considered and decided by the SDO in accordance with law. Next, it is made clear that the demarcation in question. It is made clear that in case if the demarcation is done on an application, it is made clear that if an application is filed by the petitioner (S) for fresh demarcation, and if that demarcation is done, then the said demarcation shall be over and above all the previous demarcation reports. With the foresight of observation, अब आपका तो सारा काम वैसे ही हो गया, बिना क्वेश्चन कराए आपका तो क्वेश्चन हो गया है। अच्छा, हाँ, कोई और रिक्वेस्ट कर रहे थे जी, चलो। SHRI 221/2021, Shri M.L. Sharma, Counsel for Petitioner, Shri Parasha for the State. The Counsel for the State prays for and is granted last opportunity of 4 weeks to file return list in 3rd week of April 2024. Ji. Serial number 146. Kindly list this matter for final hearing in 1st week of April. अरे अभी लंच के बाद ही सुन लेंगे फाइनल। No sir, senior counsel is not well. तो अब आप रिक्वेस्ट कर दीजिए लंच के बाद, है ना।
11 अरे वो फाइल देखो यार, साइन हुए कि नहीं ऑर्डर्स? साइन हो गया है क्या? वो तो एसएचओ को जिसको आना वो वाला साइन हुआ है। इसमें आपने डायरी मिलाए थे और उसका पोस्ट था उसमें। नहीं वो ठीक है, समझ गया, देख लेते हैं। उसमें लिख देना यार ये 10727 में later on in the post-lunch session it was submitted by counsel for the state that diary has been received and complainant has been informed. Accordingly, the hearing of this case is preponed list on कल कर ले, है ना, later on करके कर देना। वो ना भी साइन हुआ होगा वो बस ही रहेगा। जी सर। आइटम नंबर 7 सर प्लीज। सर I went to couple of judgments. One is rendered by your lordship in the case of Srimati Rachna Singh versus the state of MP. In that Sindhya school case, this is the case. भाई साहब वो आ गया है, सेंट मेरी आ गया है। अब सेंट मेरी के आ गया, मेरा कोई भी ऑर्डर होगा दिस वे और दैट वे। हाँ बस उतना Understanding lordship, Saint Mary is also helping us. बताइए। That is 2023 volume 4 SEC page number 498. I will request certain 2023 volume 4 SEC page 498 Saint Mary Education Society and Rajendra Sar. In this case, certain employees were terminated. They challenged their order of termination before the learned single judge. Learned single judge dismissed the petition on the ground of maintainability. Writ appeal allowed the appeal filed by the. वो तो मुझे मालूम है, आप बताओ ना क्या डिस्टिंग्विशेबल क्या है? डिस्टिंग्विशमेंट करने का प्रयास करते हैं सर। First of all, Lordship, para 8 may kindly be seen at page number 508. In view of the aforesaid, Respondent one invoked the writ jurisdiction of the High Court under Article 226 of the Constitution of India. In the writ petition, Respondent number 1 arrayed the following 5 respondents: Union of India, Central Board of Secondary Education, Saint Mary Disciplinary Committee, and Mr. So-and-so. 9. It is pertinent to note that despite the above 5 respondents being arrayed as aforestated, the principal relief sought in the writ petition filed by the respondent number 1 herein was to set aside the order dated 23/9/16 passed by the disciplinary committee of the school and set aside the order of termination dated 8/5/15 passed by appellant number 1 here. In other words, respondent number 1 herein sought writ in the nature of certiorari to be issued against the private unaided minority institution. It may not be out of place to state that no relief was sought against the Union of India, respondent number 2 herein, and the Central Board of Secondary Education. I have sought a relief against the CBSC to permit me to appear in the 12th board examination. Thereafter, Lordship, kindly see page number 516, para 19. This is submission on behalf of the appellant before the Honorable Apex Court. 21.2. The dispute between the appellant and the respondent number 1 herein is purely contractual in nature and does not involve any public law element. 21.3. Respondent 1 herein has sought relief only against the 2 orders of the termination and both the order which have been issued by the appellant in its capacity as a private body. These were the Lordship. And thereafter, para 36 is helping me, Lordship, as per my understanding. It needs, para 36, page number 521. It needs no elaboration to state that a school affiliated to CBSC, which is unaided
is not a state within Article 12 of Constitution of India. Nevertheless, the school discharge a public duty of imparting education, which is a fundamental right of a citizen. The school affiliated to CBSE is therefore an authority amenable to jurisdiction under Article 2 to 6 of the Constitution of India. However, a judicial Notice. Yes. Notice. सर एग्जामिनेशन चल रहा है सर। अब क्या करूंगा, उनको नोटिस नहीं दे पाएंगे क्या? सर हमने पहले से कॉपी दे के रखी है। किनको? मंदिर का साहब स्कूल को? नहीं सीबीएसई। हाँ तो स्कूल को नहीं दोगे क्या? आप उनको हमदर्द कर सकते हैं तो हमदर्द कर दीजिए। हमदर्द कर देंगे सर। The counsel for petitioner undertakes to, looking to the urgent nature of the case, the counsel for petitioner undertakes to serve the respondents by humdous notice. Accordingly, on payment of process fee by tomorrow, the office is directed to prepare the humdous notice and hand over the same to the petitioner latest by 13th of March 2024. The counsel for the petitioner is directed to file the acknowledgement of receipt of notice as well as the affidavit in support of service on 18th of March 2024. List on 18th of March 24. Would it be before 18th March? सर आप सर्विस करा के दोगे तो पे नहीं तो देखिए आज कल भी अगर आपने पीएफ दिया तो मुझे एक दिन अपने ऑफिस को देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास 2 ही दिन बचते हैं 14 और 15, आप अगर ये 15 तक सर्विस करा के दे रहे हो तो मैं 15 लगा देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। और 15 के बाद फिर डायरेक्ट ओपनिंग 18 को आ रही है। One more coordinate bench in the similar circumstances, इसी स्कूल का है, इसी के साथ का पढ़ने वाला लड़का है, उसको अलाउ किया है प्रोविजनली कि इसको सामने बैठने। आपका पेपर कब के हैं देखो? आपका कितना कम था? सर हमारा 56% अटेंडेंस थी, 75% होनी चाहिए। ये सर P5 है सर, पेज नंबर 68 पे। ये इंग्लिश का देखिए साहब आपका 9 मार्च का पेपर जा चुका है, अगला पेपर 18 मार्च। 9 मार्च को तो था ही नहीं पेपर सर हमारा, वो मैथमेटिक्स का था, वो हमारा नहीं था सर। अब अगला पेपर है 18 मार्च को इकोनॉमिक्स। अब चाहे तो आप 15 को लगा देते, पर आप सर्विस करा के दीजिए आपको। ठीक है सर, कोशिश है ना, वो 18 की वजह 15 कर देना उसमें। आपका वो मेंटल रिटार्डेडनेस का क्या प्रॉब्लम है? ट्रीटमेंट का क्या है? ट्रीटमेंट का क्या है आपके डॉक्यूमेंट्स? आप कह रहे थे ना कि वो थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड है। नहीं मेंटली, मेडिकली अनफिट था, क्या क्या प्रॉब्लम था? He was suffering from intestine infection at that time. उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं सर? डॉक्यूमेंट है सर, डॉक्यूमेंट हमने लगाए हैं, ये है P4 है, पेज नंबर 30 to 67। ये कब से कब तक ये ट्रीटमेंट में रहा है? सर ट्रीटमेंट तो इसका बहुत लंबा चला है सर, उस 2019 से चल रहा है। कोई बात नहीं सर, वो 7वें महीने से लेकर 9वें दस्तावेजों की आवश्यकता हो तो मैं अभी बता दूं। जी वो हमने लगाया। अभी आपकी जो एब्सेंस कब से कब तक की है? अब सर जुलाई से लेकर सितंबर तक सर। सितंबर तक की है, उसका ट्रीटमेंट के डॉक्यूमेंट्स कहाँ है सर? ये सर P4 है सर, पेज नंबर 30 से 67 पर लगाया है। इसमें मेन रोड डॉक्टर रणधीर सिंह भाटी जी का है सर्टिफिकेट एक। ना कोई बात नहीं, हम देखते हैं ना जी। मैं आपको सिर्फ इसलिए देख के बता रहा हूँ कि अब वो फिर उस दिन ना बढ़वाना पड़े आपको। जी जी तो आपको पहले ही बता दिया जाए कि आपके इसमें कागजों में ये कमी है। ठीक।
अब सर जुलाई से सर 9वें महीने तक मेन उसका सर, इसके बाद ठीक है, आप देख लीजिएगा सर, कुछ छूट तो नहीं रहा है। चलिए, सीरियल नंबर 151 श्री VDS श्री संदीप को लेटर ऑन करके 4337/23 लेटर ऑन none for the petitioner, so Madam Shah, counsel for नहीं, एक सेकेंड, शाह साहब आप किस किसके लिए हैं? Respondent number 1. फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1। बड़कुर जी आप किसके लिए हैं? श्री बड़कुर फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 2, 3, 5 एंड 7 तक। श्रीमती स्वाति असीम जॉर्ज फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 8 to 10। None appears for the petitioner. In the morning session, it was specifically directed that in case if none appears for the petitioner even at 2:15 p.m., then this court shall proceed per ex parte. Since none appears for the petitioner, therefore the petition is dismissed for want of prosecution. serial number 125 Township wanted to know whether the petitioners are in any way connected with the other family identified. They are cousins, my lord. They are cousins. Let's before another bench. I was a counsel for one of your relative. That is the difficulty, right? Had inquired they are cousins. मुझे एड्रेस से मुझे थोड़ा सा शक हो गया था, बट मुझे इतना मालूम था कि द पर्सन फॉर whom I had appeared, उसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है, इतना तो मुझे मालूम था। ग्रुप का आप नाम देखेंगे, इसी ग्रुप से वो इसी ग्रुप से है, वो रहता है, तो आई डोंट थिंक दैट इट विल बी प्रॉपर। ओके, आई नेवर सॉ दीज पर्सन्स, आई नेवर हैड एनी इंटरेक्शन विद दीज पर्सन्स, मतलब इंटरेक्शन छोड़िए, आई हैड नेवर सीन देम आल्सो, बट सिंस आई हैड अपीयर्ड फॉर हिज कजन्स एंड इन नॉट इन सिंगल केस, इन मल्टीपल केसेस। और अगर आप इससे बैकग्राउंड पे जाएंगे, तो देन यू विल रियलाइज दैट वन SLP went to Supreme Court with regard to the, not in connection with this case, with regard to title over the property. है ना? Then the question of adoption was decided. वो ऐसा फिर सब इंटररिलेटेड ही है पूरा फैमिली का। हाँ, मुझे इसलिए कि मुझे शक था कि ऐसा ना हो कि ये ज्यादा डेप्थ में गए और कहीं ना कहीं से वहां पे जाके जुड़ जाएगा, इसीलिए सर उसमें पड़ा। serial number 126 श्री सुरेश पंडित। Well, it's respondent number 3 is dead, and we have filed the application bringing his last on record. IA number 3526. IA number 3526. 24. निकालना भैया कौन है? आपको कोई ऑब्जेक्शन है क्या उस पर? डू यू हैव एन एडिशनल कॉपी, क्योंकि एकदम से दिख नहीं रही है फाइल्स। आज पेश हुई है। At 39/2010, it is submitted by counsel for petitioner that during the pendency of the petition, the respondent number 3 has expired on 4/10/2021, and accordingly, IA number 3526/2024 has been filed for bringing his legal representatives on record. Sir, आप किसके लिए appear हो रहे हैं? Respondent number 1 and 2. Issue notice to the proposed legal representatives of respondent number 3. Here be paid by registered mode within 3 working days. List immediately after the service of notice. Number 127 श्री
ये क्या पहले राउंड में, ये पहले राउंड है ये? चलो पास हो कर लो। अच्छा, डायरेक्शन में टेस्ट चल रहा Direction. है। एक सेकंड देख लेने दीजिए। हाँ ठीक है। Number 28. Three fifty part. 5244/2010, none for the petitioner SHRI Mohan Sasarkar for the state on 4/3/2024, also none had appeared. Today also none appears for the petitioner. Thus it appears that the petitioner must have lost his interest in prosecuting this petition. It is accordingly dismissed for want of prosecution. 128.1, 5312 of 2010, same order. Number 129. Three BP Nema. वो लेके आए क्या सर आप ओरिजिनल फॉर्म जो था? इसमें आप R1 देखें सर जब फॉर्म आप लोग ऑर्डर तो देखते नहीं हो, R1 को क्या देखें, ऑर्डर देखो क्या है पिछला। 5389/2010, none for the petitioner Shri J.K. Pillai, counsel for the respondent number 1. Shri Pillai prays for and is granted a week's time to comply the order dated 4/3/2024. Call on 18th of March 2024 under the heading Direction Matters. Number 130. Three AP Singh. 5613/2010, वो 4 को भी कोई नहीं था, dismiss for want. Number 131. Three Ashish Roti. Lordship, I'm praying for some time to argue this matter. Senior is before another bill, and I could not see the full. At the request of counsel for petitioner, the hearing is deferred. The case is adjourned, list on 18th of March 2024 under the heading Direction Matters. Number 132. Three NS Gupta. 130. Nobody appeared. ये भी 4 तारीख को कोई नहीं। श्री उत्कर्ष अग्रवाल for the respondent. Should be dismiss and default. Number 133. Three Anant Dixit. इसमें भी कोई नहीं था 4 तारीख। Number 134. Three Ravindra Bisen. सर आप एकदम ब्रेक लगा लिया आपने। रिस्पोंडेंट के लिए प्रेजेंस लगा लीजिए। अरे सही मतलब Siddharth Srivastava. Number 134. Three Ravindra Bisen. This is also matter regarding allotment of the fishing Dulha Talab was issued. 13042/2010, which 4 तारीख को कोई नहीं था। Notice was challenged in this, that may be ठीक है। factors. Number 135. Shri Avinash Jargat. Lordship, no instruction from the petitioner, sir. No instruction from the petitioner. 13596/2010, Shri Siddharth Bodh. Siddharth Bodh. Paul counsel, Paul के कॉल Bodh sir. अच्छे श्री सिद्धार्थ बौद्ध counsel for the petitioner Shri Parashar for the state. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. At the outset, it is submitted by counsel for petitioner that he has no instructions on the matter. Accordingly, the case is dismissed for want of prosecution. Number 132. Shri Pankaj Dubey.
Sir. Matters to be finally. Sir, direction matters are always listed for final disposals. Can it be taken up on some other date because I'm not yet prepared for this matter? 150. Sir, senior designated seniors are not required to prepare, sir. They are required to be briefed. We have to be prepared. We have to assist the court. That is it. What I'm saying, first of all, they are to be briefed by the briefing council. That is it. So nobody briefed you, sir? The briefing was there, but I have not seen the report. Okay. That's no issue. Actually, क्या है सर, रैन साहब, आप मेरे क्वेश्चन का you may not be able to understand the real logic behind my question, because what I have felt is most of the lawyers do not know the privileges which are given to the designated seniors, right? तो वो भी जो है उनको ऑर्डिनरी तरह ही ट्रीट करते हैं. तो मैं आपसे वो पूछने का रीजन ये था, so that the others may know कि भाई क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हैं and what answer is coming. And I followed it. Because nowadays, whenever I ask the young lawyer कि what are the privileges for the designated seniors, they don't know. So if a designated senior is standing, somebody will intervene in the matter. If a designated senior is submitting, again somebody will intervene in the matter. So thereafter I'm trying to tell them that this is not the way. Forget about this designated senior. If a senior is standing, you should not intervene. But that is a courtesy. But so far as the designated senior is, there are the privileges which are goes with the government. हाँ. तो वो तो उसमें तो आपको करना ही पड़ेगा. If you personally like that person or not, you don't have any option. You have to do it. Yes. उस कारण से मैंने पूछा था सर. As you said कि sir you have not prepared it, तो मुझे लगा कि नहीं, it has to be clarified to the others. This, in fact, the record will be required, so if I can. Sir, what type of record, sir? The urban land sealing proceedings. So, whether that question regarding possession is involved? Yes, that's the only issue. In fact, the matter was remanded back on that issue. Whether they have relied upon any panchanama vagara? Nothing, Lord. It's just a very cursory order. No. They must have prepared some possession panchanama. No, that is not them. That's why I just want to see that. There's no pleading in either in the petition or in the reply. So if I. Sure, sir, from where the record has to come? Urban land sealing Jabalpur. Jabalpur. तो उसका रख लीजिएगा. 1505/2010 श्री ब्रायन डिसिल्वा सीनियर एडवोकेट विच MS. मैडम गुड नेम. हाँ जी. रितिका गुप्ता काउंसिल फॉर पिटिशनर श्री दिल्ली परिहार काउंसिल फॉर द स्टेट. It is submitted by Shri Brian De Silva, senior advocate, that the record of the sealing record of the sealing proceedings would be required, because the primary question for consideration is as to whether the case in hand is covered by Section 4 of Urban Land Regulation Sealing Repeal Act. Yes, my lord. 1999, I think so. 99. That's right, my lord is right. 1999. Accordingly, the counsel for the state is directed to keep the record pertaining to the urban land sealing proceedings on the next date of hearing, based on 18th of March 2024, under the heading Direction Matters. Can we have 4th of April, my lord? It's a Thursday. No, sir, ये Direction Matters है ना. So they will always come on Monday. Monday, okay. Either 18th or 1st, sir. My lord, I may not. Then in that case, my lord, can we have it on the 8th, my lord? 8th would be too long, I think, sir. There will be further adjournment by 3 days. 3 weeks, sorry. Any date convenient, my lord, except for the 1st, my lord, that week. Except then 18th? My lord. They will get it. They will get it.
Nowadays, they are very efficient, sir. At least in procuring the documents. Yes, sir? They've always been efficient, I would say, Manoj. That's why I asked that from where the record has to come. Since it is just from a distance of half a kilometer. These old matters, my lord, it takes some time because I have a couple of other matters in that. The officers also know that which work is to be given priority. Chaliye, sir, your efficiency is at stake. Lordship, same would be here, Lordship. Eh? Record would be here. Obliged to that. Serial number 137. Sri Harmonia Court. Madam, for the response of five. None for the petitioner, Shri Parihar for the state, Shri Srivastav for respondent number 5. Yes, none appears for the petitioner, therefore the case is adjourned. List on 18th under the heading direction matters. ये पहला डिफॉल्ट है सर एक्चुअली 2011 के बाद पहली बार लगा है डिसमिस इन डिफॉल्ट सेकंड डिफॉल्ट के ऊपर मेरिट्स पे वजह से मैं एक्सपर्टी में मैं मेरिट पे क्यों करूं सर एक्चुअली क्या है वी डोंट नो पहले इसको देखती एक्चुअली आई नेवर डिसमिस इट ऑन द फर्स्ट डिफॉल्ट तो सेकंड डिफॉल्ट पे भी जब कोई नहीं आता तो वी डोंट नो कि वेदर ही इज रियली इंटरेस्टेड इन प्रोसिक्यूटिंग दिस और नॉट ऑन फर्स्ट डिफॉल्ट देयर मे बी वेरियस रीजंस चल Serial number 130 है श्री RX सिद्दीकी 15858/2000 and वही नंद श्री चौधरी फॉर रिस्पोंडेंट्स 18 तारीख number 139 I'm sorry, but item number 131, I am for respondent, Maharashtra State Information Commission. That has been, by the time I reached, 132 was going on. Therefore, I am not interested. 131 में क्या हुआ है 18 के लिए तो प्रेजेंस लगवा दीजिएगा Much please. अभी ब्रैकेट में लिखा देंगे लेट कमर number 139 जी On behalf of the petitioner side, Virendra Kumar, requesting my lord for listing the matter for final hearing. Madam, it is already listed for final hearing. The matters listed under the heading direction matters are not to be treated as a cases listed in motion hearing. Madam, this petition is pending since 2010. Now, even after 14 long years, if we are not ready to decide, then it is a big question mark on our ability and attitude towards the institution. I'm putting this question to myself. I'm not putting this question to anybody else. My lord, I'll argue the matter which provide me. So, madam, then please, Please provide me the time. Of course, madam, on 12th of February, the time was given. It is submitted by counsel for petitioners that because of his non-availability in the afternoon session, the hearing may be deferred and case may be taken up on any day after 21st of February 24. Looking to the personal difficulty of counsel for petitioner, the case is adjourned. List on 26th of February 2024 under the heading direction matters. 26 को ये reach हो नहीं पाया है. Madam, we have already granted. इसमें कोई जरूरत नहीं है स्टे वगैरह है नहीं है अगर मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि भाई कीपिंग द केसेस पेंडिंग तो बहुत अच्छा लगता है पेंडेंसी तो बताइए हम इसको 10 साल के बाद लगाते हैं सीधा सीधा सर इसमें 13/1/2022 की ऑर्डर शीट देखिए अब ये थोड़ा सा हार्श वर्ड है मैं तो सीधे से कह रहा हूँ लोकस पे खारिज हो गई थी उसके बाद उन्होंने रिट अपील फाइल की अब रिट अपील का ऑर्डर देख लें सर डिवीजन में Madam, now no more adjournment. It is 2:51. You may request Mr. Srivastav to come at 3:15
And if it doesn't come, then I will dismiss it in default. Yes, ma'am. है ना? तो 3:15 बजे तक के लिए डिफर कर देता हूँ. And just communicate to Mr. Srivastava that it will not be adjourned at any cost. Number 140. Sri Siddharth. The absolute stay in their matter since 2010. We have filed an application for vacating also and for hearing the matter, an alternative matter may be heard. Because We can, instead of deciding the interlocutory yes, it application. can be heard finally because they have lost the case from the tribunal law. That's right, that's right. तो बताइए ना क्या केस है सर? Yes, sorry. तो मैंने कब मना किया कि नहीं करेंगे? तो आज क्या, आज का दिन अच्छा नहीं है क्या? कौन सी कोर्ट है सर? ध्यान से बताइएगा, लाइव स्ट्रीमिंग मेरे यहाँ भी आती है. बताइए सर किस कोर्ट रूम में है? Who has to argue the matter? The last 13 में से 8 now. हैं? कोर्ट रूम नंबर 8 में होंगे. जी कौन इसमें कौन है सर? किन्होंने आर्ग्यू करना है केस को? मनीष सिद्धार्थ नहीं है सर, वो तो पूरी कोर्ट रूम में नहीं है 8 नंबर कोर्ट में. तो वो तो 8 नंबर कोर्ट रूम में ही नहीं है. आप कह रहे हो कि वो आर्ग्यू कर रहा है. अरे पूरा हाई कोर्ट ही छान मारता हूँ ना मैं. हैं? क्या चीज सर? बताओ ना कौन सी कोर्ट में है. इस कोर्ट में ना रह के दूसरी कौन सी कोर्ट में, वो बता दो, मैं भी चेक कर लेता. होंगे तो बहुत अच्छी बात है. हम कहाँ मना कर रहे हैं सर? One person cannot, it is not humanly possible for one person to remain present in all the courts. बताइए ना कहाँ पे है? क्या है इसको? नहीं सर. Once he is objecting, then I will not adjourn. नहीं, I persuade Mr. Pillai. We have filed the vacating stay long. I don't know. हमने vacating stay लगाया, फिर urgent hearing लगाया. Persuade Mr. Pillai sir. मेरे से मत बोलिएगा. In case if he objects, then I will hear it. Yeah, interim vacate करते हैं, then we can argue the matter any time. हैं? कौन सी कोर्ट में बता तो दो. पता करें. तो यार गप मार दी आपने. कब बताया था? आने से पहले. और जबकि उस कोर्ट रूम में है ही नहीं है. आप लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम भी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं यहाँ से बैठ के. अलीवाल साहब की कोर्ट में है ही नहीं है वो. चलिए 3:30 बजे लेते हैं सर. हैं? मुझे नहीं मालूम है सर. If you have an objection, then I will not adjourn it. My objection is. No. Either take objection or say that you don't have any. I have filed an application. सर पर मेरे के ऊपर क्यों नाराज हो रहे हो? एक तो आपके मतलब की बात करो, उसके ऊपर मेरे से नाराज हो रहे हो. नहीं, नाराज नहीं सर. बताओ, सीधा बोलो. आपको दोस्ती निभानी है तो दोस्ती निभाइए, दुश्मनी निभानी है दुश्मनी निभाइए, जो करना कीजिए. हैं? 3 o'clock. 3:50. 3:30 बजे. 3:30 बजे तो मैंने कहा है. Number 141. Three MP.
1253/2011 for the petitioner SHRI, Delhi Punjab for the state. On 8/1/2024 also none had appeared. Today also none appears for the petition. Thus it appears that the petition must have lost his interest in prosecuting this petition. It is accordingly dismissed for want of prosecution. Interim order dated 30/3/2011 is hereby vacated. Number 142. अभी कौन सा था? Which order? 141 था. रुक जा पहले उसका ऑर्डर. एक सेकंड. इंट्रीम ऑर्डर नहीं है. 141 में इंट्रीम ऑर्डर नहीं है. जी सर. 142, this matters under the Employees Provident Funds Act, my lord. At the outset, may I submit that this issue is already covered by the judgment of this honorable court in 2015, my lord. The issue is with respect to the imposition of damages under subheading capital B of the Employees Provident Funds Act upon a school which is having a granting aid. This been adjudicated by this honorable court is that vis-a-vis penal interest is concerned, that is required to be paid 100%. Now, vis-a-vis 14B, that is the damages words which have been used, the quantum has been reduced from 100% to 25%. The reason being that since they were granted aid school, they were receiving salary from the state government, and then it was required to be deposited. Now, there was a conflict of directions from the state government and the provident authorities. So the delay in deposit is not intentional. The basic amount of provident fund is already deposited. Interest, there is no provision for appeal. But in a nutshell, this is my submission, my lord. If my senior will... The damages was reduced to 25%. Interest, it was kept as it is. Or 12% जो था. Right? Same. This is also granted. 1783/2011, Shri Uttam Maheshwari, Counsel for Petitioner, Shrimati Swati Asim George for the state, Shri J.K. Pillai, Counsel for respondent number 2 and 3. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed, seeking the following relief. It is submitted by Counsel for Petitioner that the case in hand is duly covered by the order passed by a coordinate bench of this court in the case of Naveen Vidya Bhavan versus Union of India, reported in 2015 SCC Online MP 5004, by which it was held that the interest as payable under the EPF and MP Act cannot be reduced. However, the damages can be reduced to 25%. It is submitted that the case in the status of the petitioner is also that of an aided private school, and this case is squarely covered by the judgment passed in the case of Naveen Vidya Bhavan. It is fairly considered by Counsel for respondents number 2 and 3 that the case in hand is squarely covered by a judgment passed by the coordinate bench of this court in the case of Naveen Vidya Bhavan Sapna. Heard the learned counsel for the parties. Since both the counsels have submitted that the case in hand is duly covered by order passed by a coordinate bench of this court in the case of Naveen Vidya Bhavan Sapna, accordingly, this petition is also disposed of in the terms and conditions of the order passed in the case of Naveen Vidya Bhavan Sapra, and it is directed that the damages shall stand reduced to 25%, whereas the interest will remain intact. Without further observation, the petition is finally disposed of. Number 143. Shri Makbul है तुम. Shri Anush Singh.
2604/2011, none for the petitioner, Srimati Swati Singh George, counsel for the state, on 8/1/24, also none had appeared. Today also none appears for the petitioner. Thus it appears that the petitioner must have lost his interest in prosecuting this petition. It is accordingly dismissed for want of prosecution. 43.1. इसमें देखना किसी में इंटरम ऑर्डर ना हो. ठीक है, 43.1. Same order. Number 144. Shri Shailesh Kumar. जी सर. सीनियर रजिस्टर्ड है. सीनियर रजिस्टर्ड है. ग्वालियर केस लगा हुआ था. है सर. ग्वालियर के हुए वहाँ केस लगा हुआ था. तो ग्वालियर शिफ्ट हो गए? नहीं मैडम, शिफ्ट नहीं हुए. केस लगा हुआ था इसलिए गए. केस लगा तो कल आ जाएंगे ना. कल सुबह 7:30 बजे तो जबलपुर पहुंच जाएंगे. कल आ जाएंगे मैडम, कल आ जाएंगे. है ना. जी फोन कल लगा देते. कल मत लगाइए. हाँ, क्यों, क्या हो गया? टॉप ऑफ द लिस्ट पे लगा देते. परसों लगा. परसों क्यों? 7:20 पे ट्रेन आ जाती है. नहीं मालूम. नहीं आ तो जाती है. आ जाती है ना. और आजकल आ जाती है. आजकल फॉग नहीं है ना. और टॉप ऑफ द लिस्ट जो है 3:30 बजे से लिए जाते, उससे पहले नहीं लिए जाते. ठीक है, अच्छी बात है. 5402/2015 at the request of counsel for petitioner, list tomorrow at the top of the list. It is made clear that no further adjournment shall be granted. Case 3720. 54 Sir, case 3720. 3720. 502/15. Just 3720/2011. Number 145. Shri R.K. Agarwal. Against CGIT. ये क्या वर्कमैन की तरफ से है कि एम्प्लॉयर की तरफ से है? वो उनका रिजेक्ट हो गया है. 4265/2011, none for the petitioner, she is so for the respondents. On 8/1/2024 also none had appeared. Thus it appears that the petitioner must have lost his interest in prosecuting this petition. It is accordingly dismissed for want of prosecution. Number 146. Shri Dilip Pandey. (4983/2011), none. Srimati Swati Singh George. The case is adjourned. List on 18th under the heading Direction Matters. Number 147. Shri Sharad Gupta. Jesus. By this petition, the petitioner is seeking the proper inquiry against the respondent number 3, who was posted as Tahsildar. क्या इंक्वायरी चाहिए सर? To my original sale deed has been lost by the then Tahsildar. तो उसमें क्या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चाहते हो? And still, there are not. I am not. अरे मेरे भाई, आप चाहते क्या हो? In fact, there has to be some administrative responsibility. She has. कोई बात नहीं सर, मैं सब मान रहा हूँ, पर आप चाहते क्या हो? डिपार्टमेंट. The reply says that I have lost. It must be I have lost. That is the reply. मेरे भाई, क्या collector found that. बहुत अच्छी बात है. चाहते क्या हो? डिपार्टमेंटल एक्शन. My lord, that. How the petition is maintainable?
My submission is that, my lord, Sir, sir, please answer my query. How a writ petition in the service matter of a third person is maintainable? my lord, And that too by a stranger. well, because of the irresponsible behavior. अरे सर आप जाओ टॉर्च में चले जाओ ना सिविल सूट में कौन मना कर रहा है आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर रेमेडीलेस if you have lost if you suffered any loss which can be quantified in the form of money recover those damages. Because 5-6 persons have lost their original. No problem, sir. No problem. No problem. My lord, How a writ petition in the service matter of an employee is maintainable at the behest of the stranger. That is all. My lord, salary would be with the how a writ petition is maintainable? Please answer my query, sir. because under the jurisdiction of this honorable court, Arey, it may be commanded. We can, because sir, we can do everything. This is the opinion of the bar, but our opinion is not like that, sir. We have to do within our legal framework. This is what our concept is. And what is the judgment by the Supreme Court with regard to the service matters? Whether a writ petition filed by the stranger regarding the service matter of the employee is maintainable or not, or whether it should be discouraged or not. I'm not prepared on that one. If I can't be time, I'll. No, sir. There is no question. Because शरद गुप्ता जी जिस दिन कहेंगे कि वो उनको नहीं मालूम है कानून. Because the state reply is also very strict. अरे जिस दिन शरद गुप्ता जी ये वाकई कहेंगे सर मुझे ये कानून नहीं, क्योंकि शरद जी एक चीज बताऊं, आप जिस तरीके से क्वेश्चन को अवॉइड कर रहे थे हम समझ गए थे कि आपको मालूम है. If in that case, I may be granted liberty to take the other course because so many persons are affected. I'm not saying that you are remediless. I'm not saying. But since you have prayed for the departmental action only, then how that question, that petition is maintainable? You can seek a damages. ये कर दो, वो कर दो, जो करना कर दो. 87/2012. Shri Sharad Gupta, Srimati Swati Singh George, also for the state. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. It is submitted by counsel for petitioner that the respondent number 4. किसने misplace की थी sir? Respondent number 3. Number 3. Man. The respondent number 3, while she was posted as sub-divisional officer Amaria district, Amaria has. She was Tahsildar Tendukhela. While the respondent number 3 was posted at Tehsildar Tendukhela district, Damo. She had lost multiple sale dates. Original sale dates. Or multiple original sale dates, which has caused irreparable loss to the petitioner and the other persons. Therefore, the department must take a departmental action against the respondent number 3. Per contra, it is the stand of the state government that the sale dates were not misplaced by the respondent number 3, be that whatever it may be. The crux of the matter is as to whether a writ petition with regard to the service matter of an employee is maintainable at the behest of a stranger or not. The Supreme Court in the case of Gurpal versus State of Punjab reported in 2005, volume so and so, CC has held as under. Since the writ petition at the behest of a stranger in the service matter of an employee is not maintainable, therefore, with liberty to the petitioner to obey any other remedy available to him, this petition is dismissed on the ground of maintainability. It is directed that in case, it is clarified that in case, if any legal remedy is taken by the petitioner, then dismissal of this petition will not come his way because the petition has been dismissed only on the ground of maintainability, and this court has not considered the merits of demerits of the case. Point of limitation. Yes, sir. Furthermore, if
If delay can be, if there is some limitation, and that limitation can be condoned, then the authority below shall consider that the petitioner was prosecuting his cause before this court, which has been dismissed on the ground of maintainability. At the aforesaid observation, the petition is dismissed as not meant. ऊपर कहीं आ गया उसको हटा दीजिएगा, डबल हो जाएगा। नंबर 148 श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव। 126/2012, none. Srimati Swati St. George. On 8/1/24, also none had appeared for the petitioner. Therefore, today also none appears for the petitioner. Therefore, it appears that the petitioner must have lost his interest in prosecuting this petition. It is accordingly dismissed for want of prosecution. Number 149 additional itself Shri Arvind Pathak. 509/2012, same order. Number 42 3:15 बजे था ना जी सर। हाँ अभी ले लो। अब क्या 3:12 तो हो ही गए, 3 मिनट तो है। सीरियल नंबर 139 सर एक 2:15 बजे 3:15 बजे के लिए रखा था। श्री गिरीश श्रीवास्तव। जी मैडम। ऑन द वे, फिर ठीक है, कोई बात ठीक है। ऊपर शुक्ला जी का ले लो तब तक। वो 3:30 बजेगा ना, 3:30 बज गए क्या? 3:15 और 3:12 में ज्यादा अंतर नहीं था। सीरियल नंबर 42 जी शुक्ला सर। Petitioner have changed the order between the P1 by which the extension of the benefit of monthly COVID-19 seems that has been refused by the state now. The petitioner number 1 is the wife and 2 and 3 are the sons. डेथ सर्टिफिकेट वगैरह कैसा है सर, वो कहाँ है? So they have refused it only on the ground that the cause of death is given by the doctors due to brain hemorrhage. ब्रेन हमें इसको रिपोर्ट किया, यही इनका रिटर्न है। तो सर अब हम उस मेडिकल ओपिनियन को कैसे कर दें सर? और ये फोटो में भी क्या आप ताली बजा रहे थे कि सड़क पे? नहीं साहब, मैं ही तो मेन कंट्रोलर था सोशल डिस्टेंसिंग में। ताली बजवाने में आप ही थे? नहीं, दिस सेजवाल ही वाज पोस्टेड एज एसडीओपी हैं? ये पूरी टीम ही थी इनकी, ये सब कुछ कर रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग में। और नहीं तो ये पेज नंबर 26 पे क्या है भाई? लोगों ने छतों पर चढ़कर बजाई ताली। पेज नंबर 24 साहब थोड़ा सा देखेंगे तो एसपी साहब ने लिखा के दिया था, इसमें डिटेल उन्होंने सर्टिफिकेट से किया है। मेरे भाई एक सेकंड पेज नंबर 24 में जी, ये आपका एसपी खुद कह रहा है कि वो ब्रेन हेमरेज से हुआ। उनको भी ड्यूटी थी, उसी दौरान इनको अटैक आया। Previously they treated at the district hospital at Tikamgarh when he was not in control, then referred to Jhansi and then Bansal hospital. क्या था, क्या इनको बीमारी क्या थी? इनकी काज आपसे डॉक्टर ने कहा कि क्या बीपी थे क्या? जी। ब्लड प्रेशर था क्या? नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं कहा। तो क्या था? ब्रेन हेमरेज कहा। अरे तो बीपी का बीमारी रही होगी तभी तो ब्रेन हेमरेज हुआ। बीपी की रिपोर्ट नहीं है, बीपी बारे में कुछ नहीं कहा है। बीपी के बारे में कुछ नहीं कहा, इतना ही कहा कि ड्यू टू ब्रेन हेमरेज we could not covered under the scheme, loss of life में नहीं मान रहे इसको। बाकी अदर लोगों को सिमिलर। अरे भाई वो तो कोविड से अगर नहीं हुई तो फिर कैसा करेंगे?
जब तक मैं ये फाइंडिंग ना दूं कि इनका कोविड से डेथ हुई है, मैं हाउ कैन आई And now his last research भी इनकी जो हुई वो स्टाफ में ही हुई। सब कुछ ठीक है सर। आप ये बताइए कि ये इनका कहना था कि ब्रेन हेमरेज से हुआ है। दो ऑप्शंस हैं आपके पास। इस पॉलिसी के हिसाब से ब्रेन हेमरेज भी इंक्लूडेड है और या फिर नहीं साहब ये कोविड से हुआ है। तो पहला ऑप्शन एक्सरसाइज कीजिए। ब्रेन हेमरेज तो उसी दौरान आया, ड्यूटी के दौरान। मैंने ब्रेन हेमरेज तो यार कभी भी आ जाता है। ब्रेन हेमरेज तो कभी भी आ जाता है। अगर हाई बीपी है तो आपके माइंड की ब्लड वेसल्स जब वो बस्ट होती हैं तो वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। Prior to nothing was. Prior to the entire skin start. क्या कहना चाह रहे हो सर? इससे पहले उनको बीपी की कभी बीमारी नहीं थी या बीपी का इलाज करवा रहे थे? क्या रहे थे सर? ये तो इस तरीके का कुछ नहीं आया। आपकी पिटीशन में है कि इनको कभी भी बीपी का बीमारी नहीं थी? इसके संबंध में तो नहीं है। तो अगर ये he was already a patient, if he was already a patient of high blood pressure, the person who returned from duty, एक तो आशा कार्यकर्ता थे और भी इवन इन दी होम डिपार्टमेंट उन सबको बेनिफिट दिया। अरे भाई आपको कौन, मैं भी आपको बेनिफिट देना चाहता हूँ पर मैं लिखूंगा ना कुछ। मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे ऐसा कुछ बताएं जिससे कि मैं आपके पक्ष में लिख पाऊँ, क्योंकि उस समय कोविड के समय पे बाहर निकलना, लोगों को समझाना, लोगों को कंट्रोल करना भी एक हिम्मत वाली बात थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं मिलना चाहिए, पर क्यों मिलना चाहिए मुझे भी तो कुछ लिखना पड़ेगा ना। मैं तो ये नहीं कह सकता कि साहब चूंकि ये कोविड के समय इनकी मृत्यु हुई इसलिए इनको कोविड की मान लिया जाए। या इसलिए मैंने कहा या तो आप मेरे को स्कीम में बताइए कि कोई अपॉइंटमेंट तो पहले का था सर, ये कोविड संपर्क इनको मैंने अपॉइंटमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ यार। ये तो पहले से थी हैं? ये इनकी ये। अरे यार क्या बोल क्या रहा हूँ, सुन क्या रहे हो, बता क्या रहे हो? आपको बीपी का बीमारी पहले से थी क्या? पूछना पड़ेगा। हमें क्या मालूम। ये था कोविड के कारण जीवन की हानि, कोविड से संबंधित सेवा के दौरान दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु, कोविड-19 के कारण जीवन की हानि के संबंध में पॉजिटिव मेडिकल परीक्षण को प्रमाणित करने वाली प्रयोगशाला रिपोर्ट आवश्यक है। हालांकि कोविड-19 संबंधी सेवा के दौरान दुर्घटना में आकस्मिक होने पर इसकी आवश्यकता नहीं है। या तो आप बता दीजिए इनकी कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट आ चुकी थी, बस हम उसी में अलाउ कर देंगे। कोविड का तो टेस्ट ही नहीं किया है। तो जब टेस्ट हुआ नहीं, कोविड का कुछ सिम्टम्स मिले नहीं, मैं कैसे कह दूं कि साहब ये स्कीम से कवर्ड है? इतना ही पूछ रहा हूँ आपसे। मुझे भी तो कुछ लिखना पड़ेगा ना सर। अब आप ये देखिए कि अगर मैं अपनी जेब से 10 रुपए, 10,000 जो भी बांटना चाहूँ, कोई मेरे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। और अगर हम आपकी जेब से पैसे निकाल के बांटना चाहें तो आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक? तो हमारी स्थिति तो वही है कि अगर हमको ये कहना है कि आप एंटाइटल्ड हैं, मुझे रीजंस देने पड़ेंगे। कोविड रिलेटेड डिसीजेस से उनकी डेथ होनी चाहिए थी, ये बेसिकली है। तो अगर आपके पास कोविड का कोई रिपोर्ट हो, कुछ भी हो जिससे ये हम कोरिलेट कर पाए कि कोविड से हो सकता था। बीपी वेंट है इंटायर इनका जो ट्रीटमेंट हुआ था दैट इज इन द डिपार्टमेंट। वो तो कह रहे हैं ना कि हाई ब्लड प्रेशर कोई जा नहीं पाए, वही ड्यूटी के दौरान उसको अटैक आया और ले जाके हॉस्पिटल में डाल दिया। हॉस्पिटल से फिर झांसी रेफर किया एंड देन भोपाल। और उस समय तो स्पीड में था कोविड, ये तो परियल भी नहीं जा पाए। और इसका जो लास्ट सिस्टम भी किया है पेज नंबर 36 में T5 में, वो भी स्क्रीनशॉट हमने पेश किया सर इसका। यार वो सारे प्रोटोकॉल्स अलग थे। जी जी
आप तो हमको ये बताओ कि मैं कौन से दस्तावेज का फायदा उठा के या सहारा लेके आपको फायदा दिला सकता हूँ, क्योंकि कोविड के दौरान नौकरी जिस पुलिस वाले ने की है उसको भी सैल्यूट है। जो आज परिवार के साथ हैं उनके परिवार को सैल्यूट है, जो नहीं है उनके परिवार के साथ साथ उनको भी है। हम लोग को मालूम है किस तरीके से इन लोगों ने नौकरियां की हैं, घरों में वापस नहीं आते थे। नहीं ये नहीं गए। अरे सुन तो लो, कोविड के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, इतना ही मालूम था कि फैलता है, किसी से भी नजदीक आ जाने से फैल जाता है और फिर भगवान के दर्शन होने लग बहुत ज्यादा संभावना पड़ जाती है। पुलिस वाले जब से कोविड आया तब से अपने घर गए नहीं परिवार। शुक्ला साहब, पुलिस वाले किस तरीके से उन्होंने नौकरियां की हैं, हमने देखा है कि जब वो घर आते थे तो बाहर ही नहाते थे। घर वाले बाहर दरवाजे के बाहर बाउंड्री वॉल के दरवाजे के बाहर खाना रख देते थे। उनके बच्चे दूर से ही अपने पिता को निहार लेते थे और पिता जो है बाहर से बाहर खाना खा के चला जाता था। इस तरीके से पुलिस वालों ने नौकरियां की हैं सर। तो वो तो इसलिए आपको मिलना चाहिए, इसके बारे में जरा सा भी हम संशय अपने मन में नहीं रखेंगे। मिलना चाहिए, परंतु मुझे लिखने के लिए कुछ तो चाहिए। P19 वाला ये 5/6/2020 को लेफ्टिनेंट टीकमगढ़ इन्होंने एक लेटर और लिखा था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में पूरा डिटेल देते हुए, टीकमगढ़ अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी पुलिस टीकमगढ़ के पद पर पदस्थ रहे श्री सुरेश पेज नंबर टीकमगढ़ की ड्यूटी। पेज नंबर ये पेज नंबर ये एक टाइप 5 पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 41 की 41 पेज नंबर 41 की टाइप विषय ये विषयांतर्गत ये मैं संदर्भ के नीचे पढ़ रहा हूँ। विषयांतर्गत लेखा कि जब टीकमगढ़ अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी पुलिस टीकमगढ़ के पद पर पदस्थ रहे श्री सुरेश सेजवाग अनुविभागीय अधिकारी पुलिस टीकमगढ़ की ड्यूटी कोरोना संक्रमण की महामारी को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 22/3/2020 से लगातार लगाई जा रही थी। जो सर इसमें क्या दिखाना चाहते हो 41 से कि ये इन्होंने ये रिकमेंड किया। अरे रिकमेंड किया ना, मैं कब मना कर रहा हूँ? पॉलिसी की है मेरे भाई, यही सज्जन जो है जो रिकमेंड कर रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि ब्रेन एवरेज से डेथ हुई है। वो तो आज पर डॉक्टर तो डॉक्टर ही तो है, या तो एसपी साहब अपनी जेब से दे दे। जैसे मैंने कहा था आपसे, अभी मैंने आपसे कहा था मुझे अपने अपने जेब से देना होगा, तो कोई मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। हम लोग राह चलते कभी कभी किसी भिखारी पे तरस आके दे देते हैं ना, तो क्या कोई प्रश्न चिन्ह लगा सकता है कि आपने क्यों दिया? और अगर हम आपकी जेब में हाथ डाल के दें तो शुक्ला जी कहेंगे कि आप कौन होते हैं मेरी जेब में से हाथ डाल के निकालने वाले? आप अच्छा काम करना चाहते हैं अपनी जेब से करिए। यही एसपी जब लिखता है कि साहब इनकी ब्रेन हेमरेज से डेथ हुई है, तो ये कहता है, शासन से कहता है कि आप दे दो, एसपी साहब खुद दे दे। मुझे तो लिखना पड़ेगा ना यार कि किस कारण से आप, या तो वो स्कीम जो थी उसमें से लेके आइए, कैसे तो हम ला सकते हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं सर कि पुलिस वालों ने जिस तरीके से कोविड में नौकरी की है, आप लोगों को शायद उतना आइडिया नहीं है जितना आइडिया हम लोगों को। मैं जब आपको बता रहा था ना कि लोग कैसे खाना खाते थे, हमारे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते। आपने वो दिन देखे नहीं है सर? यही है कि हम लोगों को मालूम है शुक्ला साहब, हम लोगों को मालूम है। आप किसी भी एसपी से पूछ लीजिएगा, वो बताएगा सर कि मैं आउट हाउस में रहता था, घर नहीं घुसता था, अपने ही घर के आउट हाउस में रहते थे वो। आप किसी भी सिपाही से पूछ लीजिएगा या जो फील्ड पे काम करते थे उनसे पूछ लीजिएगा, वो सब बताएंगे कि घर के बाहर, बाउंड्री वॉल के बाहर उनको खाना मिलता था रखा हुआ। क्यों? क्योंकि इतनी तेजी से फैल रहा था, हर एक को अगर दुनिया की चिंता थी तो अपने परिवार की भी चिंता थी। हमने वो एक्चुअल फोटोग्राफ्स भी हमें दिखाई गई जिसमें छोटे छोटे बच्चे खिड़कियों के अंदर से अपने बाप को बाहर निहार रहे थे।
सब पुलिस वालों ने जो काम किया है ड्यूरिंग कोविड, इट इज अनमैचेबल, शायद कोई और कर नहीं सकता। आप तो मुझे ये बताइए कि मैं कैसे इनको दिला सकता हूं। आप तो मुझे बस इतना बताओ। आपको आज और प्रिपरेशन का समय चाहिए, कर लीजिए, कल बहस कर दीजिए, कोई इशू नहीं, बहुत जल्दी नहीं। परंतु आप कम से कम अपने पक्षकार की मदद के लिए लीगल फ्रेमवर्क में जहां तक भी ला सकते हैं लेके आइए, बाकी फिर हम देख लेंगे कहां तक लेके जा रहा है ना। कुछ तो बताइए हमको। 9/7/2021 श्री शुक्ला, श्री पाराशर, द रिक्वेस्ट ऑफ श्री शुक्ला, लिस्ट टुमारो एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। जी श्रीवास्तव जी, बड़े कंफर्टेबल दिख रहे हैं सर, नींद भी आ रही थी आपको? नहीं सर, मैंने आपसे निवेदन किया था अगर आप याद करेंगे मतलब 11 तारीख तो आपने बोला था कि आप 11 तारीख को लगने बता देना। यस, याद आ गया। Anyway, sir, मैं नहीं अब याद आ गया सर। once I had given my words, so then I will keep it. मैंने जूनियर को ही बोला था कि सर को याद करो, दिला दो। नहीं दिलाया उन्होंने, नहीं दिलाया याद। मैंने बोला था सर। Anyhow, I am sorry sir. Yes, मुझे याद है आपने कहा था। नहीं सर, कोई कंपल्शन नहीं है आज। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। Once I had सर आपने उस दिन बोला था, मैंने कहा था 11 को लग जाने दीजिए, अगर होगा तो मुझे बता दीजिएगा, हम बढ़ा देंगे। राइट, याद आ गया। आपके जूनियर ने नहीं बताया मेरे को, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव कॉल्ड यू। अरे आप उनके पीछे मत डांटने लग जाए सर। शी इज टू यंग टू स्पीक, शी इज टू यंग टू स्पीक। सर उन्होंने जितना भी रिक्वेस्ट की है वो एज पर हर लेंथ ऑफ प्रैक्टिस दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। डोंट वरी, बट यस आई हैड गिवन यू द वर्ड्स। Next, 18th, 9/7/2021. So sorry for inconvenience, but I did not recollect. बस इतनी मेरी गलती। मुझे भी फोन कर दिया होता तो मैं बता देता। श्री गिरी श्रीवास्तव, counsel for the petitioner, श्री परिहार, दिलीप परिहार, counsel for state, श्री विपिन यादव, counsel for respondent number 5. At the request of counsel for parties, list on 18th of March 2020. Or under the heading Direction Matters. Mr. Dutt, there was a serious objection by Mr. Number 140. We have filed in fact. I don't know. Your junior had made a request for adjournment. मैंने कहा कि साहब, in case if it is objected by the respondent, then I will not adjourn. So he had a very serious objection. इन्होंने फिर से पूछा, मैंने कहा भाई हमारे क्या मार्च का महीना रिकवरी का महीना है, अगर मैं अभी अपना कंसेशन रिकॉर्ड कराता हूँ तो it will be because it will not be good on my part because we have filed urgent hearing application. आपको क्या लग रहा है लाइव टेलीकास्ट चल रहा है? Everybody is hearing and everybody is watching. I am ready to argue the matter either way. मुझे नहीं मालूम है, आप बताओ क्या करना है। Mr. Dutt has come. If he is ready, I am ready to hear. Yes. Mr. Dutt has come. He is not ready, and if you are objecting to his adjournment, then still I will hear. Can we take up 18th? Sir, वो है ना sir. Next week. But my lord, I mentioned that if on 18th it is. I'll try to get it settled, sir. Just let me go through this matter. The stay was granted somewhere in the year. But they'll have to pay, but this is the principal amount. Let me get back to them. I'll get back to them. I'll try to see the requirement and make a statement. I'll make a statement on the next requirement issue. 9/7/2021. Shri Manish Dutt, Senior Advocate with Shri Shubham Mishra, Counsel for Petitioner. अब मिश्रा जी कहेंगे मैं खड़ा हुआ था तो WP 18. Sorry. 18558. 18558. /10. अब मिश्रा जी कहेंगे मैं खड़ा हुआ था तो जेके पिल्लई साहब मुझे जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं. My senior was saying that let me talk to the establishment if they are ready because they have to pay me not. मिश्रा जी की बात कर रहा हूँ मैं, सीनियर साहब की बात नहीं कर रहा हूँ. अगर ये पैसा दे देंगे तो there is no dispute.
फिर तो वो dispute फिर तो कोई dispute ही नहीं बचा। क्योंकि फिर तो कोई कहना है dispute कि नहीं आउट एम्प्लॉय है, मैंने कहा आउटसोर्स को भी देना पड़ेगा इफ दे कैन वो प्रूव। सब कुछ नहीं है, मुझे अभी मैरिट्स पे नहीं सोचना, मैंने सिर्फ इतना ही कहा है जो फाइनल हियरिंग के केसेस हैं which are coming up after 10 years 14 years, I will adjourn only if it is not objected by the opposite counsel. If there is an objection, then I will not adjourn the matters. First of all, it is against my conscience that even after 14 long years we are not ready to hear it. I'm not saying that you are not ready to argue it. I'm not ready to hear it, it is against my conscience. There is J.K. Pillai, counsel for respondent. It is submitted by counsel for the petitioner that he may be granted a week's time to seek instructions in the matter. Although the prayer for adjournment was vehemently opposed by counsel for the respondent, but ultimately he agreed that. एग्रीमेंट लिखा है क्योंकि उन्होंने शॉर्ट ट्रेड मांगा 7 दिन का, रीजनेबल है इसलिए। No, I will also not बिकॉज throw you under difficulty. 12 की 13 की Was vehemently opposed by counsel for the state, but it is submitted that it was vehemently opposed by the counsel for the respondent, but it is submitted by Shri J.K. Pillai that in case if the case is adjourned, then it should be made clear that on the next date of hearing there shall not be any adjournment at any cost. Considering the submissions made by counsel for the parties, the case is adjourned. List on 18th of March 2024. Board में it is made clear that the case shall not be adjourned at any cost. यार मैं गाड़ी कंटिन्यू नेक्स्ट I shall continue till next date of listing only. Number 43, Sri Jafar Khan. Your Lordship, I am on the behalf of the respondents. Uh-huh. There is unavailability of the arguing counsel, that is Senior Advocate Ajay Mishra. Pardon, sir? Sir, the arguing counsel is Senior Advocate Ajay Mishra, sir, and I have been instructed to request this honorable court for the adjournment till the next week. So, and what about the petitioner? Mr. Ajay Mishra is appearing for whom? Sir, respondent on the behalf For of respondent. None 1236 of 2021, none for the petitioner. Shri Shashank Mishra. Your Lordship. Shashank Mishra, counsel for the respondent. So 2021 से this miscellaneous petition under Article 227 of Constitution of India has been filed against the order dated 13/2/2021 passed by 7th Additional Session Judge Sagar in miscellaneous civil appeal number 17 of 2020, which the order dated 17/7/2020 passed by trial court in RCS number 93-A of 2020 was set aside, and a temporary injunction has been granted in favor of the respondent. This petition was filed on 17/3/2021, and approximately 3 years have passed. None appears for the petitioner. There is no interim order in the present case. And it appears that a temporary injunction order is enforced against the petitioner. So what is the stage of the trial? Idea? The counsel for the respondent submits that he has no idea about the stage of trial. When the suit was filed, 43. So 8/6/2020. The civil suit was filed on just a minute.
was filed in the month of June 2020. Therefore, it must have reached to an advanced stage. Under these circumstances, this court is of considered opinion that no useful purpose would be served to decide to adjourn the matter for decision on merits. Since temporary injunction order is already in operation for the last approximately 3 years, accordingly, this petition is disposed of with the direction that without disturbing the calendar, the trial court shall make an endeavor to decide the civil suit within a period of 6 months from the date of production of certified copy of this order. With a foresight observation, the petition is finally disposed of. Honorable, serial number 44. Shri Sanjay Mishra. कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं सर? ये तो एमपीज हैं, इनमें क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स? Order will be challenged before the SDU with respect to Mr. Shodhan Panji that has not been filed even before the. Let's before another bench. क्या भाई साहब, इस आदमी के कम से कम 25 मुकदमे मेरे पास थे। भाई साहब, I had appeared for him for this your petition on at least on 25 to 26 occasions. He is from Itarsi. इनके खिलाफ कोई इनकम टैक्स के कोई नोटिस आए थे 148 के? तो फिर now I have received the file and I have gone through the file. कोई प्रॉब्लम नहीं ना। That document not been able. If I have appeared for this person, then again why you are insisting here unnecessarily? I don't want to hear him. I was his counsel. Serial number 45. Shri PC Paliwan. I play for 2 weeks time. Joined her. At the request of counsel for petitioner, the case is the counsel for the petitioner prays for and is granted 3 weeks time to file agenda list after 3 weeks. Chalo, point 1 wait. List along with first one. Number 46. Shri J.K. Jain. है सर, I prefer the next week matter. क्यों सर? आपने तो हम 10 नोटिस सर्विस करवाए थे। Counsel is not available. अरे कोई बात नहीं सर, है क्या केस? What is the matter about, sir? At the request of counsel for petition. Pardon. Sir, you are not well. This is what it says. तौर पे हुआ है दूसरे कोर्ट से सर। List after 8 weeks without any liberty. Sir, No, sir, sorry. If your colleagues are out and out to make false statements, yes. Whatever it may be, sir. Just now your colleague had made a statement that you are not well. Number 47. क्या बोला? Not available. हाँ, not well करने मैं दूसरे ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं सर। जी, हो गया। जी सर। I'm making a small prayer, Lordship. This matter may be. Except, madam, adjournment is a very big prayer, so except to adjournment, you can make whatever small prayers you want. I apologize, Your Lordship. I'm making a big. No, apology is also a big prayer. Your Lordship, I'm kindly praying that the matter may be taken up tomorrow, Your Lordship. Why? Your Lordship, senior counsel has to argue the matter. He's out. I have not restrained anybody. Hmm? Your Lordship. जी गुलाटी जी, आपके क्या विचार हैं? Tomorrow, I would not object. You will not object. He's requesting for tomorrow. Beyond that,
Tomorrow election. He's out of town today, otherwise. 2272/2021, Shri Siddharth Gulati, counsel for petitioner. MS Aditi Srivastava. Aditi Srivastava. Srivastava, counsel for proxy counsel on behalf of the respondent. It is submitted by MS Srivastava that the arguing counsel is is not in the town and prays for a short adjournment. The prayer for adjournment is not opposed by counsel for petitioner. Accordingly, as prayed, let's tomorrow at the top of the list. Number 48. फिर परिमल चतुर्वेदी देखना उसके साथ .1 भी है, तो वो भी साथ में कर दें। जी सर। MP 2413/2021, none for the petitioner. On 1/3/2024, a statement was made that the counsel for the petitioner is practicing at Mumbai, and therefore the case should be listed in the last week of April 24. This court had made specifically clear that since the High Court is functioning in hybrid mode, therefore, an outstationed counsel can also join through video conferencing. Today, none appears for the petitioner. Therefore, it is clear that the petitioner must have lost his interest in prosecuting this petition. It is accordingly dismissed for want of prosecution. Serial number 49. Shri Ajay Kumar Dwivedi. जी सर। प्रीवियस ऑर्डर डेटेड 30/12/23 को मैंने सर 30/12/23 का जो ऑर्डर सीट है मेरा, उसमें मैं अभी ट्रांसलेटेड कॉपी फाइल नहीं कर पाया हूँ। 30/11, अरे हमें नहीं चाहिए सर जी, हमें नहीं चाहिए ट्रांसलेटेड कॉपी। आप तो सीधी सी भेज करते हो हिंदी में। पिटिशनर ने एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 178 178 पार्टीशन जी पार्टीशन जी। LRC की फाइल जो कि हमारे फेवर में ऑर्डर हुआ था, जिसके बाद 2 साल 6 माह बाद रिस्पोंडेंट नंबर 5 के द्वारा अपील प्रस्तुत की गई, जो कि अपील उनकी अलाउ की गई, जबकि हमारा ऑब्जेक्शन था कि ये प्रॉपर लिमिटेशन एप्लीकेशन में फैक्ट और ग्राउंड नहीं ली है और 2 साल 6 महीने बाद अपील फाइल की गई है। अच्छा जी, जो कि अलाउ हुई। इसके बाद कलेक्टर के यहाँ उसी अपील को चैलेंज किया गया, जो तो मतलब सेक्शन 5 के खिलाफ है ये? जी, अच्छी बात है। उनका सेक्शन 5 की एप्लीकेशन कौन सी है सर? P4 पेज नंबर 23। अपीलांट की जानकारी के बगैर करा लिया गया है। आप ये बताइए कि इनको पार्टी बनाया था आपने और इनको नोटिस हुआ था क्या 178 में? जी हाँ, P1 है पेज नंबर 16, उसमें 5 नंबर पक्षकार थे मैडम। हमने 178 110 के एप्लीकेशन P1 में तो इनका आदेश दिखाइए ना, इनको नोटिस हुआ था, कहाँ है? P1 तो आपका आवेदन है। जी मैडम। P2 पढ़ देता हूँ मैडम। 19 मैडम। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक हरिलाल राम पियारे कौशल प्रसाद, सभी निवासी ग्राम बराही, तहसील व्यवहारी, जिला। सर ये जो आदेश है P2 जी, इसमें कहाँ लिखा है कि इनको नोटिस हो गए हैं और ये नहीं आए हैं और इनको हम एक्सपार्टी कर रहे हैं?
Page 40 has already considered this one. Yes, all of the entire record. हम्म Second paragraph. कुछ भी नहीं है सर। आप पेज नंबर 20 इसलिए कहते हैं कि रेवेन्यू अथॉरिटीज में ये सब गड़बड़ियां चल रही हैं, बिना नोटिस के बंटवारे कर दिए उठा के। पेज नंबर 21 सेकंड पैरा। हाँ, प्रकरण पंजीबद्ध कर इश्तहार का प्रकाशन कराया गया, कोई आपत्ति पेश नहीं। हल्का पटवारी से कुंडली मंगाई गई है, हल्का पटवारी द्वारा। देखिए प्रकाशन किसमें कराया सर, कौन से न्यूज़पेपर में? और जब किसी व्यक्ति को पक्षकार बाय नेम बनाया गया था तो उसको नोटिस क्यों नहीं जारी हुआ? सबमिट इसमें जो पार्टी तो बनाया बट एड्रेस जो इसका मेंशन किया वो वही गलत एड्रेस मेंशन किया इसमें। कुछ नहीं, सेक्शन 5 की एप्लीकेशन अभी डिसाइड हुई है। 2852/2021 this petition under Article 227 of Constitution of India has been filed against the order dated 22/7/2021 passed by Additional Commissioner Jabalpur Division Jabalpur in case number 195/appeal/2019-20 by which the revision filed by the petitioner against the एक सेकंड has been filed against the order dated 10/7/2019 passed by Sub-Divisional Officer Bihari District Shadow in file number 73/appeal/8-27/2017-18 and order dated 25/3/2021 passed by Additional Collector Shadow District Shadow in case number 8/revision/2019-20 by which the revision filed by the petitioner against the order dated 10/7/2019 passed by SDO Bihari District Shadow has been dismissed. It is the case of the petitioner that the petitioners filed an application under section 178 of MPLR Code for partition of the property. The Tehsildar by order dated 17/7/2015 allowed the application. In case number 85/8-27/14-15. After about 2 years and 6 months, an appeal was filed along with an application under Section 5 of Limitation Act. By the impugn order dated 10/7/2019 passed by SDO Bihari District Shadow, the application filed under Section 5 of Limitation Act has been allowed. Against the said order, the petitioner preferred a revision which too has been dismissed by Additional Collector Schedule Division Schedule by order dated 25/3/2021. Challenging the orders passed by the authorities below, it is submitted by counsel for the petitioner that partition was carried out after due publication of notice, and therefore it is incorrect to say that the respondents were not the private respondents were not noticed. However, the counsel for the respondents number 5 to only 5 kilos. Hmm? I am appealing only for respondent R5 kilos. For respondent number 5, that even the incorrect address was given in the application filed under section 178 of MPLR Code, and no notice was issued to the private respondents 5 to 9. SHRI Dilip Parihar, by referring to the observations made by the additional collector, submitted that even the additional collector district shadow has observed that on perusal of the record of the court of Tehsildar, it was found that there is no order of issuance of notice to the private respondents, and even there is no document to show that they were ever served. Consider the submissions made by counsel for the parties. By the impugn order, the application filed by the respondent number 5 to 9 under section 5 of Limitation Act has been allowed. Both the authorities below have come to know that were not served,
and even no notices were issued to them. Under these circumstances, this court is of considered opinion that the authorities below did not commit any mistake by condoning the delay in filing an appeal. Accordingly, no case is made out warranting interference. The petition fails and is thereby dismissed. See, my humble request, my lord, I am just 1 minute late, lordship. 48 I am. क्या हो गया 48 में जी मैम। बताइए ना क्या है आर्ग्यू कीजिए ना मैडम सीनियर आर सर प्लीज जी मैडम मैं कर दूँ आपको पुराना ऑर्डर मालूम है जी बस तो या इसको रेस्टोर करा लीजिए जब सीनियर आएंगे तब देख लीजिएगा जी बताएं petitioner and respondent are real brothers. Their father, Mr. Varendra Kumar Majumdar, have land in 2 different villages or cities. Villages, Lord. My lord. My lord, learned additional commissioner passed order, which is annexure P7, Lord. It start from the page number 34. May I read, Lord? हाँ May I read? पढ़िए ना Lord, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण दूसरे पैरस पढ़ रहा हूँ तीसरे पैरस में लास्ट में 22/7/21 के ऑर्डर प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उत्तरवादी अमल कुमार निर्मल कुमार तथा अमल कुमार सभी वल्द वाजेंद्र कुमार द्वारा न्यायालय तहसीलदार जुन्नारदेव के समक्ष आवेदन अंतर्गत धारा 178 MP LRC 1959 जिसे आगे संहिता कहा जाएगा प्रस्तुत किया। दिनांक 10/4/15 को प्रस्तुत इस आवेदन में वारेंद्र कुमार की संतानों जिनमें आवेदक तथा अनावेदक परिमल कुमार शामिल है के मध्य प्रश्नाधीन भूमि के बंटवारे का निवेदन किया गया। न्यायालय नायब तहसीलदार दमुआ के उक्त आवेदन पत्र पर प्रकरण क्रमांक 20A 2027-2014-15 दर्ज किया जाकर की गई जिसमें अंतिम आदेश दिनांक 14/8/17 पारित किया जाकर फर्द प्रतिवेदन तथा फर्द नक्शा क्रमशः प्रदर्श P1 एवं P2 अनुसार उभय पक्षों के मध्य प्रश्नाधीन भूमि का बंटवारा किया गया। अब मतलब इसमें ये जो आवेदन क्रमांक 20A27 है इसके अलावा और एक आवेदन क्रमांक था लॉर्डशिप जिसका इन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया एडिशनल कमिश्नर किया 21A/27 2014-15 प्रश्नाधीन भूमि का बंटवारा किया गया। अपीलार्थी अनावेदक परिमल कुमार ने एक आदेश की अपील अनुविभागीय अधिकारी जुन्नारदेव के समक्ष की जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 2/4/19 से अपीलार्थी की अपील खारिज की गई जिसके विरुद्ध यह अपील न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर को प्रस्तुत की गई। प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अधीनस्थ न्यायालयों ने रिकॉर्ड तथा प्रति अपीलार्थी तलब किए गए। उभय पक्षों के तर्क सुने गए। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण आदेश पत्रिका तथा संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। अपीलार्थी का तर्क है कि उभय पक्षों के मध्य प्रश्नाधीन भूमि का जो बंटवारा न्यायालय नायब तहसीलदार दमुआ ने पारित किया गया उसमें उभय पक्षों के बीच बराबर बंटवारा नहीं किया गया। विमल कुमार को 2.632 हेक्टेयर भूमि, निर्मल कुमार को 2.489 हेक्टेयर भूमि, अमल कुमार को 2.982 हेक्टेयर भूमि तथा अपीलार्थी परिमल कुमार को मात्र 1.521 हेक्टेयर भूमि प्रदान की गई। मतलब ये बेलिया माउथ टांडी का बता रहे जबकि बदनूर में इनको और भूमि हमें नहीं मालूम है ये सिर्फ केस नंबर 20 का केस है ठीक है जी मतलब इसी प्रकार फर्द अपीलार्थी की अनुपस्थिति में तैयार की गई तथा उसके हस्ताक्षर भी नहीं लिए गए। फर्द नक्शे में जो बंटवारा प्रस्तुत स्वीकृत हुआ उसमें अपीलार्थी को रोड क्या प्रकरण पंजीबद्ध किया करके हाँ फर्द नक्शे में बंटवारा स्वीकृत हुआ रोड से दूर की भूमि दे दी गई प्रति का फर्द के पूर्व। अब आप इधर से आ जाओ ना न्यायालय नायब तहसीलदार दमुआ द्वारा तैयार कराई गई प्रथम फर्द और अपीलार्थी की आपत्ति का निराकरण प्रकरण में है। आपत्ति पर पुनः फर्द बनाते हुए पेश करते हुए पटवारी द्वारा प्रतिवेदन का उल्लेख नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 14/8/17 में है
जिसके अनुसार पटवारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मौका कब्जा अनुसार फर्द तैयार की गई तथा अनावेदक को विधिवत सूचना दी गई। इस प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवादी अनावेदक की आपत्ति को निराधार मानते हुए खारिज किया गया है। फर्द के प्रतिवेदन व नक्शे पर अपीलार्थी आवेदक के न तो हस्ताक्षर है और न ही उसे सूचना की तामील ही संलग्न है। इसका क्या आंसर है आपके पास? फर्द प्रतिवेदन में दोनों पक्षों के मध्य आवंटित भूमियों का कुल जोड़ गलत अंकित है तथा नक्शे में अपीलार्थी आवेदक को रोड से दूर की संलग्न भूमि प्रदान की गई है। मतलब वही मैं स्टार्टिंग से बताना आप स्टार्टिंग से तो बता रहे हैं, बताना चाह रहा हूँ लॉर्ड से मैंने ऐसा आप तो ये बताइए जो फर्द बनाया गया था उसमें रिस्पोंडेंट के सिग्नेचर थे क्या? मतलब रिस्पोंडेंट को बार बार इतिल्ला की गई, वो आया इतला दी गई थी तो वो इतला कहाँ है? मतलब वो फाइल किए हैं ना, कहाँ फाइल किए हैं? उनका जो ऑब्जेक्शन है वो तो पहला ऑब्जेक्शन मत लगाइएगा, दूसरे ऑब्जेक्शन पे आइएगा। जी मैंने फाइल किया हूँ आईए नंबर 9745 9745 1723 को। हाँ, क्या है इसमें? प्रारंभिक आपत्ति प्रतिवेदन जी, इससे क्या बताना चाहते हैं आप? मतलब इन्होंने मतलब ये ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इनके जो ऑब्जेक्शन है वो फाइल कर दिए जाए। मतलब फाइल कर दिए ना? जी ये दोनों फाइल है। दूसरा कौन सा है? दूसरा इसके पीछे लगा लॉर्डशिप 8/6/17 का फर्द बंटवारा पर आपत्ति 21/8/15 जी 21/8/15 और 8/6/17। ठीक है ना, कौन मना कर रहा है? जी मतलब हमारा ये कहना है भाई साहब आप तो ये बताओ पहले जी, जब ये कोर्ट कहती है ना तो फर्द के ऊपर इनके सिग्नेचर लिए गए ना इनको कोई नोटिस देने का कोई डॉक्यूमेंट है, फिर आपका कहना कि हमारे पिताजी के पास 2 जमीनें थी, उस जमीन में इनको ज्यादा दिया गया, हमको कम दिया गया, तो इसलिए एडजस्ट हो गया। जो बदनूर की भूमि है जो इनको पूरी दे दी गई लॉर्डशिप, वो हमने फाइल किए हैं। खसरे की कॉपी में खसरे की कॉपी। अरे उसका पार्टीशन बताओ ना, पार्टीशन डीड क्या है उसकी? 26/28 पे। क्या 26/28? मतलब इनको जो जमीन मिली है बदनूर में वो कौन सा डॉक्यूमेंट है? मतलब खसरे की नकल है। किसके साथ पेश हुआ है? मतलब पिटीशन के साथ है। मतलब पेज नंबर एनेक्सर P5 जी पेज नंबर 26 पे बेलियम और तांडी माइलर 63/1/6 और 63/1/8 75/1 परिमल कुमार मतलब नेक्स्ट पेज पे आएंगे आप तो मतलब इसमें बेलियम और तांडी है, तीनों खसरों का एक साथ है 1.521। और मतलब नेक्स्ट पेज ये ऑर्डर कहाँ है तहसीलदार का? जी ये तहसीलदार का ऑर्डर कहाँ है सर? मतलब और 14/8/2017 का ऑर्डर कहाँ है तहसीलदार का? जी मतलब मैंने फाइल किया हुआ है लॉर्डशिप एनेक्चर वो मतलब आईए नंबर 11901/22 से एनेक्चर आईए 1 20A/27 इसी को इन्होंने चैलेंज किया है और मतलब इसके पीछे लगा हुआ है। जस्ट अ मिनट भाई, जो वो दूसरी जमीन जो दी गई है जिसके करके उनका खसरा में नाम चढ़ा है वो ऑर्डर कौन है? मतलब इसके पीछे जस्ट एनेक्चर आईए नंबर 2 आइए नंबर 2 जी 21/A-27/1415 ये बदनूर का है लॉर्डशिप। आप लोगों को भी तो मिली है जी, विमल कुमार को भी तो मिली है 2.62 बेलिया में और 2.7। पिताजी के समय में सबको अपना अपना कब्जा दे दिया। हमें नहीं मालूम है सर, आप कह रहे थे बदनूर की सारी जमीन उनको दे दी गई। बदनूर की जमीन मतलब बदनूर की भी आपको 0.101 मिली है और टोटल आपको मिली है 2.733। फिर निर्मल कुमार को मिली है 3.083।
अमल कुमार को मिली है 2.489, परिमल को मिली है 2.715। आपसे ज्यादा है कि कम है? 3.083 किसको मिली है? 3.083 निर्मल कुमार को मिली मतलब। हाँ, कैसे मिल गई उनको? मतलब इनका पिताजी के समय से इतनी जमीन पे कब्जा था। कब्जा था तो मतलब वो मसल पावर पिताजी ने दिए थे लॉर्डशिप जमीन। पिताजी बंटवारा आधा अधूरा कैसे कर गए? लॉर्डशिप कब्जा दे के गए बच्चों को। कब्जा देकर गए बच्चों को जी। होता ये है कि ज्यादा उपजाऊ जमीन रहती है उसमें कम हिस्सा दिया जाता है। तो फिर आपने ये बदनूर वाला ऑर्डर भी चैलेंज किया है? मैं समझ रहा हूँ कोई जमीन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, कुछ जमीन की क्वालिटी अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी वाले को कम जमीन दी जाती है, खराब वाले को ज्यादा जमीन दी जाती है। आई नो दैट लोकेशन अलग अलग होती है, एक हाईवे के साथ लगी होती है, एक थोड़ा अंदर होती है, एक के पास अप्रोच रोड नहीं होती, एक के पास अप्रोच रोड होती है। आई कैन अंडरस्टैंड। तो आपने बदनूर वाले ऑर्डर को चैलेंज किया है क्या कि उसमें गलत? मैं यही तो सबमिट करना चाह रहा हूँ अलर्ट की जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने अपील लगाई थी एडिशनल कमिश्नर के यहाँ। बहुत अच्छा किया। बदनूर वाले ऑर्डर को कहीं भी चैलेंज नहीं किया। बहुत अच्छी बात है। बेलियामाऊ तांडी के ही ऑर्डर को चैलेंज किया और उन्होंने ये बताया कि हमको सिर्फ बेलियामाऊ तांडी में ही मिली है और बाकी के जो 3 जो पिटिशनर है उनको बता दिया दोनों मतलब कितनी जमीन टोटल मिली है और खुद को स्वयं को टोटल कितनी मिली है ये उन्होंने कहीं डिस्क्लोज ही नहीं किया माय लॉर्ड। आपने जवाब दिया था क्या? इसको कंसील किया माय लॉर्ड। कंसील तो किया, आपने कोई जवाब दिया था क्या? दिया था माय लॉर्ड। बताइए। इसके बाद पासवर्ड ले लेना। बताइए आपका जवाब क्या था सर पीछे? जवाब नहीं फाइल कर पाया मैं। तो फिर हम क्या करें यार? मतलब एसडीएम साहब का ऑर्डर देख लीजिए लॉर्ड सी गौर जी एनेक्सर P4 जी बताइए ना। पेज नंबर 23 से चालू होता है लॉर्ड सी। ऑपरेटिंग पार्ट में पढ़ देगा पेज नंबर 24 के लास्ट पैराग्राफ। Who is appearing for number for the respondent? मतलब उनको नोटिस सर्व हुआ है एक बार लेकिन उनकी तरफ से कोई अपीयर नहीं हो रहा है और उसके बाद कोर्ट ने एसपीसी इश्यू करी थी। अच्छी बात। उसमें अनसर्व्ड बता रहा लॉर्ड। ठीक है सर। पेज 24 पे लॉर्ड लास्ट पैरा से लॉर्ड ऑपरेटिंग पार्ट। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन में इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि उभय पक्षों के स्वामित्व की भूमि से राजस्व ग्राम बदनूर एवं बेलियामाऊ तांडी में स्थित है जिसमें ग्राम बदनूर की भूमि खसरा नंबर 188 रकबा 1.194 हेक्टेयर एवं ग्राम बेलियामाऊ तांडी की भूमि खसरा नंबर 63/8 63/10 75/2 रकबा क्रमशः 0.040 हेक्टेयर 1.182 हेक्टेयर 0.299 हेक्टेयर कुल 1.521 हेक्टेयर भूमि तथा इस प्रकार कुल 2.715 हेक्टेयर अपीलार्थी को कहाँ से रिस्पोंडेंट कहाँ से पढ़ रहे हैं? मतलब पेज नंबर 28 पे एनेक्सर मतलब एनेक्सर P4। हाँ अपीलार्थी को अपने हिस्से में दिया जाना पाया जाता है प्रेजेंट रिस्पोंडेंट ब्रोशर। इसी प्रकार शेष खातेदार उत्तरवादीगण को मौजा बेलियामाऊ उत्तरवादी विमल कुमार को 2.632 हेक्टेयर ग्राम बदनूर की 0.101 हेक्टेयर उत्तरवादी अमल कुमार को मौजा बेलियामाऊ तांडी की भूमि 2.489 हेक्टेयर निर्मल कुमार को ग्राम बेलियामाऊ तांडी की भूमि 2.982 हेक्टेयर एवं मौजा बदनूर की 0.101 हेक्टेयर कुल 3.083 हेक्टेयर भूमि बंटवारे में प्राप्त हुई है। उत्तरवादी अमल कुमार को मौजा बदनूर में कोई भूमि बंटवारा में ठीक है। आपका कहना बदनूर को नहीं कंसिडर किया? जी ठीक है।
इन्होंने एडिशनल कमिश्नर के यहाँ बदनूर में हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, ऐसा इन्होंने कहा है मेरा, उस पे ओथ पे कहा है मेरा। किसने कहा? प्रेजेंट रिस्पोंडेंट ने, मतलब एनेक्जर P6 पेज नंबर 26 इनका जो आवेदन है 42 का MPLRC का एडिशनल कमिश्नर साहब के, उसमें मतलब इन्होंने कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया कि इनको बदनूर में भी भूमि दी गई है। आप कह रहे हैं ना वो उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं दिया गया, वो कहाँ लिखा है? मतलब इन्होंने सिर्फ एक ही ऑर्डर को चैलेंज किया और एक ही जगह का बताया, मतलब इन्होंने दूसरी जगह का बताया नहीं। दूसरी जगह का बाकी पिटिशनरों को दिया गया है ये बताया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया। यहाँ पढ़ के बता दो ना, पैराग्राफ बता दो ना भाई। फैक्ट नहीं, जो आप कह रहे हो कि उन्होंने लिखा था कि हमें कुछ नहीं दिया गया है बदनूर का, वो बता दो। इन्होंने पैरा नंबर 2 में पेज नंबर 30 में तहसीलदार दमोदार, चलो मैं देख लूंगा उसका, ठीक है मैं देख लूंगा। पास ओवर केस सीरियल नंबर 11। जी सर। In the present petition, the order of additional commissioner is under challenge. But before I can point out the irregularities, but the brief facts of the case are like that, my lord. That petitioner number 1, my lord, purchased land bearing Khasa number 135, 137 and 138 and its Batan. 135? 137 and 138 and its subdivision. Its Batan in 1991. And petitioner number 2 has purchased white seal deeds executed in 2015, 18 and 22. Ji. My lord, Overji and some 4 other persons, my lord, who happen to be the adjacent landowners, my lord, applied for subdivision Batan before the Tehsildar for getting their land subdivided, and such application was allowed in their favor by order dated 4/4/97. Subsequently, my lord, after getting the sale deed in its favor, petitioner number 1 preferred an case for Batan in 2008-9, and his application was also allowed by the Tehsildar only with respect to partial portion of the property, that is 2 acres, my lord, in 2010, 26/10/2010. Now, my lord, respondent number 5, after a lapse of 25 years, my lord, preferred an appeal before the subdivisional officer in 2018-19, and that appeal was dismissed on the ground that he prayed that the original that was executed, which was allowed in 1996-97 in favor of some other persons, may be implemented, and the subsequent Batan of 2010 may also be set aside. The subdivisional officer, my lord, categorically disallowed the appeal on the ground that since the private respondent was not party to the original Batan proceedings, and neither did he objected to the subsequent Batan proceeding, therefore he can no orders can be passed in his favor. Now the additional commissioner, my lord, in second appeal has set aside the order passed by the subdivisional officer and has implemented the Batan accepted in the... On what ground, sir? On the ground that the previous Batan and the subsequent Batan are overlapping in nature. So the subsequent Batan has overlapped the previous one. Then how the second subdivision can be given preference? Divisional officer, while deciding the appeal of the private respondent, has dealt with this issue, my lord. Your lordship may appreciate the order passed by the subdivision. Which is that order, sir? My lord. That order is, my lord, annexure P9, page number 129. How it has been dealt? Because, my lord, in appeal,
when the private respondent has approached the subdivisional officer, he has not pointed out as to what is his locus, what is his title, and how is he affected by the. That's fine. That's fine. Locus is something different. That is the second subdivision which will override the first division. I just want to know the reason. Second subdivision was not overriding the first division, my lord. The property has transferred its title from previous owners to the subsequent successors in title. The petitioner number 1 has purchased property from some other persons and has got his separate batan. While the private persons, my lord, who got their batan accepted in 1996 are altogether different persons. Now, the private respondent has not pointed out before the subdivisional officer as well as the additional commissioner as to from whom he has accrued the title and what is his kasra number and what is the portion that has been affected if my batan of 2010 has been accepted. Notice. If your lordship could grant me some interim protection. नोटिस तो जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, जमीन तो वहीं रहेगी. Some early date. Notices are made returnable within a period of 3 weeks, list immediately thereafter. नंबर 12 सोनाली श्रीवास्तव. जी मैडम, बायलॉज हैं, बताइए, एक कॉपी दीजिएगा. आ गए क्या इसमें? पेज नंबर 5 में हमारा वर्क और उद्देश्य है वो लिखे हुए हैं सर. पेज नंबर 5 में काइंडली बताना. पेज नंबर 5, एक सेकंड. जी मैडम. पेज नंबर 5 में हमारा वर्क एरिया लिखा है. क्लॉज नंबर 1 पैरा 2, इसका कार्यक्षेत्र जिला जबलपुर के विकास खंड जबलपुर तक. एक सेकंड मैडम, पेज नंबर 5, क्लॉज नंबर 1 जी पैरा 2 जी. इसमें हमारा वर्क एरिया लिखा है संपूर्ण विकास खंड, मतलब जिला जबलपुर के विकास खंड जबलपुर तक. और उसके बाद सेकंड क्लॉज है जो उसमें उद्देश्य लिखे हैं सोसाइटी के, जिसमें पहला उद्देश्य सोसाइटी की सीमा है मछली पकड़ने के ठेके लेना और ठेके के क्षेत्र में मछलियां पकड़वाने की व्यवस्था करना अथवा मछली पकड़ने के अधिकार संस्था के सदस्यों को देना. मैडम, ये अधिकार संस्था के सदस्यों को कैसे दे सकते हैं आप लोग? पकड़ने का ठेका लेना. हाँ, हमको मिलेगा, हमको टेंडर. तो आप आगे सब बांटेंगे? जी हाँ सर. इसके बाद में कैसे बांटेंगे आप सोसाइटी? बांटेंगे नहीं सर, जब हमको ठेके पर पॉन्ड मिल जाएगा लीज पर, तो हम उसमें से मछलियां निकालेंगे और फिर उसको हम सेल करेंगे. मैडम प्लीज जरा अपन ठीक से पढ़ेंगे. मछली पकड़ने के ठेके लेना और ठेके के क्षेत्र में मछलियां पकड़वाने की व्यवस्था करना. ये पकड़वाने की व्यवस्था क्या होती है? मतलब जो हमारी सोसाइटी के जो सदस्य हैं वो लोग मिलकर मछलियां निकालेंगे तालाब. पकड़वाने की व्यवस्था क्या होती है? तथा मछली पकड़ने का अधिकार संस्था के सदस्यों को देना. ये आप सब आगे कैसे सब कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं? संस्था के सदस्य ही तो करेंगे. तो मैडम वो अपने अपनी मछलियां निकाल के ले जाएंगे और आपकी संस्था के पास पैसा कहाँ से आएगा? नहीं, जब हम मछली पकड़ कर ले जाएंगे तो उसको सेल करेंगे ना मार्केट में. उसका पैसा कहाँ जाएगा? समिति में आएगा. तो फिर आपको संस्था के सदस्यों को देने से क्या मतलब है? सर, क्योंकि हम किसी बाहरी व्यक्ति से ये काम नहीं करवा सकते ना. मत कराइए ना. कौन कह रहा है कराइए? अच्छा, केस क्या है आपका? सर, केस हमारा ये कि हमने पट्टे पर लेने के लिए पॉन्ड को अप्लाई किया. कौन से वाले पॉन्ड को? शाही तालाब का. तालाब के लिए हमारा गुरुआ तालाब. आपका ये कहाँ जा चुका है? शाही तालाब तो ऑलरेडी पॉन्ड पर दिया, लैंड पर दिया जा चुका है. ये गुरुआ तालाब के लिए किया है.
तो मैडम ये गुलबुआ आप ऐसे तो पूरे जबलपुर के तालाब आपके कार्य क्षेत्र में है। हाँ, लेकिन हम यहाँ सिर्फ गुलबुआ तालाब, लेकिन हमारे अरे पास आप तो आए हैं सिर्फ गुलबुआ तालाब के, ये तो सारे गुलबुआ सारे तालाब ही आपके कार्य क्षेत्र के हो गए, ऐसे में तो पूरा जबलपुर ही आपका है। सर, लेकिन जब तक हमको शासन के द्वारा लीज पर नहीं दिया हाँ जाए। हाँ, तो अभी अभी आपको क्यों नहीं दिया गया? नहीं, रिजेक्ट नहीं किया है सर, पेंडिंग पड़ी है फाइल। पेज नंबर 63 के अकॉर्डिंग ये 30 जनवरी 2023 से 1 साल से ऊपर हो गया है, हमारी फाइल पेंडिंग पड़ी है। हमने पिटीशन अच्छा, अर्ली डिस्पोजल चाहते हैं, ठीक है, ये बुलवा लेना इसको वापस कर, ठीक है मैडम। Number 14. The instructions are that the worship and MCRC has been filed by the petitioner, that is MCRC number 24897 of the 2020 for cancellation. 24897 of the 2020 for cancellation of the bail granted to the accused man. And then after your worship, again MCRC has been filed bearing number 54849 of 21. 54849 of 21 filed by the accused under section 482 of the CRPC. For what purposes? For your worship, the application under section 309 of the CRPC has been rejected by the court below. कौन सी रिजेक्ट हुई? 309 of the application of हाँ, what does say 309? वो क्या है सर? हाजिरी माफी नहीं दिया हुआ जी, तो ये फरार रह सकता है। That application has been rejected by the court below. That has been under challenge under हाई कोर्ट से कोई इंटरिम ऑर्डर है? there is no such interim order, my lord. तो उसके बाद वो फरार रह सकता है और आप कुछ हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो। Both are pending. अच्छा, पेंडिंग है तो आपने भी पेंडिंग रख दी है। All respect, my lord. The SP Jabalpur is directed to file to submit his reply as to why no action is being taken against Kissu alias Kishore Kumar Tiwari, who had absconded from the trial court. The reply must be filed with the latest by the 14th of March 2024, list on 15th of March 2024. The SP Jabalpur is also directed to point out the actions which he has taken against the erring police officers in not taking any action. List on 15th of March 2024. Yes. Number 17. Shri Sanjay Sharma. जी सर। इसमें लफ्ज़ ये क्रिमिनल रिवीजन जो इस सुपरनामा के लिए लॉट कौन सा नंबर है? 17 जी सर, क्रिमिनल रिवीजन 1510। कौन सा वाला आर्ग्यू कर रहे हो सर? क्रिमिनल रिवीजन 1510 पहले आर्ग्यू कर रहे हैं। इसमें तो गाड़ी मिल जाएगी तो फिर नहीं, गाड़ी दे दी लॉट से। हाँ, जो उसमें लैपटॉप था लॉट से वो नहीं दिया। क्या नहीं दिया? लैपटॉप। क्या करोगे लैपटॉप पर? वो एक्स में सेंटर चलाता लॉट से, तो उसमें उसकी सब डिटेल रहती। किस चीज की? इसमें केस ये है कि क्या ये पकड़े क्यों गए थे? कोडेक्स की सिरप की बोतल, ये लाइसेंस ही है सर। अच्छा, कोडेक्स के लिए लाइसेंस ही है? दवाई की दुकान है वहाँ। हाँ हाँ, तो कितनी क्वांटिटी ला सकते हैं सर? कितनी क्वांटिटी मिली आपके यहाँ से? नहीं, बिल पे आया था। हैं? बिल पे यहाँ से कितनी क्वांटिटी आपने परचेज की हुई थी? हम कौन सा मना कर रहे हैं कि आपने काला बाजारी की? लगभग सिर्फ 191 बोतल करीब अलग अलग। हाँ, 191 बोतल। इतना कंजम्पशन है? उसमें लॉर्डशिप ऑनरेक्स की जो है वो 59 बोतल है एक में, और दूसरे बैग में 12 बोतल 100 ml वाली कफ सिरप की हैं। फिर एक और में 120 बोतल 100 ml वाली ऑनरेक्स की है। टोटल 191 बोतल्स। 191 के साथ एक डेल कंपनी 191 जी। अच्छा, आप होलसेलर है कि रिटेलर है? रिटेलर। नहीं, रिटेलर है।
आपकी मंथली सेल कितनी है जी? मंथली सेल कितनी? ये इनकी ऑनरेक्स और कॉरेक्स वगैरह की सेल कितनी है आइडिया नहीं सर। आइडिया नहीं। आपका वैसे दुकान का टर्नओवर कितना है? अभी इस संबंध में मैंने नहीं पूछता, मतलब चालान तभी तो पता चलेगा कि आप सिर्फ ये कॉरेक्स ही बेच रहे हो कि कुछ दूसरी दवाइयां भी बेच रहे हो। तो पूरा मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर तो है, पर आप भी जानते हो कि इन दवाइयों में एक एडिशनल एक कोडीन, हाँ, जिसको कि ये दवाई के तौर के ऊपर नहीं। सर एक इशू जिस पे आधार पे मैंने जो दूसरी वाली 482 पेश किया था कि वो 2 जजमेंट थे, अपने एक गंगेले साहब का था और एक मेनन साहब का था, जिसमें वो कहा गया था कि वो परमिसिबल लिमिट से यदि कोडीन कम है तो एनडीपीएस के प्रोविजन है अट्रैक्ट नहीं होंगे। मेरे ख्याल से वो आपको सुप्रीम कोर्ट का फिर बाद में आ गए तो नहीं, वो तो पूरी वॉल्टाइल जो है वो मानी जाएगी, ऐसा आ गया है जजमेंट, तो एक पूरी खत्म हो गई। पहले शायद एक दशरथ का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का कि वो है, उसके बाद पार्ट होना चाहिए। हाँ, वो रूल हो गया जी, इसलिए 482 आपका 482 तो आपका जा रहा है विड्रॉ कर रहे हैं। लैपटॉप को भी क्या करोगे? तभी तो पता चलेगा, लैपटॉप दिलवा ले, तभी तो पता चलेगा कि आप कितना आपकी सेल थी और इसकी कितनी सेल। नहीं, लैपटॉप में तो सर जो हमारे एक सेंटर भी चलता है, कोई एक सेंटर, उसके जो ग्राहक है, जो कार्ड बनाना है, आयुष्मान कार्ड बनाना है, दूसरे गवर्नमेंट की, सबसे सीज्ड है, डिटेल्स है, सबसे सीज्ड है। ये सीजर है सर फ्रॉम द डेट ऑफ FIR सर। तारीख 2/5/19 जी, 2/5/19। अरे जब 4 साल से ग्राहकों ने कुछ नहीं किया तो अब क्या बोलेंगे? अभी साहब लोग हैं लड़से से ट्रायल की स्टेज क्या है सर? अभी 13, 14, 15 को गवाही के लिए लगा स्टार्ट फर्स्ट। अच्छा, कितनी बार बढ़वाया आपने ट्रायल? नहीं, फर्स्ट चांस पहली बार जी। चार्जेस के लिए कितनी बार बहस के लिए समय लिया? चार्जेस पे बहस के लिए कितनी बार समय लिया? हम लोगों ने नहीं लिया सर। आप लोगों ने नहीं लिया है? ट्रायल भी मैं ही कंडक्ट कर रहा हूँ। आप ही जा रहे हैं? अभी स्टार्टिंग कर 13। अच्छा, इसीलिए 4 साल लग गए, चार्ज लग रहे हैं। वो जो लिस्टेड केस है उनको पहले दिख रहे थे, अभी 4 साल हो गया तो ये भी लिस्टेड केस में आ गया है। जैसा आपका कहना है कि अब लिस्टेड में हो गया, आप आ जाइए 13 आ जाइए ना, मतलब जल्दी, ज्यादा देर नहीं होगी, फटाफट हो जाएगा। अब क्या करना लैपटॉप को लेकर? सर आपका डिस्क्रिप्शन 1510 of the 2021 से Sajjad Sharma Shri Baghel for this 482 withdrawal. Right. This revision under section 397/401 of CRPC has been filed against the order dated. किस ऑर्डर से है सर? जी, 5/4/2021 passed by Special Judge NDPS Act, Umaria District Madhya Pradesh. Special Judge NDPS Act, Umaria District, Umaria. Then special case number 13/19. Special case number, yes sir. 13/19. By which the trial court has refused to release the laptop on interim सुपुर्दगी-नामा. 3 चीज मांगी थी सर हमने, लैपटॉप और गाड़ी और 45,000 रुपये नगद जो पैसे, 3 चीज। तो गाड़ी दे दी उन्होंने, और ये 2 चीजें नहीं दी। पैसे का क्या करोगे? पैसे जो हमारे जेब में थे वो भी जब्त किए थे पूरे। 45,900। मतलब जो कितनी बोतलें बेचने के बाद आए थे 45,000? बिके नहीं सर, सील बंद थी, वैसे ही जब्त। हम तो और भी तो एक आध कार्टन तो बिक गया होगा। नहीं सर, वैसा हुआ ही नहीं ना। यहाँ से अर्चना ट्रांसपोर्ट से लोड हुआ, वो वहाँ उसने रिसीव किया और इतने में उन्होंने पुलिस वालों को पकड़ लिया। नहीं, वो तो जो लॉट पहले रखा था आपके पास उसका है। नहीं सर, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं, वो पहले खर्च कर दिया। ऐसा नहीं, तो उसकी पॉकेट में था, उसी के साथ। अच्छी पॉकेट है, 45,000 लेके घूम रहे हैं, 2019 में है। आज का सर नहीं आओ तो वो लाइटर साइड में था। पैसे क्यों मना किए गए सर, ये बताइए? पैसे क्यों मना किए? पैसे बोल दिया कि जो उन्होंने प्रतिवेदन पेश किया पुलिस वालों ने कि ये प्रतिबंधित दवाइयों के क्रय विक्रय से संबंधित उन्होंने बताया, इसलिए नहीं दे सकते। वही तो है कि आपने पुलिस ने बाद में प्रतिवेदन दिया, लेकिन ऐसा सीजर मेमो में नहीं लिखा कि ये उससे संबंधित। लैपटॉप का जो है उसका भी सीजर मेमो में ये नहीं लिखा कि कोई इस घटना से संबंधित लोगों के उसमें कुछ। आप मतलब प्रतिवेदन बाद में दे रहे हैं। आप मतलब मेडिकल स्टोर के साथ साथ कुछ और भी काम कर रहे हैं उसी दुकान में? हाँ सर, वो कियोस्क का काम भी है ना।
कियोस्क भी है, मतलब ज्यादा चलती नहीं है दुकान, छोटा सा शाहपुरा तहसील इसीलिए तो 45,000 कैसे है। वो हाँ है ले लो। अगर आप मेडिकल शॉप में भी एक छोटा सा एक और साइड बिजनेस चला रहे हो, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा सेल नहीं है। छोटी जगह तो कम रहेगी, ये तो नेचुरल। By which the court below has refused to release the laptop and an amount of rupees 45,900. It is submitted by counsel for petitioner that in the laptop, the petitioner has various others important information which are useful for his business, and accordingly the laptop should have been released. Per contra, it is submitted by counsel for the state that the laptop must be containing the important information about the sale and purchase of the prohibited syrup. Therefore, it is an important piece of evidence. Consider the submissions with regard to release of laptop. It is the prosecution case that prohibited medicines in large quantity were seized from the possession of the applicant. While large quantity of prohibited medicines were purchased by the petitioner, will depend upon his sale and purchase of the previous years. The laptop must be containing every detail, which may throw light on the aspect as to whether the purchase of large quantity of prohibited syrup was in accordance with his business requirements or not. Accordingly, the trial court has rightly rejected the application so far as it relates to laptop. Nextly, here a release of rupees 45,900. The trial court has rejected the application in respect of the cash amount only on the ground that it appears to have been earned by sale of prohibited medicines for the system. Since the amount of rupees 45,900, since at this juncture it cannot be said with an authoritative pronouncement that the amount of rupees 45,900 which was seized from the possession of the applicant was earned by him by selling the prohibited medicines of syrups. Accordingly, this revision is partially allowed, and it is directed that in case if and allowed with the following observations. Number one, all the color photocopy of both sides of the seized currency notes shall be done at the cost of the petitioner. Number two, the petitioner shall put his shall attest both sides of the currency notes. First, the petitioner shall also give an undertaking that he shall not dispute the identity of the currency notes for the system. He shall also furnish a security that if the amount of rupees 45,900 is directed to be confiscated, then he would immediately deposit the same before the trial court. System. If the aforesaid formalities are completed, then the seized amount of rupees 45,900 shall be returned back to the petition. With the aforesaid observation, the order dated. कौन सा था ये? 5/11, 6/11 हैं? 5/4/21 Annexure A3 5/4/21 Annexure A3 is modified. Is partially set aside. इसमें एक्चुअली मैंने लैपटॉप के लिए ये कह दिया कि आपके आपराधिक कृत्यों वाला जो है उनके लोगों के नाम,
हमें नहीं पता है, अगर आपकी सेल, मान लीजिए आपकी दुकान की सेल है रेगुलर दवाइयों की से, हाइपोथेटिकल भी नहीं है, एक समझने के लिए मान लीजिए 10,000 रुपये महीना, और प्रोहिबिटेड मेडिसिन की सेल है आपकी 1 लाख रुपए महीना। अगर आपकी रेगुलर सेल है 1 लाख रुपए महीना और प्रोहिबिटेड की भी 1 लाख रुपए महीना, अब इसमें दोनों में अंतर समझिए। ठीक ठीक समझ गया। ऐसा क्या चीज है कि एक ही दवाई बिक रही है और बाकी कोई दवाई ही नहीं बिक रही? बिल्कुल सही। इसलिए हमने आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में नहीं लिखा इन ऑर्डर टू वेरीफाई कि आपकी सेल क्या है। अगर आपकी रेगुलर सेल भी अच्छी है, उसके साथ में ये भी अच्छा बिक रहा है, तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट? पर रेगुलर सेल है ही नहीं है, बस यही बिक रहा है, और रेगुलर सेल ना होने करके आपने वो कियोस्क वगैरह और चला रखे हुए हैं। वहाँ आप तो जानते हैं सैपुरा में, वहाँ जो पर्टिकुलर कास्ट जिसकी है कई प्रकार के व्यापार करते हैं, वो उनको सवाल है इस बात का है सर कि कई प्रकार के व्यापार करना कोई बुरी बात नहीं है, इससे कोई कास्ट रिलेटेड जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। पर हमारे जानने ना जानने का सवाल ही नहीं, शहपुरा तो हम वहां से कभी गुजरे नहीं है, जब से बाईपास बन गया तब तो और नहीं गुजरते, नहीं तो पहले किसी जमाने में वहीं से निकलना पड़ता था। तो आप कह सकते थे कि अगर आप भोपाल जाए तो आपको दिख जाता था, अब तो वो भी नहीं दिखता है। वो क्वेश्चन नहीं है, सवाल है कि मल्टीपल बिजनेस कौन सी बुरी बात है? सही है। आपका अगर एक बिजनेस से काम नहीं चल रहा है तो भी मल्टीपल बिजनेस कर सकते हैं, अगर एक बिजनेस से भी काम चल रहा है तो भी आप अपने बिजनेस बढ़ा सकते हैं। व्हाट इज रॉन्ग? सवाल है कि उस बिजनेस से आपकी रेगुलर सेल ही जो है मान लीजिए नेग्लिजिबल है, ठीक है सर, और एक प्रोहिबिटेड की सेल एग्जॉर्बिटेंटली हाई है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसको रोका हो। कुछ तो सब कहो इसके बिल भी ना देते हो किसी को, तो पता ही नहीं चल रहा कितनी बिक रही कितनी आ रही। अब वो सब पता चलेगा ना सर। चलिए, वेरी काइंड। partially allowed. Authority to withdraw. Number 21. Shri Jai Shukla. जी शुक्ला जी। This is regarding the crashment of cognizance that has been taken on the 130. So what is the stage of the trial? Actually, that is why we paid the हमें तो कौन से वाले केस में तो नहीं दिखाया था मेरे को? 18। अच्छा ठीक है, जी जी बताएं। Actually, even I have been trying to contact them. So they are not responding. We could not establish contact. So I have written. We are written, right. In fact, my lord, today we will write a letter and will seek. My lord, Oh, I can't. because it's 14, my lord, we gave a reply. इसका स्टेज देखो जरा, इसको ढूंढ लो, इसका वो ढूंढो, स्टेटस देख लो। So you don't have any instructions? No. चलो मैं पहले स्टेज देख लेते हैं, फिर आपको मतलब लेटर लिखिएगा, हम जैसे डिसमिशन डिफॉल्ट करेंगे इन द इवनिंग और बाय टुमारो मॉर्निंग यू विल गेट अ कॉल। Lordship, chances, because my lord, it's a 2014 we gave. Our case is this, my lord. If I just, Lordship, there has been a complaint that has been filed against me under 138. Now I gave a reply to this, my lord. My reply is at A4, page 62, stating the fact that, my lord, nor I am the owner of the company, nor I am the proprietor of the company. Whether you are the signatory of the check? No, even I am not that. I have specifically denied that. So what is the allegation in the complaint about your status? The complaint is at page 56, Lordship. Annexure? Annexure A3, Lordship. Page 6. Through Shantanu Singh Parihar. Now you say that this form does not belong to you. Yes. No, we annex a document also in this regard. That is. So it is a defense now. How can I give a finding? No, but prima facie when. Prima facie, that's right. But these are the private documents. Unless and until these documents are formally proved, how can I say that prima facie it indicates towards something? Had it been that they are the judicial documents or the public documents and I can take note of without any formal proof, then we can look into those documents. One A6 was there, that was in regard to the agreement that was entered by these partners. In that also, not my name, that is a non-judicial partnership deed, my lord.
by two of the retiring partners, my lord. In that also our name is not found. This is what we precisely stated in April. These are the private documents, and that is the difficulty. Whether I can rely on a private document by treating it to be proved in accordance with law. Now, suppose if you go for the trial, are you not required to prove these documents by summoning the witnesses? Certainly. That is the difficulty. Had it been a case of a public document, then I can take cognizance of that. Lord, I withdraw with liberty to that I will. 53513/2021, Shri Jai Shukla, Counsel for Petitioner. This application under Section 482 of CRPC has been filed for punishment of case number SCNIA 2048 of 2023, by which cognizance of offence under Section 138 of Negotiable Instruments Act has been taken against the applicant. It is the case of the applicant that he is neither the owner nor the proprietor of measures Kumudni Kamadgiri Construction. Yes, Lord. Kamadgiri Construction. However, the aforesaid defense is required to be proved by the applicant before the trial, and this court cannot take judicial notice of the documents which are not public documents. दिखाना अब disposed of कैसे आ रहा है, उसका रीजन क्या आ रहा है disposed of में? Accused absconded. Even otherwise, it has been informed by the court staff that as per the status uploaded on the website of the concerning district, the case has been disposed of because the accused is absconding. वो perpetual warrant निकाल दिया होगा ना और उसको record room में भेज दिया होगा. We are not getting any. Considering the totality of the facts and circumstances of the case, where this court cannot rely upon the defense taken by the applicant, which is required to be proved by him before the trial, coupled with the fact that he is absconding from the court, from the trial court, and it appears that a perpetual warrant of arrest must have been issued. No case is made out for interfering in the matter. शुक्ला जी देखना चाहिए तो देख लीजिए, आप भी चेक कर लो बाई चांस. देखो हम तो एट ए ग्लांस देखते हैं, हो सकता है कि कुछ गलती हो जाए. वो रिस्पांस नहीं आ रहा है. Even we are not being able to. That अच्छा. is the reason, my lord. So our report corroborates your experience. No case is made out warranting interference. The application fails and is dismissed. Number 24. Shri Abhijit Awasthi. जी सर. Seven 929/2017. None for the applicant even in the second round. Shri Rishi Sharma. Rishi Sharma, counsel for respondent. As none appears for the applicant, accordingly the अब 4:30 बज चुके हैं, नहीं तो डिसमिशन डिफॉल्ट कर देगा. Accordingly, the case is adjourned list tomorrow. It is made clear that in case if none appears for the applicant, then this court shall proceed ex parte against him. I may plead your lordship. Hmm? Just for a moment, if I may draw your attention. Please. Lordship, it is 482 petition against dismissal of complaint. However, revision should be there. So on technical grounds, it is not mentioned. ऐसा करना है. A preliminary objection has been raised by counsel for the respondent that this application under section 482 of CRPC has been filed against the order dated 15/10/2016 passed by GMFC 70 in an unregistered complaint case number of 2016. कौन सा ऑर्डर है सर?
unregistered complaint case. Police system. It is submitted that the order passed under section 203 of CRPC is revisable, and accordingly, this application is not maintainable. Since none appears for the petitioner, therefore, this petition is dismissed. Liberty to the petitioner that in case if he so desires, then he can file a revision before the appropriate forum. With the force of liberty, the application is dismissed as withdrawn. Needless to mention that since this application has been dismissed on the ground of maintainability, therefore, in case if any revision is filed, then the period spent by the applicant before this court, that is from 8/5/2017 till today, shall be excluded. Sure. Number 25. Shri Jayesh. जी सर. Here, Lord, the applicant and respondent entered into a compromise now in the year 2014 while annexure A3 lordship on 15/5/2000. हस्बैंड वाइफ है क्या? Yes. हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है क्या? Yes, lordship. अच्छी बात है. No, not. There was an agreement in regard to that the all settlements are taking place, compromises taken place between the parties, and the present applicant will pay an amount of ₹1,000 per day, per month, not to the respondent herein. After this lordship, she moved the application, my lord, before the lower court under section 127. I filed an objection on the two grounds that firstly there was a compromise taken place. And the compromise took place in which proceeding? Not that was in earlier proceedings, my lord, of 125. Under 125. Yes. Right. And lord, later on she filed a 127. For alteration. Yes, for enhancement basically she was seeking. Natural. Yes, yes, lord. The court allowed that, saying that, my lord, there is a escalation of price in every so from 1,000 it has been increased to 3,500. No, my lord, that contention was two, my lord. That firstly there was a compromise which was entered and that was admitted before the court, and court passed an order on that. Which is that order, sir? Lordship, that is at page 19, A3, lordship. Relevant is at page 20, lordship. Page 20. Yes, lordship. आपका divorce हुआ है? Not actually, our case is this, my lord, that she was not my legally wedded wife. Not my original wife, the first wife expired, my lord. You should. I did not enter into her. She was not a legally wedded wife. She was there with me living for some time, my lord. After this, my lord, this is. So you utilize her. This is what you want to say. No, not exactly utilized. There were a relationship between me and her, my lord. But that was not legally recognized, my lord. This is what Then you should not have entered into a compromise. Once a compromise was arrived at, then वो तो गई कहानी. Not. अब आप बस इतना सा बताओ. क्वेश्चन ये है कि कॉम्प्रोमाइज अगर है तो 127 नहीं लग सकता. But that is the only question which is to be decided. Not actually, with due respect to lordship, my lord, I was seeking, my lord, searching regarding this. Judgments are on both these sides. One judgment, my lord. लाभ वाले बता दो. Lord, in one of 2013 cases, my lord, the Supreme Court held that it would not the compromise should not go against the public policy. Slightly difference was there in the facts, my lord. The difficulty ये है. I was also looking at the terms of compromise. They appears to be against the public policy, but I cannot touch the terms because it has already been approved by the court and it has attained finality. So I cannot reopen it.
Yes, yes. right? The only question is whether the compromise with regard to the quantum Yes. can be altered under section 125, 127, sorry. Not my submission would be, it could not be, because Milord, नहीं, वो तो ठीक है. rightly said, Milord, that it has been acted upon. This was the basic difference in our case and that this compromises. आपके खिलाफ वाले कौन कौन से हैं ये तो बताओ. Not वो 2013 Milord. 2013. Not Mm-hmm. This is a case. Nagendrappa Antikar versus Nilamma. Nagendrappa. Yes, Milord. Versus Nilamma. Nagendrappa versus Nilamma. जी सर. अच्छा सर, ये अगर आप कहते हो कि it cannot be altered, so will it not amount to a compromise, thereby restraining the other party from taking legal proceedings? No, as far as this, when we entered in the compromise. Fine. The moment we say, sir, she cannot move an application under section 127 because now she had agreed for 1,000 and now it is over. Will it not amount to restraining her from taking legal remedies? देखना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कर लगेगा. Not in my submission. अरे आप ऐसे बताओ, मैं अगर ये होल्ड करता हूँ कि once she had agreed for 1,000, therefore now she cannot file an application under section 127. So will it not amount to holding that now she cannot take any legal remedies which are otherwise permissible for alteration? अगर 125 का मैरिज के ऊपर ऑर्डर होता तो देन शी हैड अ राइट. आज कॉम्प्रोमाइज के ऊपर हुआ है और कॉम्प्रोमाइज के ऊपर होने के बाद इफ आई से कि दैट नाउ शी इज नॉट शी कैन नॉट बी परमिटेड, सेक्शन 28 होना चाहिए मेरे ख्याल से. Every agreement by which any party thereto is restricted absolutely from enforcing his right under or in respect of any contract by the usual legal proceedings in the ordinary tribunals, which extinguishes the rights of any party thereto or discharges any party thereto from any liability under or in respect of any contract on the expiry of a specific period, or to restrain any party from enforcing his rights. Section 28 of Contract Act will come your way. Because in case if I say, this is what not the court has also opined. Not that it would ultimately would go, not that somebody's what lordship is saying, not that it would. It's restrained from now taking recourse. So that will be against the public policy. So any interpretation which goes against the public policy should always be avoided. But my lord, our submission would be she, my lord, considering for a moment, she herself agreed to this point that 1,000. Right, no problem. हम ये कुछ नहीं कह रहे हैं. मैं तो I am also of the view कि भाई एक बार अगर आपने तय कर लिया है तो कर लिया है. पर so far as the quantum is concerned, because suppose if she says कि नहीं, I want to reside with you, then we can understand कि once you have given up that right, you cannot reopen the contracts or the agreements or the compromise in such a manner. But here is the question of quantum. She had agreed for one quantum, but looking to the necessity at that time. Section 127 provides a remedy to the either of the party to move an application for alteration. Even if it can be done by husband for reduction, it can be done by the wife for enhancement. So in the light of that limited scope of that provision under section 127, if we say that you can't move, will it not be contrary to the general public policy hit by section 28 of Contract Act? Because we will be restraining her from taking any legal recourse. आप alteration पे नहीं जाएंगे अब. Not my submission would be not. This is what I have been able to understand. Not
that rightly if नहीं, what I have successfully or unsuccessfully understood, I am sharing with you. yes. So I am seeking your help. Will it not be, if I give such an interpretation that she cannot move an application under section 127 now, after having accepted this maintenance amount, will it not be hit by section 28? And whether it is not a golden principle of interpretation that any interpretation which makes the provision contrary to law should always be avoided. मैं अगर आपका वाला जो सजेशन है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इट विल बी कॉन्ट्ररी टू सेक्शन 28. वो भी है. नंबर 2, सेक्शन 41 आप उसका देखिएगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट. Any injunction to restrain a person from legal proceedings cannot be issued. आप कोई भी प्रोविजन निकाल लें, सिविल या क्रिमिनल, it will be against that. Suppose if you enter an agreement with B, okay, I am giving you this much of money towards the full and final payment. Now you will not be entitled to file any civil suit for recovery of the remaining amount. That would be वो आ जाए. या अगर एक encroacher suit file करे against the real owner, that he should be restrained from filing a suit against me for my dispossession. It is like that. Certainly, that is a part to understand. Not if Lordship permits, there is no stay prevailing. We are paying the amount. If Lordship agree, I'll go through it. If Lordship permits, my Lord. आप रात को देख लेना, सुबह बता देना, कुछ और बता देना, क्योंकि प्राइमा फेस ही एकदम से मुझे ऐसा समझ में आ रहा है. That interpretation, if I say that you cannot move an application for alteration, because alteration is because of the change in the circumstances. Suppose tomorrow if the wife gets job, the husband can always move an application. I can certainly go to that aspect. Or he gets married to some other person. Not married. If she gets job, married हो जाएगा तो फिर तो कहाँ से 125 बचेगा? That part would. है ना? तो suppose tomorrow if she gets job, आपका 10,000 का maintenance है. Suppose now she is getting say 20,000 per month as a salary. So you can always apply for reductions. So it is dependent upon the situation or the incident which. Lord, actually, this is what precisely 2013 judgment is saying. Lord, that what Lordship has opined, that view is of Supreme Court. I fairly submit, Lord, that is. ये common sense, मैंने तो common sense लगाया है. जी, Lord. सवाल इस बात का है कि if I restrain somebody from taking any legal proceedings, that is hit by section 28, that is hit by section 41 of specific relief. Even if there is one of the condition, but what Lordship is saying is somebody agrees that I will not move up. Even that is condition is void, my Lord. That is void. That is the difficulty. That is. आप और देख लीजिएगा, otherwise तो कुछ है नहीं वैसे. Lord, I'll see, my Lord. Lord, one judgment was there of 2014 criminal LG. Here, my Lord, that husband agreed to pay a Fakka house and certain amount. After that, she moved the application. So court is considering everything as held that, my Lord, because there was a compromise without coercion, and it was. नहीं, ये मेरा वो नहीं कहना है. हमारा ये कहना ये है कि whether we can restrain them legally. हाँ, from taking legal recourse. आपने फाइल किया, that doesn't mean कि it will be allowed. By filing of initiation of a legal proceeding, getting a relief, these are two different things. The initial bar is against the institution of legal. We cannot restrain anybody to initiate. That is it. That should be binding hands of getting legal. Sure. That is a view prima facie, Lord. That is. I'll see if in latest I can get. आप देख लीजिए, अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कल तो मिल ही जाएगा. चलिए, thank you. Number 26. Sri Vaibhav Tiwari. I could not appear in the first round. कोई बात नहीं. And right now. उसके लिए तो आपको अपने घर में माफी मांगनी चाहिए. नहीं सर, वो अभी भी मेरे को जाना है, मैं इसलिए. ऐसे तो कहना आपको घर में माफी मांगनी चाहिए कि मैं सुबह नहीं जा पाया तो मैं भी 5 बजे बहस कर रहा हूँ. क्या हो गया, कुछ पर्सनल रीजंस है? So I have to attend last ceremony of my cousin. तो आपको कल सुबह ले लें क्या? Will you be able to come at 10:15?
Will you be able to argue at 10:15 Mal- as a first case? Mal- Chalo, 8190/2020 Shri Vaibhav Tiwari, Srimati Swati Asim George, counsel for the state. It is submitted by counsel for the applicant that because he was on his legs before another court, therefore he could not appear in the first round, and it is already 4:56 p.m. and he has to attend the last. This may not be. He has to attend some personal. He has to fulfill some personal assignments, and therefore this case may be taken up on कल के लिए कर दीजिएगा. As per it, list tomorrow. It shall be taken up at 10:15 a.m. irrespective of the number at which it might be listed in this call list. कल के लिए. Serial number 27. 27. Yes, Your Lordship. जी मैडम. This is related to petition against the crime number 1. 294, 448, 427, 5076. Ji, what are your grounds? The matter in short is, Your Lordship, my sister was married into the complainant's family. Complainant is mother-in-law of my sister, Your Lordship. Appellant number 1 to 4, all are brothers of the daughter-in-law of the complainant, Your Lordship. Now, what happened, Your Lordship? My sister was married in the year 2019, on 6th May 2019, Your Lordship. After that, for 2 years, there were compromise, there were fights, there were everything, and they agreed that they'll keep my sister. But again, when I went to, when all the brothers, the appellants went to send her to her in-laws' house, Your Lordship, that very same day on 19th May 2021, Your Lordship, after 2 years, they did not keep my sister, alleging that she has brought less dowry and she has some heredity issues that we did not enclose at the time of wedding, Your Lordship. She suffered from thalassemia, which was curable, Your Lordship, and she needed blood every month, Your Lordship. And that was not the fact that we did not disclose, Your Lordship. My first ground is my humble submission is, Your Lordship, the moment we filed an FIR, the very same day I went to send my sister in the in-laws' house on 19th May 2021 at around 2:15 in the afternoon. Just after 1 hour, the complainant filed a counter FIR to save themselves from 498 section, 498A, Your Lordship, the allegations from 498A, Your Lordship. So we in this present MCRC, Your Lordship, I'm challenging that very fake complaint that has been filed as a protective shield by the complainant, alleging that. Madam, how can I give such a finding? You may be right. I'm not disputing that. But one thing is clear: something took place something happened on that date. Draw Your Lordship's attention. But how can I give a finding that they were aggressors and you were not? Because, Your Lordship, if we look at the crime number, the moment. Madam, merely because the one FIR was lodged just 1 hour prior to the second FIR, that ipso facto is not sufficient to hold that the person who had lodged the FIR and which is prior in time. My humble submission is, Your Lordship, my place of police station is somewhere else, Your Lordship. जब हम अपनी बहन को वहाँ छोड़ने गए, हमने उनके ही police station में इसीलिए लिखाया, Your Lordship, because they were harassing her. They totally denied to keep. Madam, this is your FIR. आपके भाइयों के साथ मारपीट हुई, सबकी हुई. Yes, Your Lordship. तो आप लोग तो वहाँ गए थे. Yes, Your Lordship. हम उन्हें छोड़ने. सवाल इस बात में, अरे मैडम, I am not disputing any of your contention. Please try to understand. I am putting forward my difficulty in passing an order in your favor at this stage. Can I give a finding that they were aggressors and you were not? Can I give a finding that whatever they have said, that is a completely false statement or false allegation? Definitely not, Your Lordship. If Your Lordship could allow me some time, I'll produce documents that they have harassed me. I have also. I'm not saying anything against your contention. Please try to explain, try to understand about my jurisdiction. To what extent I can look into the allegations. I'm not saying even a single word against your contentions. I'm not saying that whatever you have stated, that is not correct. So there is no need to justify more documents to justify your stand. My only contention or my
query is whether I can go into that much of depth to say that whether A is aggressor or not, or B is aggressor or not. Submission is illogical. Illogical has all the powers and. I have all the powers, but the Supreme Court always says the more the power is, the more cautious the court should be. And the Supreme Court says that at the stage of 482, only the uncontroverted allegations are to be seen. No problem, there are two FIRs. Now, at least one of the FIR or one of the party was an aggressor. You had a valid right to go to the matrimonial house of your sister. There is no difficulty. But exercise of private defense, right of private defense is not absolute. You can exercise only to a particular extent, not beyond that. And even if the person has a valid right of private defense and if he exceeds his right of private defense, still the offense would be made out, maybe of a lesser gravity. As per Annexure A3, Your Lordship, I have submitted many applications before the police officials also, Your Lordship. Subsequent to the. Yes, Your Lordship. And okay, madam, what are the rights of a person who is a suspect in a case to interfere in the investigation? Suspect, Your Lordship, my sister has not been made a complainant in this particular FIR, Your Lordship. Now, we have also submitted कि इनके पहले इन्होंने अपनी FIR में खुद बोला हुआ है कि पहले समझौता हुआ, हम रखने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उसके बाद दहेज में दी गई कार, they have already asked for dowry earlier also, and after that also, Your Lordship, as per my FIR, we have also alleged that they were not at all. Madam, I am not saying anything against your contentions. You may be 110% correct. My only question is that while exercising power under 482, can I go into that much of depth to say that this allegation is false or that allegation is correct? अभी अगर ये कंसीड कर जाए कि इन्होंने झूठी FIR लिखाई है, तो I will allow it. अभी तो इनका आर्गुमेंट नहीं आया. He will say everything against the applicants. And then the difficulty is how to decide that whether your arguments are to be accepted or his arguments are to be accepted. Whether I can go into that much of a depth under 482. Can I conduct a mini trial? Because whatever is being presented before me, this is the stand which has not been tested on the anvil of cross-examination. Cross-examination में उसके बाद पता चलेगा कि भाई to what extent both the parties were saying truth or to what extent they were incorrect. That is the difficulty. I am not saying anything against any of your contention. You may be 110% right. But I hope that he will not concede to your contentions. So will you concede? Then how to decide that who is correct or who is wrong? And whether I can decide that under 482, that is the difficulty. Being a married lady for. Madam, I am not saying you even a single word. I am not thinking even 1% against the correctness of your allegations. There is not the difficulty with me. The difficulty is whether I can say yes, they are at fault and they have lodged a false FIR. Can I say? That is my difficulty. Sir, I am putting a question on my jurisdiction, to the extent of my jurisdiction, not putting a question with regard to the correctness of your submissions. So there is a distinction. Because the law which I have understood so far, that says, malicious prosecution के लिए भी हो सकता है, but primarily uncontroverted allegations पे. Malicious prosecution के लिए या absurdity के लिए, again I will be required to go into the merits of the case, factual aspects of the case. Sometimes it is really harsh, but what can I do? अच्छा इनकी FIR क्या थी?
Annexure P1 is your FIR, no? Lordship, annexure. Their FIR. जी सर, आपका क्या कहना है? सर, आप लोगों में से किसी को भी चोटें तो नहीं आई हैं, ठीक? एक का कहना है कि मेरे कपड़े फट गए हैं, वो तो फाड़े भी जा सकते हैं। पत्थरबाजी से आपका दरवाजे को नुकसान हुआ तो खुद भी पत्थर मारे जा सकते हैं। आप लोगों को चोटें क्यों नहीं आई सर, जब पत्थरबाजी हो रही थी तो? और जब आपके कपड़े फट गए तो इसका मतलब है कि आपके गुत्थम गुत्था अक्यूज के साथ हो रही थी, तो आपको चोट क्यों नहीं आई? हैं? उसी समय पड़ोसी नाम से। अरे जब आपके कपड़े फट गए तो आपकी गुत्थम गुत्था तो हुई होगी। एक है ना किसी के कपड़े फटने का, है ना एलिगेशन। हमारे साथ छीना झपटी किए, ये तक भी लिखा है आपने। मैडम थोड़ा सा और रिसर्च कीजिए, मुझे कल बताइए कि भाई व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस एट दिस स्टेज, है ना? दिस विल नॉट बी लिस्टेड इन द कॉज लिस्ट, इट इज एन एडिशनल फैसिलिटी टू यू, राइट? Please point out, please come with the judgments. I don't want any argument on merits. Judgments only on the scope of interference, nothing more, nothing less. Sure. Disposed of. Serial number 127. Three years Usman. 3070/2010. Shri Girish Srivastava, Shri Mohan Sasarkar, at the request of consent for petitioner, list on 18th of March 2024 under the hearing direction matters. Request. दे दो। Request है serial number 50. My lord, it's the third round of litigation. In this case, your lordship, petitioner is not seeking any special relief, but he is seeking a direction to the authorities. What is happening in this case, lordship, land was acquired of the petitioner and some other villagers, lordship. And as per the one contract what executed in the year 10/8/1994, as per that agreement, lordship, they have been provided some facilities of rehab for the rehabilitations of the petitioner and other villagers. That was not complied by. अभी आपको कम्युनिटी हॉल चाहिए, प्लेग्राउंड चाहिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह चाहिए, और क्या क्या चाहिए सर? Your lordship, kindly see the annexure P6, lordship, at page number 32. पेज P6. P6, lordship. इसमें क्या कहते हैं कलेक्टर साहब? इन्होंने लॉर्डशिप सब चीजें पॉइंट आउट की है। पैरा नंबर 6 देख लॉर्डशिप, पेज नंबर 36। नवजीवन विहार पुनर्वास कॉलोनी में बसाया गया है। लॉर्डशिप इसमें लॉर्डशिप पैरा नंबर 5 में लिखी हुई है। स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं बना रही सर? खुद ही बना दे वो। मैडम आपके कलेक्टर साहब एनटीपीसी से कह रहे हैं कि बना के दो। पिटीशन में कौन सा लैंड है, क्या है, नथिंग, कोई लोकस भी नहीं है। सर ये बताइए कि भाई ये क्या है, क्या ये कौन सा है? आपका रिहेबिलिटेशन का था ना, पूरा टाउनशिप तो नहीं डेवलप करके देने का था। इसमें कलेक्टर साहब का जो ऑर्डर, इसका पेज नंबर 34 देखिए सर, इसमें पैरा नंबर 5 में सारा डिटेल्स हुआ है जो स्त्री पक्ष क्या पेज नंबर 34 में पैरा नंबर 5 प्रकरण एवं उपलब्ध समस्त अभिलेख को परिशीलन किया गया। मुद्दा केवल यह है कि कथित त्रिपक्षीय चर्चा दिनांक 10/8/1994 के लिए लिए गए निर्णय, स्टेडियम भी बनाए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाए,
मॉल भी बनाए, सड़कें भी बनाए, सब कुछ बनाए। ये कलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं? खुद ही बनाए ना सरकारी जमीन के ऊपर। एनटीपीसी की जमीन पे क्यों बनवाना चाहते? मैडम, आप सरकारी जमीन के ऊपर ये जो बोल रहे हैं कलेक्टर साहब सब बनवा के दीजिए। कलेक्टर आप ही का अथॉरिटी है ना। ही इज द बेस्ट पर्सन टू जज दैट व्हाट आर द नीड्स ऑफ द लोकल पर्संस। जहां से इनको विस्थापित किया गया था वहां कौन से शॉपिंग मॉल थे आपके जो कहते हैं कि शॉपिंग मॉल बना के देंगे इनको? कौन सा स्टेडियम था जो आपने जो इनसे ये महरूम हो गए? इट इज योर ड्यूटी। 10 किलोमीटर दूर बनेगा स्टेडियम, क्या फर्क पड़ता है? इनका लोकस नहीं तो कलेक्टर साहब ने कैसे ऑर्डर कर दिया? लोकस नहीं है तो आपका कोई रिटर्न है? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का। The collector Singrauli is directed to file his reply, explaining under what circumstances and in exercise of which power order dated 15/7/2019 was passed by him in case number 35/B1-121/18-19. He shall also clarify as to why the state government cannot provide the facilities which has been mentioned by him in the aforesaid order. List on 18th of March 2024. Sir, 18 की जगह 19. 19th of March 2024. The collector Singrauli must file his response much prior thereto. Serial number 107. Sir, petitioner advocate through BCK join. अच्छा, देखना भाई। जी, so what is the matter about? Your Lordship, this matter is pertaining to the suspension of my business dealings, basically, Your Lordship. Suspension of? Your Lordship, my business dealings were suspended on the basis of... Dealings have been suspended. Yes, Your Lordship. That order, sir, which is that order? Your Lordship, if you may see on the page 118... Sir, annexure? Annexure? Your Lordship, annexure is... P6, workload returns. Just a minute, sir. Ji, sir. Your Lordship, on the serial number 28, first petitioner Skyline Encon. The remark has been given, no slow progress, and also business dealing suspended up to finalization of investigation. Then, Your Lordship, on page number 218. What type of investigation? Your Lordship, the show cause notices were issued to me, stating that there is I have procured the funds without executing any of the contracts, Your Lordship. First of all, I want to draw your attention towards just a minute. Sir, you are referring to annexure P6, right? Yes. Which is that relevant entry, sir? Your Lordship, if you bear me with me for 2 minutes, Your Lordship, come to I will bring you to the annexure P3 on the page number 88. Your Lordship, the show cause notice were issued to me. There are two firms, though two petitioners are there, Skyline Encon and Diamond Electricals. Both the firms were served with the show cause notices on the basis that we haven't executed any of the work and we have procured the funds. You have got your bills encashed. Yes, Your Lordship. The bills were encashed on this contracts, basically. Your Lordship, these without executing the work, you submitted your. These are the allegations. Your Lordship, I have executed my work, even in my reply. What I'm saying, I'm trying to understand the thing, sir. I'm not giving any final verdicts, so don't get afraid of any of my reactions. What I'm trying to understand is that the basic allegation is that without executing any work, you submitted the bill and got the bills encashed. No, Your Lordship. No. Here
Then what is the allegation in the notice? Your Lordship, they served me the show cause notices pertaining to the contracts which has been already been completed, and those were pertaining to year 2021 and 2022. What are the allegations, my brother? Your Lordship, allegations were that the sanctioned amount, the amount of the contract, I have claimed without executing any of the work on site. I'm saying that without executing the work, you submitted the bills and got the bills and cashed. You said no. No, Your Lordship, I have submitted my reply in which the lawyers are in habit of saying no. Always they are habit in saying no. Should I allow the petitions or say no? Your Lordship, on the page number 94, annexure P4, I have submitted my replies to the show cause notices. Right, sir. In that, I have documented the pictures and everything related to the work that has been executed. What happened to that show cause notice? Is it still pending or it has been decided? Your Lordship, I have not been made a part of the investigation. I was not heard for a single moment. What happened to that show cause notice? These are pending, Your Lordship. And moreover, on the basis of these show cause notices, my current business dealings as well as my eligibility to procure the future tenders has been suspended. Sir, you are basically concerned about the non-grant of the future contracts, sir. I am concerned about your previous conduct. Your Lordship, be slow now. Now be slow. I have understood the things. What happened to your show cause notice? Whether it is still pending adjudication or it has been decided? It is still pending for the adjudication. Adjudication, right? Yes, Your Lordship. Whether you have impugned that show cause notice in this writ petition or not? I have impugned that. What are the grounds for challenging the said show cause notice? Because you know the scope of interference in respect of the show cause notices. Your Lordship, I am challenging these show cause notices on the grounds. First of all, I have executed all the work. Sir, can it be a ground for this court to request the show cause notice? Can I give a finding of fact? Your Lordship, I'm coming on to all those points, Your Lordship. Second thing, Your Lordship, without properly investigating the matter. What do you mean by proper investigation? They have issued a show cause notice. Now they will investigate. They have given an opportunity of. Your Lordship, if you may see, I was the show cause notices were dated. First of all, please point out a judgment that to what extent I can interfere in a show cause notice. Your Lordship, unnecessarily we are discussing about the merits of the case. Your Lordship, on the annexure P8, I have annexed. Please, annexure P8, sir, whether you have annexed any judgment of the Supreme Court. No, Your Lordship, it is the orders from the coordinate bench. Forget about that interim orders. Forget about the interim orders. What is the scope of the writ petition against a show cause notice? Your Lordship, whether a writ petition against a show cause notice is maintainable, and if yes, then on what grounds? Can I look into the correctness of the allegations? Your Lordship, the allegations which has been made against me in the show cause notice are totally vague. They are not fine, sir. They are vague. Yes, fine. You can point out the vagueness in your reply. Sir, please clarify this. You can do that. Your Lordship, on before getting my reply to the show cause notices, an FIR was also registered against me. There is no difficulty. There is no difficulty. It can be done. It was rightly done. Moreover, Your Lordship, my reply was to be filed within 28 days. And before that, before even receiving my reply, they circulated a notice within all the headquarters and also issued a notice to recover the outstanding payments which are due towards me. So what is the subject matter of what is the prayer which you have sought in this writ petition? Let us come to Lordship, interim prayer which I am seeking at this about interim prayer, sir. Let us come to the main prayer. Dating the show cause notices dated 7th of July and 13th of July. So 7th and 13th of July are the annexure? Annexure P3, Your Lordship. P3. 13th of July says that without executing the work, you have withdrawn the entire amount. And 7th of July again says the same thing. Now, Your Lordship, is against Diamond Electricals, another is against Skyline. So an identical show cause, the identical show cause notices have been challenged. Yes. Moreover, Your Lordship, these contracts are pertaining to year 2020.
Sir, please, with folded hands, please point out the judgment which says that I can look into the merits of the case while deciding the writ petition against the show cause notice. Your Lordship, Otherwise, my knowledge is something different. Your Lordship, the two judgments are referred within the interim orders. They have been mentioned. Forget about that. Forget about the interim orders. They are not the precedents. What? Not precedent. Sir, okay. Are you ready to answer my query or not? I'm asking this question for the last. I'm answering that, Your Lordship. No, I don't want any interim order. No, I'm not referring to the interim orders, Your Lordship. I'm just referring to the precedents. Dewan sir, please. If I am giving you an opportunity more than what is required, then you should be happy. And if you want to bypass my queries, then I will be happy because you will be making my job very easy. It is very easy for me. It is very easy for me to dismiss your petition simply by saying that a show cause notice, the petition against the show cause notice is not maintainable because neither you have challenged the authority of the person who has issued, nor you have challenged the contravention of any legal provision of law. I can dismiss it within 2 minutes. No, Your Lordship. I'm giving you repeated opportunities. You should feel obliged. And you are bypassing that. If you are bypassing, okay, go on bypassing, no difficulty, sir. My apologies, Your Lordship. I'm referring to the Don't say apology, otherwise it is very easy for me to dismiss it by citing 5 or 6 judgments. I would say it is beyond my scope. I cannot look into the correctness of the allegations, whatever you are arguing. Neither you have challenged the competence, nor you are saying that there is any violation of the provision of law. You are saying, sir, I had already executed and they are issued a wrong show cause notice. You are asking me to go on the spot and to verify whether you had executed the contract or not. Sir, these are the scope. If you want to go ahead with your arguments, you may do. No difficulty. I'm referring to the 2 judgments, Your Lordship. Sir, don't refer to the interim orders. That is all. I'm not referring to the 2 interim orders, Your Lordship. Please give the citation and point out the paragraphs. Your Lordship, I'll file the appropriate judgment and the relevant paragraphs. No, sir, please. This is not the way of arguments. Please give me the citation and point out the paragraph. Your Lordship, it's first is Messrs. Edison Equipments and Chemicals Limited versus State of West Bengal and others. 1975, 1 SCC 70. What does it say? SCC? SCC 70. 1 SCC 70. 1 70? 70, sir. 70. And another? Gorkha Security Services versus Government Entity of Delhi and others. 2014. 9 SCC 107. अच्छा सर ये 1975 का पैराग्राफ बताइए. Your Lordship, I have the gist of that in my hand particularly. No, sir. Don't worry. This is not the way of argument, sir. Please. Your Lordship, I'm not in a habit of listening to the arguments in cut short. Your Lordship, do you have a book with you, sir? Do you have a book with you or not? Your Lordship, I am just having the gist of that. Don't send. I am not allowing. I will not allow you to send anything to me. आपसे मैंने इतना पूछा. Do you have a book with you or not? Please answer. Yes, Your Lordship, I have the gist of Please that. read out the paragraph from that book, sir. Your Lordship, what it states is the order restraining the petitioner firm from the participating in future business dealings. भाई साहब, मैंने आपसे अभी क्या बात चल रही है? आपसे अभी बात क्या चल रही है? Refer to the actual para, Your Lordship. अभी बात चल रही है the challenge to the show cause notice. Yes, Your Lordship. Yes. Please answer. Please confine to that question only. Then thereafter we will look into the other aspect. Your Lordship, if the matter can be kept for the tomorrow, I'll refer to the 8 weeks with no liberty to mention. Shri so-and-so through video conferencing with Shri so-and-so, Shri Vikram Singh for the respondent. After arguing the matter at length, the counsel for the petitioner sought time to advance further arguments. Yes, sir. Accordingly, the case is adjourned. List after 8 weeks without any further liberty. So the reply has already been filed. Reply has been filed today itself. ठीक है, वो that is different aspect. Yes. Hello, please. Serial number 121. Shri Ajit Kaur. जी सर. By this petition, we have challenged the annexure P2, P3, and P6, Your Lordship. P2, P3, and P6, right? Your Lordship, the matter in gist, if I may say, Your Lordship, is related where the court, the Board of Revenue has denied to exercise the jurisdiction. Your Lordship, P6 is the order of the Board of Revenue.
P6, Your Lordship. जी सर. Yes, sir. क्या है? अच्छा, बेसिक केस क्या है सर? Your Lordship, the facts of the case is that there was a Batwara partition deed. It was which was signed by the brothers of the same family. Which the property is situated in Rampura Ward in Yusuf Ali complex, and Your Lordship, that bhavan is 106 years old. Your Lordship, the property was divided into 4 parts, and stamp duty was payable for smaller 3 parts. Your Lordship. Your Lordship, they valued their property for around 3 crores, and they paid a stamp duty. They calculated the stamp duty to be paid of around 12 lakh rupees. Your Lordship, the sub registrar calculated the value of the property to be around 17 crores 81 lakh and 60,000 under the section 47 Ka 1, which was the erstwhile section. Now it has been repealed, Your Lordship. The collector of stamps, Your Lordship, this order was challenged and appeal was also being made. And the collector of stamps, Your Lordship, valued this property to be around 37 crores 44 lakhs, Your Lordship, whereby the stamp duty was payable for around 1 crore 38 lakhs, Your Lordship. Your Lordship, the basic fallacy of the calculation was that, Your Lordship, that I have also attached the market guidelines, which provide. Guidelines तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं. Your Lordship, they have not provided for depreciation, Your Lordship. They have also not. चलो फिर पूरा फॉर्मूला एक कल बना के सिनॉप्सिस ले आना. एक मैंने 10:15 के लिए रख ही दिया है. उसके बाद सेकंड इसको ले लेंगे. Yes, Your है ना? कौन-कौन Your से? Lordship, but the issue involved is that if the Board of Revenue, Your Lordship, if that order can be seen, Your Lordship, they are saying that we went to the Board of Revenue. They said that we do not have any powers. Not the power of we filed an appeal. We then we filed a revision. They said that please file an appeal. We filed an appeal. They said that because this article has been scrapped, we cannot exercise the power of appeal. But the power of appeal was very well within the Board of Which is that? Your कौन Lordship, सा order, कौन सा article scrap हो गया है? that was dhara. That was section 47 का भारतीय स्टैम्प अधिनियम. देना भैया, इंडियन स्टैम्प एक्ट देना. जी सर. सर, इनका ये कहना है कि यह विलोपित हो चुका है. का 5. इसको कल देख लेंगे यार. It is already 5:30. कोई at whatever serial number it might be listed. पूरा लिखा दोगे आप? Because for item number 133, it was dismissed on the bond of prosecution. But I'm just coming from schedule by road. Fine, sir. So then just file an application for restoration. We will restore it, sir. It is my. So it is really shocking that the case was listed and you started so late from shadow. No, my car got broke. The clutch bearing was got broken. अच्छी बात है. कोई बात नहीं सर. पहला एक लेसन है सर. Please change your car immediately. Case will be restored. Don't worry. But change your car immediately. है ना? जो धोखा दे जाए, क्लच उसका क्लच बियरिंग मतलब इतना घिस गया है कि काफी पुरानी होगी. 50,000 kilometers. 50,000. उसी में क्लच गिरा घिसक गया पूरा. हाँ. तो क्लच पे पैर कम रखा करो. My lord जबल. बताओ. My lord जबलपुर में पॉसिबल ही नहीं है बिना क्लच के. क्लच और ब्रेक एक्सीलेटर पे तो जाते ही नहीं है पैर. जाते ही नहीं है तो वो बाहर ही खड़ी कर दिया करो. टैक्सी ले ले. Move an application for restoration. That is do it. So don't worry. Dismiss and default in my court is not a punishment. It is just a verification whether a person is interested in prosecuting or not. It is a method of weeding out the old record. अगर 100 केसेस में से अगर 20 केसेस में अगर रेस्टोरेशन नहीं आई, एटलीस्ट 20 केस तो बाहर हो गए ना. 80 में आती है, आप पूछ लीजिए किसी से भी. I don't ask any question. ठीक है. I just want to know whether your client is interested in prosecuting or not. If he is interested, fine. और ये जो किताबें देख रहे हो आप लॉयर्स के साइड में, it is only because of the dismiss and default. हम यही कहते हैं कि as per your financial requirement, limitations और as per the requirement, आपको जो भी डोनेट करना है बाहर को कर दीजिए.
so that the other bar members will get the benefit out of that. Or restoration is not a by way of punishment. Sorry, dismissal is not by way of punishment. And just change your car. Yeah, I agree. हाँ सिंह सर. My lord, item number 46, my lord. This is, my lord, that has been assumed by क्या हो गया? वो पिटिशनर ने कुछ अच्छा बता दिया था आपसे, तो आपने 8 वीक के लिए कर दिया. पिटिशनर तो कोई अपेयर हुए नहीं पर्सन. पिटिशनर काउंसिल हमारे 46 में, my lord, I was not there before the council. पिटिशनर काउंसिल ने क्या कह दिया? बता दिया था. हम रिस्पोंडेंट हैं, वो बाद में आ गए थे, तो हाँ. उसमें क्या स्टे है? स्टे तो नहीं, पर वो मार्केट रेंट के लिए है, my lord. आप उस कारण से यहाँ पिटिशन. चलो कल के लिए कर दो. 46